हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गुड टू सी यू ऑन यूट्यूब चैनल जस्ट अभी ही स्पेस एंड की ट्विटर स्पेस। यहाँ पे आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करने सुशांत सिंह राजपूत केस पे। एंड लेट्स स्पीक अबाउट इट। हेलो सिमिको, विपाशा जी, हेलो, हाउ आर यू? लासा मैम, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? सो गुड टू सी यू। हेरी दी, हाय हाय हाय, हाउ आर यू? एंड लासा के जी, हेलो हेलो, ओके। Oh, can't hear you. अभी सुन पा रहे हैं मुझे? Okay. You can't hear me? Okay, okay. I'll just see. मैं देखता हूँ 2 मिनट। प्लीज मुझे बताइए, कैन यू हियर मी? Yes, about hearing, right? लिखिए yes, we can hear you. No voice लिखा आप लोगों ने तो yes bro, we can. Okay, that's cool. तो yeah, that's cool. खुशी जी, कैसे हैं खुशी जी आप? How are you? विशाल भाई, yes we can. And Jagdish, yes, Jagdish sir, how are you? कैसे हैं जगदीश सर आप? Amazing, amazing. Awesome, ma'am can hear me. That's great. Everyone is here. That's great. And आज विपाशा जी, you can't hear me. आप देखिए, रिकनेक्ट होकर आइए एक बार फिर से ज्वाइन, क्योंकि आप स्पेस में भी थे ना, तो आप फिर यहाँ पे आ गए, तो एक बार फिर से थोड़ा बैक होके आइए, दैट वी कैन हियर यू। तो ये ऐसे यूट्यूब सेशन स्टार्ट किया है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पे। तो आप सब रहिएगा एंड बहुत अच्छा लगेगा कि आप सब यहाँ के बात भी करें, कमेंट भी करें, एवरीथिंग विल बी देयर, बट द मेन थिंग इज सीइंग द वीडियो विच आई शेयर, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द पॉइंट ऑफ शेयरिंग दैट वीडियो इन अ वेरी गुड वे। वो पॉइंट को शेयर करना चाहेंगे और वो रखते हैं, राइट? यस, हेलो हेलो, या क्या सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, यस यू आर राइट, बिल्कुल आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चलिए, नेशन शार्पेस्ट पॉइंट पूछता है भारत। आप सबका स्वागत है पूछता है भारत। वेलकम टू द डिबेट, नेशन वांट्स टू नो एंड विल लाइक टू हियर फ्रॉम यू एवरीवन। सबसे सुनना पाएगी। This is session Nation wants to know about 14 June. What happened on 14 June? क्या हुआ 14 जून को? और स्ट्रीम यार्ड लिंक शेयर करता हूँ 5 मिनट्स में। जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, देन आई शेयर द स्ट्रीम यार्ड लिंक एंड आई शेयर द लिंक, या कॉपी पेस्ट करके एंड विल पिन इट। यस यस, अच्छा लगेगा। Jagdish sir, amazing sir. And yes, I'm doing well, Jagdish sir, as you asked it. You're doing well, and that's great. आप अच्छे, आपकी हेल्थ अच्छी है, एवरीथिंग इज गुड विद यू, फाइन। तो या, तो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज 14 जून की हमने उस दिन शेयर किया था, राइट? वी शेयर सम फैक्ट्स, वी शेयर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एम्बुलेंस कमिंग आउट फ्रॉम माउंट ब्लैंक फॉर कूपर हॉस्पिटल एट व्हाट टाइम? 4 PM। एम्बुलेंस कब आई, वाइट एम्बुलेंस कब आई, ये सब पॉइंट्स को भी हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा था उसका फैक्ट शेयर, वो भी करते हैं आज फैक्ट शेयर, पर उसी के साथ विल शेयर वन इम्पॉर्टेंट थिंग टुडे, सम इम्पॉर्टेंट न्यूज चैनल्स वीडियो। द कंफ्यूजन इज स्टिल देयर, बहुत कंफ्यूजन है, यू ऑल नो इट, एवरीवन नो अबाउट इट। कितनी सारी कंफ्यूजन होती है, कितनी सारी पॉइंट्स आती है, किसके रिलेटेड? टाइमिंग के रिलेटेड। जितना हो सके कोशिश करना है पॉइंट रखनी है टाइमिंग के रिलेटेड इन अ वेरी
clear way with facts बहुत ही ज़रूरी है। एंड बहुत अच्छा लगेगा, आप सब भी ज्वाइन करेंगे। आई एम शेयरिंग द स्ट्रीमयार्ड लिंक एंड इवन आई एम ट्वीटिंग टू एट द सेम टाइम अबाउट दिस यूट्यूब सेशन सो दैट एवरीवन कैन ज्वाइन एंड आप सब ज्वाइन कर पाए और ऑन पॉइंट इसके बारे में रख पाए। आप सब भी ट्वीट में शेयर कर दीजिए बिकॉज दैट विल बी ग्रेट, राइट? दैट विल बी अमेजिंग। सो जस्ट शेयर दैट एंड विल डिस्कस अबाउट इट। अरे बाबा हाँ, लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं दो दो डिवाइस हैंडल कर रहा हूँ। ये लीजिए, लिंक शेयर किया आप सबके लिए। तो take this link and you can join in and I'll just pin that link too. हाँ बाबा, कर दी। I shared it Lasa ma'am, the link, and now I'm pinning the link too। जैसे उस दिन I think इसका प्रॉब्लम हुआ था। I shared it। मेरा ही मोबाइल में मेरी आवाज़ तो जैसे उस दिन प्रॉब्लम हुआ था, we all know it। अनम मैम का she was not able to join because ऊपर चली गई थी, पिन नहीं की थी। तो now we all want that आज आप सब ज्वाइन कर पाए। Yes, share the link. And yeah, Harsh is in the mood now. Republic wants to know your location. Giving them. We'll cover Sushant case there, fortunately. There's a chance मिला तो. Big fan? Sushant. Yeah, I did. Sushant, you all know it. Sushant के fan, as you all know. सब जगह सुशांत का ही name होना चाहिए. Yes, so let's go ahead and let's just demand SSR justice. बस ज्वाइन करते रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। स्ट्रीम यार्ड लिंक शेयर हो गई है एंड आगे बढ़ेगी, पॉइंट्स टू पॉइंट्स रखेंगे। हेली दी भी आए हैं, विशाल भाई भी आए हैं। दैट्स ग्रेट। वुड लाइक टू हियर फ्रॉम हेली दी देन विशाल भाई एंड ऑन पॉइंट बात करते सुशांत सिंह केस के बारे में। फिर बाद में आएंगे लास्ट में कुछ ऐसी पॉइंट्स पे जो रह गई स्पेस में, एक्सपीरियंस एंड ऑल। तो अभी केस के बारे में बात करते हैं स्टार्ट में, क्योंकि मोस्टली स्टार्ट को ही सुनते हैं यूट्यूब पे दिख जाता है वो। इतने मिनट्स तक लोगों ने सुना है, एंड में जाते ही नहीं, और या तो सीधा एंड में जाते, बीच का सुनते ही नहीं है। सो या मोस्टली तो वी वांट कि जल्द से जल्द कवर करें हम। दैट्स वाई मैं शेयर भी करना शुरू कर दूंगा। आई शेयर सम लिंक एंड आई डिस्कस अबाउट इट टू। मैं डिस्कस करना चाहूँगा और ऑन पॉइंट रखना चाहूँगा अबाउट दिस थिंग। ऑन पॉइंट रखेगी। यस यस, गो अहेड हरिदी। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? Hello, Ayush. Hello, Vishal Bhai. Hello, everyone, listeners, and hello, Harsh. I'm doing good, and glad to be back on the YouTube session. Yes, let's go ahead and discuss about the thing about 14th June that you wanted to go ahead and discuss. And yeah, we'll wait for the videos and let's go ahead and shred that light on the videos and everything, so we can go ahead and clear our confusions out about some things that we have in our mind. Yeah, over to you, Avish. Thank you. Yes, we'll definitely like to hear about it. सुनना चाहेंगे। And where is Professor? Professor is coming. आ रहे हैं। लासा मैम जल्द से जल्द आ रहे हैं। Professor is coming. This reminds me of the lockdown days when many channels were StreamYard during that period. Yes, yes, Harsh भाई, अभी भी है, हो रहा है। Same thing is happening now too. So it's like कि बहुत ज़रूरी है हमें ऑन पॉइंट रखना। सुहाना जी कैसे हैं आप? और यू सुहाना जी, आई होप यू आर डूइंग वेल। गुड टू सी यू। यस इज विशाल भाई, आप कहिए, देन खुशी जी, देन एवरीवन विल जॉइन एंड देन आई शेयर द वीडियो। गो अहेड विशाल भाई। ओके, आई थिंक विशाल भाई की आवाज़ नहीं आ रही है। मेरी आ रही है ना आवाज़? यू कैन हियर मी राइट? Yes, yes, bro. Go ahead. दैट्स ग्रेट। चलो मेरी आवाज़ आ रही है तो दैट्स अमेजिंग। एंड हम ऑन पॉइंट रखेंगे इसके बारे में। स्ट्रीम यार्ड लिंक तो शेयर हो गया है एंड हम उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं एंड आगे बढ़ते जाते हैं। यस, लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट एंड लेट्स जस्ट पॉइंट आउट अबाउट दैट। खुशी जी को सुन लेते हैं तब तक। गो अहेड खुशी जी।
हाउ आर यू? कैसे हैं आप? Hello, Ayush. I'm good. Am I audible? Yes, yes, you are. Please go ahead. Okay. Yes. Happy to be back on the YouTube. I was waiting yesterday कि आप you were talking about that video तो आप share करोगे. But yes, आज अच्छा लगा देख के कि finally we are doing today. Just eagerly waiting for the video and just wanted to share something or I would inform something that I will be having my paper from 13th March till 17th. तो अच्छा हुआ कि आज आपने ये यूट्यूब सेशन कर दिया सो दैट आई कैन जॉइन एटलीस्ट फॉर टुडे तो शायद में भी कुछ थोड़ी सी कम हो बट येस आई विल ट्राई माय बेस्ट बीच बीच में अगर टाइम मिले देन आई विल ट्राई टू जॉइन जस्ट fill the paper till 17th I will be having some problem but yes all right I'm here for today बिकॉज़ आज तो मैं कैसे भी आती इतना इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला था। सो यस आई एम हियर लेट्स स्टार्ट द सेशन अब आप वीडियो शेयर करो वी आर हियर टू डिस्कस विद यू ऑल सो दैट्स ऑल आई वाज गो अहेड। Yes, yes, we'd like to share the videos and all with all of you. ऑन पॉइंट वीडियो शेयर करना चाहेंगे। एंड देखिए, पॉइंट यही खुशी जी आपने भी उस दिन कहा था, वी शुड गेट दैट क्लियरिटी इन आवर माइंड, राइट? तो क्लियरिटी के लिए हम कुछ पॉइंट्स रख रहे हैं। वी आर कीपिंग सम पॉइंट्स एंड वी आर शेयरिंग दैट अपनी तरफ से। एंड यू हैव टू जज इट बाय योर ओन, इट इज़ क्रेडिबल और नॉट, बिकॉज सबकी कॉन्शियसनेस सबको अपने की, मैं कहता हूँ हमेशा से, आई ऑलवेज से, फैक्ट्स आप कोई भी देखते हैं ना, देखिए उसको, परखिए, फिर जानिए। मैं अभी खुद से भी ऐसा नहीं कहूँगा कि, जस्ट यू हैव टू जस्ट बिलीव ऑन दैट। एंड आई पर्सनली व्हाट आई शो, बट व्हेन आई सी इट आई चेक इट आउट कि मैं बिलीव कर पा रहा हूँ कि नहीं, और मैं पूरा रीचेक करता हूँ, क्रेडिबिलिटी देखता हूँ उसकी, देन आई बिलीव ऑन दैट। तो जस्ट लाइक मी यू हैव टू डू दैट टू। आप सबको भी सेम ही करना है। लेट्स डू इट एंड जस्ट पॉइंट आउट एवरी गुड काइंड ऑफ थिंग। सो या, बहुत ही ज़रूरी है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने लाइव शेयर कर दिया है यूट्यूब, ट्विटर पे। आई हैव शेयर द लाइव। You should do both spaces as in one day for spaces and YouTube. Yeah, I'm trying to do that. A suggestion for Ayush, you should do both spaces and this as in one day for spaces and another for stream. Yes, बिल्कुल मैं यही सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग लाइक दैट। तो कुछ फैक्ट्स बहुत सारे हैं जो हमने पेज में रखे हैं, यूट्यूब में हम रखना चाहते हैं। तो यूट्यूब चैनल तो कुछ ही दिन हुए हैं, हम बहुत ही अच्छे से एक्टिव हुए हैं एंड आई पर्सनली फेल्ट लाइक या इट्स इम्पोर्टेंट टू बी ऑन यूट्यूब टू शेयर सम फैक्ट्स। वो भी एक एक्सट्रीम केसेस की वजह से हम एक्टिव हो गए थे, स्पेसेस नहीं वर्क करी थी। Yes, इस सीज़न से, पर उसके बाद फिर अच्छा लगने लगा, पॉइंट शेयर होने लगी यहाँ पे एंड फिर हम रखते गए। आप सब प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, आई ट्वीटेड दैट। तो यस, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, शेयर करना चाहेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं जो उस दिन दिखाया था, स्टार्टिंग से। अगर आज कोई न्यू है, इनको याद ना, तो लेट्स शेयर दैट इम्पोर्टेंट थिंग फ्रॉम द स्टार्ट। लेट्स शेयर दैट थिंग and let's share that facts so that we will get that point and we'll get that important information together in that. So हम शेयर करते हैं और ऑन पॉइंट रखते हैं उसके बारे में। And let's just keep it and let's just understand the importance of that. तो ये देखिए, ये उस दिन हमने शेयर किया था, जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ स्क्रीन पे। जस्ट लुक एट द स्क्रीन एंड दैट विल बी ग्रेट। Yes, yes, Harsh bhai. You too, you are doing good too. Prayer and everything, you're doing it. Would like to meet one day. सुनना चाहेंगे आपसे एंड आगे बढ़ना चाहेंगे। यस यस, यू कैन विशाल भाई, आप बात कर सकते हैं और 2 मिनट, 2 मिनट्स एज ए सेड, यस यस, यू कैन टेक फॉर वाइल एंड उसके बाद मैं शेयर कर दूंगा। एज ऑफ नाउ आप 2-3 मिनट्स ले लीजिए, जितना आपको लेना है, 5 मिनट्स। यू वांट टू, लाइक आपको क्या ऑन करना है, कैमरा भी ऑन करनी है, यू कैन डू दैट। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।
योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हाँ, खड़ी बता दूँ, दिख रहा है अच्छे से, यू कैन सी इट। Are you able to hear me now? यस यस वी कैन। Oh, so one of my sweethearts, I am not sure Kushi ne dekha na hoga, so Kushi, this one is for you especially. I want to say hi to everybody. सुशांत सिंह Do राजपूत। his smile is चलो चलो आपको सुशांत का रूम दिखाता हूँ। हालांकि ऑफ कोर्स मेरा रूम है, बट इट इज सुशांत रूम, पहले भी दिखाया है। So this is the pic that Sushant's papa had given a gift to as one of a warrior, and he gave it to me to keep it with myself. My few collections of Sushant Singh Rajput, few notes, थोड़ा पास लेके जाता हूँ। 702 माउंट ब्लैंक का फ्लैट नंबर, 4747 सुशांत की कार का नंबर, 14 14 14 राउंड अबाउट 14 जून। 14 को आप 24 आवर्स कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 2 PM and 14 minutes we got Sushant Singh Rajput's news unfortunate demise. And ये देखना क्या, सड़वी ट्रॉफी मैं कभी जीता भी था, भाड़ में गया। दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, ही इज इम्पोर्टेंट। सो एक्चुअली एक ये और एक रेंज ओवर कार मेरी पता नहीं कहाँ गुम हो गई थी, लेकिन मुझे वापस मिल गई। बट आई एम स्टिल फ्रीकिंग सर्चिंग फॉर मासेराटी क्वार्टर। भाई कोई दिला दो यार मुझे प्लीज। अमेजिंग। हाँ, थोड़ा कैमरा थोड़ा ऐसा कर दो तो ताकि ये चीज भी दिख जाए सबको। सॉरी ये थोड़ी नोट टर्न हो गई है। आई विल गेट दैट थिंग sorted out tomorrow morning first thing itself. So the first note is 601 Mont Blanc. Second note is 602 Mont Blanc. Third note is 701 Mont Blanc. The fourth one is 702 Mont Blanc. This is Rapta with Sushant Singh Rajput. अब कैमरा ऑफ करता हूँ because I'm eating. Thank you, Ayush, for giving me this opportunity. Let's talk about Sushant Singh Rajput. Justice for Sushant Singh Rajput. It's very important to fight for SSR justice. And entire room as well with SSR. Amazing. Ishan loved it. Yes. That's great. That's amazing, I believe. And हमें डिस्कस करना है, ऑन पॉइंट हमें रखना है। यू हैव टू डिस्कस अबाउट एवरीथिंग। दो हो गए, चलो तभी मैं कहूँ यस, तो विल डिस्कस एवरीथिंग, every possible thing today, and it was amazing. Thank you so much, Vishal bhai. Vishal bhai left, okay, he's not there, and whenever he'll come I'll say it. I'll say that. So I'd like to share the screen now. Let's share it. आप सब देख पा रहे होगे, right? I'll just see it. Yeah, you can see it. Everyone can see. Enforcement directorate is trending. That's good. Tweet about ED so that trending में tweet चला जाए, बहुत ही क्लियर रहेगा। इस सरदेसाई के बारे में हमने March 10th रिया के इंटरव्यू के बारे में डिस्कस किया था, few days back. The last page I can see it, right? Yeah. Day before yesterday. इसकी पिक देख लीजिए, टेक लुक एट हिज पिक। एक्सप्रेशन कम नहीं है इसके आगे। आज की इसकी पॉइंट नहीं है तो मैं तो नहीं जाना चाहूँ, दिख गया तो मैंने कह दिया। हमने उस दिन इसको शेयर किया था, राइट, यूट्यूब पे। दिस इज देयर। एम्बुलेंस से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते तो क्लैरिटी आएगी माइंड में। स्टार्टिंग से पॉइंट्स रखेंगे तो क्लैरिटी विल बी देयर। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट, सुनते हैं इसको। पे कि आखिरी कॉल किसका था, किन लोगों से पिछले कुछ समय से सुशांत सिंह राजपूत बात कर रहे थे। देखिए, जो बाकी अधिकारी थे सब बाहर आ रहे हैं और अब सुशांत सिंह राजपूत के पार्थिव शरीर को लेकर एम्बुलेंस बाहर की तरफ आ रहा है। पुलिस, देखिए बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी, क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस के जो तमाम अधिकारी कर्मचारी अंदर मौजूद थे,
ये सभी अब इस वक्त बाहर आ रहे हैं और इन्होंने अभी तक जो जांच की है उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले सीनियर इंस्पेक्टर हैं, सीनियर इंस्पेक्टर इनसे जानेंगे, कोशिश करेंगे हम जानने की कि कहाँ लेके जाया जाएगा। सर आपको कहाँ पे? भाभा की कुपर अस्पताल, भाभा की कुपर। हेलो, दिस इज मेरी वॉइस है, मैं यहाँ पे हूँ तो मैं क्यों सुना, राइट? ये सुनाई थी उस दिन 4-4 लाइव फुटेज, ओके, क्वाइट क्लियर। उस दिन शेयर किया था, ऑन पॉइंट रखा था, एंड यू गॉट मैनी पॉइंट्स ऑन दैट। बहुत सारे पॉइंट्स मिले उसके ऊपर, एंड डिस्कशन हुआ, अच्छे से हुआ, ऑन पॉइंट हुआ डिस्कशन, एंड वेंट वेरी वेल। सो रखना चाहिए, हर एक पॉइंट को रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हुआ एक लाइव फुटेज, एंड दिस इज द सेकेंड वन, you can see it. This is the second one. India today, 4-4, the same time. The same time it is showing 4-4-4-3, ambulance coming out. इसको देख के हमें एक पॉइंट तो क्लियर हो गई कि एम्बुलेंस आई है और वो 4-4 को निकल गई है। And 6:50, sorry, 16:55 means 4:55 they reached that Kupu. So means more, I can say it 50 minutes, right? 50-55 minutes तक वो approximately 50-55 minutes approximately they were there. They were roaming around to reach Kupu hospital. तो वो 50-50 minutes में क्या वो तो सोचने वाली बात है, पर 4 hours नहीं है। ये थिंग क्वाइट क्लियर है, 4 hours इज नॉट देयर। वो पॉइंट क्लियर हो गई है, एंड ऑन पॉइंट इस पे हमारी पॉइंट भी आ गई है। एंड एट द सेम टाइम 12 o'clock वाला भी, 1 o'clock वाला भी, 2 o'clock वाला, 2:30, 2:35 न्यूज़ आई है। विशाल भाई ने भी कहा 2:14, राइट? 2:14 के अराउंड है यू सेड, तभी आपने ये नोट, बहुत अच्छा लगा आपने पॉइंट को रखा, और यही पॉइंट है। हाँ, today that point is there and we'll like to share about it. देखिए, I don't wanted to share that, first of all, that footage is of 14th, right? Breaking news which was there with that fake narrative. I mute the voice and I have to share that. So वो तो करना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी भी है करना, तो वो करना चाहेंगे, एंड ऑन पॉइंट रखना चाहेंगे, तो उसके लिए आज करना पड़ेगा उसको शेयर, एंड रखते रहेंगे हम पॉइंट्स, विल डिस्कस अबाउट इट एंटायरली इन अ सुशांत सिंह राजपूत स्पेस। रखना है पॉइंट्स को। किसी को कुछ कहना है? Ayush, I Anything? need to say something, but not related to this. I'm sorry, I am getting off topic. If I have your permission. Off topic in the sense? So, there's one of my cutie pie sister on the space. Oh, sorry, not on the space. YouTube session right now. Khushi. She's having her exams from Monday onwards. So, all the best to her from me, from Sushant, and from all the SSR warriors. So, guys, please give her the blessings that she does. I'm sure she will do very good in the exams, but आपकी blessings दे दो उसे। हम सुख दुख शेयर करते हैं हमेशा हमारे स्पेसेस पर, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, उनके एग्जाम्स है, सो शी नीड्स हर ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीबॉडी। सॉरी खुशी, ये चीज मैंने शेयर कर दी। आई होप यू डोंट माइंड, बट warriors, please bless her so that her exams goes well. I'm sure she will do well in her exams. All the best, my cutie pie sister. All the best. वो निकल गए? अच्छा, हुआ है। No, she's there. Shalbia, I really need that blessings and yes, thank you so much. And not that's not the issue. मैंने आपसे पहले भी share की थी. Ayush said that yeah, I'm having my paper for Monday. So thank you so much. I really need that blessings. सबकी blessings चाहिए मुझे because yes, थोड़ा सा difficult होता but yes, I'm here and I will be here. Will be managing. Thank you so much for your blessings. अमेजिंग, अमेजिंग, थैंक यू विशाल भाई। आई नो बेटा, मैं शेयर करने के लिए, एंड आप सब प्रेयर्स ब्लेसिंग्स करते रहिए। कीप ऑन डूइंग द प्रेयर्स एंड कीप ऑन गिविंग द ब्लेसिंग्स एंड ऑल।
ऐसे विशाल भाई ऑफ टॉपिक डजेंट मैटर, बट ये पॉइंट शेयर किया आपने, बहुत अच्छा लगा। इस पॉइंट पे कुछ कहना चाहें आप कहिएगा, एंड आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। तो अभी हम आते हैं पॉइंट पे कि आज क्या शेयर करना था। देखिए I शेयर कौन है? sorry. Can I say something before you speak? या यू कैन। Okay. So first of all, good luck, Kushi Didi, on your test. And second thing, I was looking a couple of days ago, and after we did the session on this, I was looking through, you know, the days where I got the articles on my phone that the fake narrative that Sushant Singh Rajput committed suicide. Mine was at that time. The clock was 12 and a half hours difference, not 13. Right now it's 13, but at that time it was 12 and a half. And when the news came in India at around like 2:35, so I can totally relate it because I got the news around 2 here in the morning, like 2 a.m. Of course, I didn't see the news around that time because I was kind of sleeping. But when I woke up, that was the time it showed me that it was published around like 1:55 too. So I totally agree with you that the news came up around like 2:30, 2:45. I mean, around that time too. That time only. So just wanted to go ahead and share it. So yes, exactly, well said by Ayush, that don't depend on anyone, just fact checks your basics too, because you might have a different point of view, and again it's different. It's okay for you to have a different point of view, but it's not okay to go ahead and believe that you are right and the other person is wrong. When the other person is right, to take it that the other person is right too, but always fact check your things before you go ahead and put it out, or before you go ahead and tweet about it. Just wanted to go ahead and say that, Ayush. Thank you. Ayush, I'm sorry, can I interrupt you for one quick moment? या यू कैन। Can you please share the StreamYard link to Anam ma'am, because she मैंने messaged me कर right now दिए। that she is not able to join. Maybe actually उनसे share करो, but I मैंने don't know what's wrong कर दिए। happening. अरे भाई मैंने कर दिए। अब जस्ट फ्यू मिनट्स बैक ऑन यार। Yeah. Same way. She messaged me that she wanted to join the stream, but she's not able मैंने to. So please, if you can take care of this, bro. वो तो आ भी गए हैं स्ट्रीम पे शेयर करके। यस मैंने अभी अभी तो शेयर किए, पिंग भी करके रखी है मैंने यूट्यूब पे। व्हेन यू जॉइन इन एंड यू विल सी दैट। सो No, या hi Ayush, namaste. Thank you so much, हाउ यू Vishal कैन ji. सी दैट। Namaste, namaste, Jai Hind, Jai Bharat. Sorry, and 302 of SSR. Thank you so much. No, I cannot see it when you ping it on YouTube. That's I asked you to DM me the thing. When I click on YouTube, it send me to YouTube link. It doesn't send me to the StreamYard. So that's I couldn't kind of see the StreamYard link. But anyway, nice to be on this platform again. I wanted to join, and so thank you so much. I also pinged Haley D, and so she didn't respond. So I thought, let me try Vishal ji, Khushi ji as well. So now I have, so they don't need to message me. And so sorry to kind of bother everyone, but Ayush, you could have messaged me the StreamYard link. Sorry. नो आई जस्ट मैसेज यू फ्यू मिनट्स बैक। मुझे तो मैंने जैसे ही अभी कुछ देर पहले ही स्ट्रीम में लिंक शेयर की, मुझे आपका मैसेज दिखा है ना, जस्ट शेयर इट विद यू। यही है। एंड जो भी यहाँ पे लिसनर्स में भी है ना कमेंट कर रहे हैं, आप पिंक की हुई है, क्लिक कीजिए, यू विल कम डायरेक्टली ऑन स्ट्रीम यार एंड यू कैन टॉक लाइक अन मैम डिड इट राइट। प्लीज डू टू फॉर SSR अन मैम एंड गुड टू सी यू। लेट्स स्पीक अबाउट इट। Vasudha Di, Justice for Sushant Singh Rajput, amazing. Justice for Sushant Singh Rajput. How are you? कैसे हैं आप? Coming to the point, right on point आते हैं, चलिए. Let's speak about it. On point, facts के साथ. देखिए, confusion mind में narratives लेकर आती है. मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा. Listen to this very carefully. Confusion mind में narratives लेकर आती है. Narratives mind में different point of views लेकर आते हैं from other people से जब different point of views हो गए
तो फिर वी विल नॉट बी ऑन सेम पेज। और जब सेम पेज पे नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, डिफरेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ के ऐसे कन्फ्यूजन्स होगी, सब कुछ। तो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द कन्फ्यूजन थिंग। तो कन्फ्यूजन कभी किसी को नहीं होनी चाहिए। तो या, तो कन्फ्यूजन किसी को नहीं हो। यस खुशी जी, कांट वेट, आई विल प्लीज शेयर द वीडियो। या आई विल नाउ। पहले ये मैं इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, so that everyone doesn't take it wrong, right? तो ये बात है। अगर आप लोग समझिए, फॉर एग्जाम्पल, वी नेवर एवर, हमें पता ही नहीं चलता सुशांत का मर्डर हुआ है, पिक्स आई नहीं होती, नथिंग वुड हैव हैपेंड। पिक्स आई, न्यूज़ मिली, है, पिक्स आई है, नरेटिव्स बाद में, स्टेटमेंट्स के थ्रू सब कुछ मिला। बट कंफ्यूजन अभी आ रही है, टाइमलाइन को लेके बहुत टाइम से है, नो डाउट अबाउट इट इज़ देयर एंड इट विल बी देयर, नो डाउट अबाउट इट, जब तक मीतू दी एंड सीबीआई नहीं आते। सीबीआई आएगी, मीतू दी नहीं आ सकते, बिकॉज दिस केस इज गोइंग ऑन। बहुत लोग कहते हैं मीतू दी आके कहे, दिस केस इज गोइंग ऑन, तो सीबीआई विल कम अप विद मीतू दी स्टेटमेंट in the charge sheet, तो that will clear the point। तब तक कंफ्यूजन रहेगी, बट हमारी तरफ से अगर कुछ पॉइंट्स क्लियर हो फैक्ट के साथ तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट। स्टार्ट हम करते हैं न्यूज़ मिलने से। अभी पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट है, एंड आई एग्री विद एवरी पॉइंट ऑफ व्यू दैट कोई कहता है मैं ये 12 o'clock न्यूज़ मिली, तो कोई कहता है 11:30, टाइम जोन्स के हिसाब से 1:30 या फिर 2:30 के, इन द सेंस पहले इंडिया के IST के 2:20 के पहले, नो डाउट अबाउट इट, राइट, कि 2:20 के पहले अगर आप सबको दिखी है तो उसके फैक्ट्स होने चाहिए। अभी फैक्ट्स, क्योंकि हमें याद है जो व्हाट वी रिमेंबर इट वी शेयर दैट, बट फैक्ट्स जो दिख रहे हैं दैट इज बिटवीन 2:20 to 2:40। आई सेड दिस थिंग few days back, and I know it's important to show these things, right? Let's show it out। और स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो से। अभी आप सभी ध्यान से देखिएगा और देखिए, इट्स हार्ड टू सी दिस थिंग बट वी हैव टू, नथिंग डिसहार्टनिंग दैट मच, खाली न्यूज़ है। अभी आप ऐसे में सुनने के बहुत ही डिसहार्टनिंग है, कुछ नॉट लाइक दैट, जस्ट न्यूज़ एंड यस। Can I ask you a question, Ayush? So when do you think Sushant must have passed away? What You're, time? you're talking about when Sushant passed away, right? Yes, yes, News yes. break. Sushant was no more from the night itself, because Sushant was brutally murdered around 13 night to 14 morning, right? जो 14 की नाइट होती है, सुशांत की डेथ तो हो गई थी, मर्डर हो गया था, कवर अप वाज गोइंग ऑन टिल 2:30। दैट इज व्हाट वी गेट इट। तो सिनेरियो को स्टेज करने के लिए 2:30 लग गए, वो पॉइंट हमें मिल रही है। और उसमें कोई हमारे पास आई थिंक से कोई फैक्ट नहीं है कि पर्सनली व्हाट आई फील है ना, मैं 2:30 के पहले न्यूज़ आई है। बहुत सारे मैं मानता हूँ, पीपल से इट एनीवन, मेनी थिंग्स, सम थिंग्स आर देयर, some of the statements are there। I'll tell you on that, I'll discuss about it on that in a very elaborate way, but what you asked it, and मैम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्वाइट क्लियर है। सुशांत was brutally murdered in the night itself, नाइट में ही हो गया था। that says it all and it defines everything। yeah, Ayush, yeah। can I say Now something? you can then वीडियो शेयर कर देता हूँ फिर बात go हाँ, of course. Sorry, मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता हूँ। I'm eating, so my bad. I'm sorry, मैं कैमरा ऑन नहीं कर रहा हूँ। So, I absolutely agree with you. Sushant was brutally murdered on 13th night itself. Your last session, I don't remember, was it YouTube or Space? हमने discuss किया था about the autopsy report. I think it was Twitter Space पे, the autopsy report and blah blah blah, the viscera and everything. So वहाँ पे clear कट था कि सुशांत के स्टमक पे तो कुछ मिला ही नहीं, no drugs, nothing, 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 nothing. And these chomus, I'm sorry to for my language, please bear with me, guys. These chomus, the four flatmates,
One says Sushant had this juice, Naral Pani. One says Sushant had cold water in the morning and blah blah blah. One says he had the juice at 8:30 a.m. in the morning. One says he said 10 a.m. he took the juice and he went inside the room. Sorry, I'm repeating myself. कोई मेरे को गलत प्रूफ नहीं कर सकता इस पॉइंट पे. नो वन मीन्स नो वन. सुशांत ने अगर इनकी बात सच हो, सुशांत अपना ग्लास रूम में लेके गया. सुशांत ने अपना को रूम में लॉक कर दिया. Where the hell that glass vanished? जो जूस का ग्लास वो लेके गया. इंसान जूस पिएगा, जूस का ग्लास तो नहीं पिएगा ना. Prove me if I'm wrong, dude. No one can prove me I'm wrong. And as per his visa report and his autopsy report, उसके स्टमक में तो कुछ मिला ही नहीं. No drugs, no poison, no evidence, nothing. कुछ मिला ही नहीं उसके visa report और postmortem report में. Nothing. तो इनकी जो फेक नैरेटिव थी 14 की, that he had cold water and he had this juice, he had नारियल पानी, was all freaking fake. And 11:30, why I'll tell you, if you do a Google search, मैंने किया है. Postmortem, as per Sushant Singh Rajput case, started at 11:30 p.m. in the night on 14 June. So for me, the murder was done of Sushant Singh Rajput before 11:30 itself. Because if I'll take my example. अगर मैं कॉमन पर्सन हूँ, मैंने कुछ ड्रिंक किया या मैंने कुछ कंज्यूम किया या मैंने कुछ खाया, वो मेरे रिपोर्ट में आ जाएगा विद इन 24 आवर्स. अगर वो टेस्ट होता है तो 24 आवर्स के बाद होता है तो वो रिपोर्ट में नहीं आएगा. मैंने गूगल सर्च किया था. मैंने दैट्स द रीजन व्हाई दिस फ्रीकिंग कैरेक्टर्स did a postmortem late in the night, which is illegal. Let me be very particular. Illegal. Because after 6:30 p.m. you cannot do a postmortem for a case which is homicide, or if so called these people call is at a suicide. You need a permission from the court. No matter your country's president or prime minister says do the postmortem, you can't do that until and unless you have a relevant document from the court that you can do this postmortem after 6:30 p.m. इतने तो बॉचअप्स हो गए. What else we need to prove that this is a cold-blooded murder? A request to you, CBI. Wake up, guys. कुंभकर्ण भी इतना नहीं सोता. कुंभकर्ण वो खाने की खुशबू सुन के उड़ जाते हैं. आपको क्या दूं या हम क्या दे आपको कि आप उठो और सुशांत सिंह राजपूत के केस 302 फाइल करो. थैंक यू आयुष. Very well said. I agree with what you said. We share the same point of view regarding that. No doubt about it. Suman Majbudar. Ji, Suman Majbudar sir. How are you? Jai Shri Ram. It's script, that's all. Yes, Vipasha ji. Everything was covered up, only fake theories were given. No doubt about it. Coming to the point, a very important point now. What I wanted to share with everyone has she to say. देखिए मैं इसको एडिट कर मतलब मैं डाउनलोड करके भी शेयर कर सकता था, राइट, बट मैं चाहता हूँ डायरेक्ट यूट्यूब से देखिए. जैसे कुछ भी ऐसा ना लगे कि किसी ने डाउनलोड करके एडिट किया हो, कुछ किया हो. तो डायरेक्ट ये यूट्यूब का वीडियो दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा साइट की थिंग्स को. सॉरी, जो लिखा हुआ है इन द सेंस वही मैं कह रहा हूँ. यू अंडरस्टैंड दैट? इग्नोर इट. सी द टाइम अबाउ what I will share now. And I'll keep this thing for 10 minutes. I'll take it out, then I'll share then I'll take it out. 10 minutes के लिए रहेगी. आप जल्द से जल्द देख लीजिएगा. Clicking on share, and it is share. Okay, you can see it. आज तक coming with the breaking news. What? That fake narrative. At what time? 1424. You understanding that? 1424. This is what? This is breaking news. Breaking news है ये. सुशांत सिंह राजपूत की कितने बजे? 1424 को. कब?
14th of June को. Understanding that this was published on 14th of June. You can get this point, breaking news, आज तक, and it is there. मिल गई आपको point? बहुत सारी points मिली. That's great. So this is the first news which I want to share it, and this will give you clarity. This will give you many points about it, और ये आपको बहुत सारी points और भी देगा. अब मैं इसको शेयर करना स्टॉप करता हूँ. आप सबने देख लिया, right? Everyone saw it. 1424 breaking news came up about that. इससे पहले नहीं आई थी, आज तक पे. This is the first thing which I wanted to share it. Second video जो मैं दिखाना चाहूँगा आपको, prominent न्यूज़ चैनल के दिखा रहा हूँ सब, और इसी के साथ कुछ छोटे न्यूज़ चैनल्स के भी दिखाऊंगा. वो भी आपको बहुत क्लैरिटी देगा. The same thing, and sorry I wanted to share with this thing, और ये YouTube से शेयर करना पड़ा है, पर ये पहले आया था. पहले तो हम सब ने भी ऐसे ही देखा था, बाद में सब क्लियर हो गया है. तो यस, तो ये देखिए, this is the breaking news of India today, and they have written obviously not that fake narrative. Fortunately, इन्होंने वो फेक narrative नहीं लिखा है. तो वो भी थिंग्स स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट? आप सबको पहले दिख रहा था, तो आप सब देख ली है तो नीचे रिएक्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, so that we will get that clarity on that. इसको मैं रख सकता हूँ कुछ समय के लिए, क्योंकि इसमें वो फेक नैरेटिव नहीं लिखा हुआ है. ब्रेकिंग न्यूज़, सुशांत सिंह राजपूत डायज. ये न्यूज़ ने हम सबको शॉक कर दिया था. एट व्हाट टाइम दिस इज? जस्ट लाइक आज तक, 22:25 PM. आज तक में भी ब्रेकिंग न्यूज़ तभी आई, इंडिया टुडे में भी ब्रेकिंग न्यूज़ टाइम पे. मैंने उस दिन आपको एक बात कही थी, ये सब न्यूज़ 220 से लेके 240 के बीच में आपको यूट्यूब पे मिलेगी. आज उसका मैं आपको एग्जाम्पल, मैंने उस दिन कहा था मैं नहीं दिखाना चाहूँ, बट नाउ इट्स हाई टाइम आई हैव टू शो इट. दिखाना पड़ रहा है और ऑन पॉइंट रखना पड़ रहा है. उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज 2:25 इंडिया टुडे ब्रेकिंग न्यूज़. But the point, right? Everyone got the point. खुशी जी, you can't see it? आप नहीं देख पा रहे? No, now can she can see it. So go ahead. Okay. I can see. So you all can see this thing, right? This is the breaking news. और मैंने इसको शेयर भी कर दिया, इस रीज़न से कर दिया. 2 न्यूज़ शेयर किए हैं अभी. आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कब आई है, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स की क्लैरिटी होनी चाहिए पहले. दिस इज़ वन ऑफ दोज इम्पॉर्टेंट थिंग विच शुड बी देयर, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं न्यूज़ चैनल्स में ही पहले आ गई थी. Yeah, and आज तक पे तो and sorry to cut you, who gave them the news as well? That's also we have to know that where did they got the source of, who was their source? at what time? Which news you're talking about? This news, the breaking news, like what was their source? Who told them that he passed away? This is what we all know है. This news at 2:25 जब ये आई है अनम मैम, तो ये न्यूज़ तो ऑब्वियसली मुंबई पुलिस वहाँ पे पहुँच गई थी. एट द सेम टाइम मुंबई पुलिस, जब पुलिस कहाँ पे पहुँच जाती है तो मीडिया तो आ ही जाती है. वो टाइम में मुंबई पुलिस भी पहुँच गई थी, मेथुदी भी पहुँच गए थे, एवरीवन वाज देयर. तो ये टाइम पे तो न्यूज़ मिलना बहुत ही, जैसे आपने कहा, बट ऑब्वियस है. हु गेव द न्यूज़? दैट इज मुंबई पुलिस, राइट? मुंबई पुलिस या फिर मिल जाती है. यू गेट दैट पॉइंट. द सुशांत सिंह राजपूत इज नो मोर. जब इतने सारे लोग आ जाते हैं, और मीडिया तो आपको पता ही है कैसी है, कहाँ पे क्या होता है, वी डोंट इवन नो दैट, और उन्हें पता चल जाता है. दे हैव द स्ट्रॉन्ग थिंग, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस एंड ऑल. It was decided to telecast this around this time. No, this is not like that. It was not decided to telecast. I'll explain you, Vipasha ji. It was decided to telecast this around this time. You're saying that. Important point you have raised it. First of all, thank you so much for raising this point. क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के माइंड में. एंड ऊपर जो आपने लिखा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट नीड्स टू वेक अप, डू सो मच लाइक बजट्स एंड ऑल. मैं इस पे आता हूँ पॉइंट पे, तो अभी इस टॉपिक से दूर जाएगा, बट आई कम टू दिस पॉइंट. इट वो डिसाइडेड टेलीकास्ट दिस अराउंड दिस टाइम. मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा अभी विपाशा जी. पूरी ब्रॉडकास्टिंग टीम
इंडियन ब्रॉडकास्टिंग जो होती है न्यूज़ की, सब एक कॉन्स्पिरेसी करे, ये पहली बात पॉसिबल नहीं है कि सुशांत की न्यूज़ ये टाइम पे आनी चाहिए। इसमें रिपब्लिक भी आती है, ये सब बातें हैं। रिपब्लिक की खुद ये टाइम पे न्यूज़ आई, आप सबने देखी होगी। रिपब्लिक, टाइम्स नाउ जो सुशांत के लिए लड़ रहे थे, तो उन्हें भी पता होगा, पहले आ गई होगी अगर उन्होंने कर ऐसे कुछ कॉन्स्पिरेसी या फिर डिसाइड किया है तो। कॉन्स्पिरेसी ही कह सकता हूँ, क्योंकि आपने न्यूज़ को छुपा के रखा जो आप कह रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यू हैव टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट इट। फिर आप कमेंट कीजिएगा व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट। ये पहली पॉइंट होगी। सेकंड पॉइंट, ये रही न्यूज़ की बात कि न्यूज़ इतने टाइम पे आई है। जो लाइव फुटेजेस दिखाए जाते हैं, वो लाइव फुटेजेस के बारे में हम क्या कहें। देखो, लाइव फुटेजेस तो टेलीकास्ट के लिए डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ लाइव एंड इट जस्ट टेक मिली सेकेंड्स टू कम ऑन लाइव। थोड़े से सेकेंड्स लगते हैं। जैसे मैं अभी आपसे यहाँ पे कह रहा हूँ हेलो, आपको यूट्यूब पे आप है, स्ट्रीम पे नहीं है, राइट। आपको यूट्यूब पे आएगा 2-3 सेकेंड्स के बाद, यूट्यूब के थ्रू कह रहा हूँ, 2-3 सेकेंड्स के बाद 5 पकड़ के चलिए अप्रॉक्सीमेटली। बट जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो मिली सेकेंड्स लेते हैं, थोड़े सेकेंड्स, सीधा आपको वो दिख जाता है ऑन टीवी। लाइव ब्रॉडकास्टिंग विच वी से। तो लाइव ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू हमें क्या दिखता है, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस गई, पुलिस आ रही है, पुलिस है। और अगर पुलिस आ गई है तो एम्बुलेंस भी आ गई होगी पहले ही। तो लाइव फुटेजेस में कैसे एम्बुलेंस आ रही है इतना लेट? इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। फिर तो सब 12 o'clock हो जाना चाहिए थे। लाइव फुटेजेस बनती ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, कुछ लोग वहाँ पे गैदर ही नहीं होते। बिकॉज देयर वर पीपल हु वर देयर लाइक कॉकरोचेस, आई कैन से, सॉरी टू से दिस वर्ड, बट कॉकरोचेस की तरह वहाँ पे थे कोविड के टाइम। सब यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ गए थे। पुलिस ऑफिसर्स तो थे ही, लोग भी थे, मीडिया चैनल्स भी थे। उन सबको ये पता है वो कौन से टाइम पे आए। दैट सेज इट ऑल टू। तो लाइव फुटेजेस कांट बी डिनाइड। एंड इवन ये न्यूज़ भी कैसे डिनाई हो सकती है, क्योंकि न्यूज़ एक साथ हुई है और कॉन्स्पिरेसी होना इज नॉट पॉसिबल सबके साथ। अभी ये तो 2 न्यूज़ चैनल दिखाइए, आज तक और इंडिया टुडे, इस पे तो यस है ही। यस, आयुष, थम्स अप, यू अंडरस्टैंड इट, दैट्स ग्रेट। अभी तो और भी आने वाली है। लेट्स शो एवरीथिंग, एवरी पर्टिकुलर थिंग देन। तो ये मैंने एक दिखाई है, and I'll show it few more now. This will be there and this will be there. On a ma'am, you're going? Yes, I will take a leave. Going to have dinner. 302 SSR. See you. See you, Anna ma'am. 302 SSR. Thank you so much, Ayush. And this very interesting discussion you're on. You're right. We need to kind of understand each and every point, all the points we know about. So, what to know what must have happened, so we could know what must have gone through with Sushant. So, I would take your leave. I'll try to join a bit later if I can. But again, 302 of SSR. 302 SSR. It's amazing. Very well. See, yes, yes, interesting discussion तो है। ये है TV9 गुजराती, इसकी न्यूज़ उस दिन चलाई थी हमने, राइट। देखिए TV9 गुजराती में भी कितने टाइम दिखाया गया। I'll share with you. You can see, right? आप देख सकते हैं TV9 गुजराती 14 जून। दैट न्यूज़ विच इज़ फेक नेगेटिव इज देयर ऑब्वियसली, वो स्टार्टिंग में यही दिखाया गया था। 2:35, यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मतलब बाद में है पर पहले नहीं है। यू नॉट सीन एनी न्यूज़ बिफोर द 2:20 टाइम। 2:15 लेते हैं कि पहले हमें कोई न्यूज़ नहीं दिखी, पर 2:35 को हमें ये न्यूज़ दिख रही है। ये है TV9 गुजराती is coming up, that news. So you can see it, right? You can see it. मैंने क्या कहा, 2:20 से लेके 2:40 के बीच में न्यूज़ आई है, उसमें से एक ही आपको दिख गया, 2:35।
फ्रॉम 2:24 to 2:35, उससे पहले नहीं ना उसके बाद में। एक है इसके बाद में, नो डाउट अबाउट इट, दैट इज़ 2:37, एंड वो भी हम शेयर करेंगे। विल शेयर इट। दिस इज TV9 Gujarati. Ayush, sorry, can I say something real quick? I was knowing that you will say it. Go ahead. That's called telepathy, yeah. So just wanted to say that by you showing everything, and even I, researched some things, which I always say that, I also research. One thing is clear that first of all, जैसे आपने पहले ambulance का video दिखाया कि it left around 4:04 and it reached around 4:55. So obviously, COVID time, the roads would be open, all open. So the thing is, of course, कुछ तो हुआ है बीच में, but it was not a gap of 4 hours जैसे हम लोग बात कर रहे थे. It's a gap of couple of minutes, but कुछ ना कुछ हुआ है जो we are not sure. That side, CBI has to find out what happened in between, like four of I would say, let's just take like 4:06 or 4:10 to like 4:55. And the other thing is, by all the articles you shared with us, and even again I researched, one thing is clear that the news broke up around 2:30. There was nothing before, I would say, 2:15, or nothing after, like of course there should be articles after especially international media. So because the thing is ki, US maybe republic ke sources have, so it's easier for Indian news to go ahead and break up easily here, which is not a problem. But other states where they don't have that much of connections, it takes a long time for the news to go ahead and get published. So it depends on the country you live into, where the news is when the news is published. But where I live, it was around 2:40 IST, I would say 2:30, or between 2:30 and 2:40 IST, which is Indian Standard Time. So this is clear that people who say that the news broke up around, I guess, 12, and when actually it doesn't make sense if you think logically. I mean, why would the news media will go ahead and, as you said, that they have a corporation, right? Why would they decide to go ahead and break up the news? And हमने key maker पे पता है, we had a debate about that, the key maker, how about Republic की जो नीचे कैमरा का वो चल रहा था. It was the timing the camera was rolling, and we thought it was like 1:40. So this is kind of the confusion that we are getting this. But now everything is clear that the news broke up around this time, and the ambulance left was around like 4:04. Just wanted to go ahead and say that. Thank you. Yeah, क्लियर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है. इट इज़ क्वाइट क्लियर एंड दैट सेज इट ऑल. ये तो मैंने आपसे कितनी अभी न्यूज़ शेयर की? आई शेयर 3 न्यूज़. आई हैव 3 मोर. आई हैव 3 मोर एंड आई विल शेयर दैट. उससे पहले ये वीडियो शेयर करते हैं, क्योंकि लाइव फुटेजेस की बात चल रही है. I shared that live footage that day. Ambulance coming out of Mont Blanc for Cooper Hospital. Now I'll share something very important too. White ambulance getting inside Mont Blanc. That is the first ambulance. You have to understand that. पहली एम्बुलेंस है ये. तो ये एम्बुलेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट, एंड ये हमें बहुत कुछ कहता है. This says it all, and that tells it all. Let's just see this thing. White ambulance coming out of Mont Blanc for Cooper. Uh, white ambulance going inside. Coming out, I'll share afterwards. So मैं वो भी देख रहा था, तभी मैंने गलती से ये कह दिया. I'll share afterwards that is white ambulance coming out. But अंदर आ रही है वो टाइम बहुत ही important है, right? That time is very very important.
तो विल लाइक टू शेयर दैट थिंग, तो शेयर करना चाहेंगे और ऑन पॉइंट रखना चाहेंगे। यस, तो यस, शेयरिंग इट राइट नाउ। बताइएगा क्लियर है कि नहीं, इज क्लियर और नॉट, यू लेट मी नो। विशाल भाई स्ट्रीम पे है, सॉरी सॉरी, आई जस्ट टेक इट। Coming to share this important video. See this video carefully and understand the importance of that. डायरेक्ट यूट्यूब से किया है, देखिए ये है वो वीडियो। टाइमिंग देखिए 3:15 PM। आवाज बंद ही रखते हैं, एक सेकेंड। रेजोल्यूशन बढ़ा है, इसे क्लियर हो जाए। लाइव सुशांत होम 3:16 PM, एम्बुलेंस रिवर्स लेके अंदर जा रही है। ये है वाइट एम्बुलेंस जो पहले आई थी, लाइव फुटेजेस है ये, CNN न्यूज पे। वाइट एम्बुलेंस गोइंग इनसाइड बाउंड प्लाई, फर्स्ट एम्बुलेंस ये अंदर जा रही है। इसको अंदर लेने में ही बहुत टाइम लगा था। मतलब आप पकड़िए, मतलब पकड़िए इन द सेंस मुंबई के अंदर, टेक दिस टाइम, आई कैन से दैट इज अराउंड 3 o'clock। 3, मैंने जैसे उस दिन भी कहा था 3:05-10 के अराउंड, 3:05-10 के अराउंड दे आर देयर एंड अराइवल हो गया उनका। रेड कैप एंड ऑल दोस पीपल हु वर देयर इन द वाइट एम्बुलेंस, उनका हो गया है एंड दे आर गोइंग इनसाइड नाउ। So ये clear है, right? That is quite clear. I'll just stop it at that time so that it will be giving lots and lots of clears. And ये अंदर ले रहे हैं इसको। मैं एक सेकेंड अभी आप सबको टाइम के साथ दिखा देता हूँ। ये देखिए, this is the time which you have seen it now, right? And they are taking the reverse now. ये पुलिस ऑफिसर्स है, everyone is there, and वो रिवर्स ले रहे हैं। अभी इसको स्टॉप करते हैं, just stop it. Investigation underway. As a Sushant found that in Mumbai residence, investigation is underway. Sushant Singh Rajput Momo tweets आए थे, please tell me it's a fake news. Sushant Singh, please no more, all of those things. People are not able to believe it. ये भी point है। But इससे आपको क्या आती है क्लियरेंस? जो कमेंट में है प्लीज कमेंट करके बताइए, क्या क्लियरेंस मिलती है आपको टाइमिंग की? न्यूज़ आई है 2:20 के अराउंड, ऑब्वियसली उसके बाद ही एम्बुलेंस आई। तो हाउ दे कैन टेल इट बिफोर 2:20, जब एम्बुलेंस ही नहीं आई थी, कुछ नहीं हुआ था। मर्डर हो गया है, इसका कोई डाउट नहीं है, और ये पूरे बॉलीवुड को पता होगा सुशांत का मर्डर हो गया है बिफोर 2:20, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मैं क्वाइट क्लियरली कहता हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ट्वीट्स विच वर डन बाय अक्षय कुमार एंड जीरो मोरे, वो अलग है। वो खुद भी एक्चुअली 5:16 के नहीं है। आई एम नॉट लाइक टेलिंग इट इन assumption, I'll tell you वो क्या है, उसका फैक्ट क्या है, क्योंकि वो काइंड ऑफ एडिटेड ट्वीट्स है। उसमें दिखाया था एक बार स्पेस में, को याद बिन अलाउंड है। विशाल भाई एंड हरी दे को याद ही होगा, I know it। तो वो है। बट आयुष, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू नो, सॉरी थोड़ा ऑफ जा रहा हूँ वापस, ऑब्वियसली रिलेटेड टू दिस टॉपिक, बट आई एम बिजी विद अदर थिंग्स एज वेल, कुछ काम में उलझा हुआ हूँ। आई जस्ट वांट टू नो द number of minutes this white ambulance was there inside Mount Blanc. एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। Right now it's 1:05, almost 1:05 in the night as per the Indian time. Let's take 1:05. Mount Blanc enters, this white ambulance enters at Mount Blanc. What time that white ambulance left? Because according to people and according to that ambulance person, the stretcher was damaged, और उसके wheels खराब थे, इसके लिए वो स्ट्रेचर चल नहीं पा रहा था। So they took out that particular ambulance and they got a new ambulance and everything blah blah blah. So कितने टाइम के लिए वो particular white ambulance माउंट ब्लैंक के अंदर थी? If you can please show that and we'll have a discussion on that, please.
मैंने जैसे पहले भी कहा, विशाल भाई आपने सुना होगा, मुझसे वही निकल रहा था कि वाइट एम्बुलेंस कमिंग आउट ऑफ माउंट ब्लैंक, राइट, वो भी हम शेयर करेंगे, क्योंकि वो मैं ये पहले सीक्वेंस वाइज पहले ही अंदर गई, राइट, 316 के अराउंड अंदर रिवर्स ले रही, मतलब उससे पहले बहुत टाइम लगा एक्चुअली। विशाल भाई मैं देख के हैरान हो रहा था, आई डोंट नो कितना स्ट्रगल के से उन्होंने अंदर लिया है, आप शॉक हो जाएंगे। देखो, दे वर नॉट हैविंग दैट स्पेस टू गेट दिस एम्बुलेंस इनसाइड, एंड बहुत प्रॉब्लम हुआ हमको वो टाइम पे। तो या तो दिस, दैट इज़ वाई वी कैन से अराउंड 3 o'clock, 3:05 से लेके 3:10 के बीच में ये एम्बुलेंस आई, और ये 3:20 तक अंदर पहुंच गई। अप्रॉक्सीमेटली टाइम लेते हैं ना, राइट, 316 है तो 3:15 नहीं, 3:20 लेते हैं, लेट्स टेक इट 3:20। अगर आप कहेंगे लाइव फुटेज 2 seconds पहले है तो लेट्स वी कैन टेक 3:15 ही लेते हैं, ओके, ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि राइट से Okay, लाइव। Ayush, so I'm very, 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 very sorry, Ayush, because ये वाइट एम्बुलेंस ना मेरे को बहुत गड़बड़ लग रही है. Whatever time, 3:10, 3:15, 3:20, it entered Mont Blanc. But for me, I don't want to say anything जब तक आप वो चीज दिखा ना दो, या आप वो चीज सबके सामने लाना ना लेके आओ. What time that white ambulance left from Mont Blanc? Because the only concern for me is they gave this stupid statement that the stretcher of the wheel of that stretcher was damaged. That's the reason why they called a different ambulance. So कितना time लगता है वो judge करने के लिए? The main thing is amount of time they took to judge that. So 3:15, 3:20, whatever time the ambulance went inside Mont Blanc, the white ambulance, what time it came out is very important for me to know. शायद मेरे को ध्यान नहीं है, but I want, if you have a clear picture, please bring it out. What time it went out of Mont Blanc gate, please. I'll tell you. It is 15:44. It's 3:44 के अराउंड प्रिसाइजली, मैंने एक न्यूज़ में देखा है लाइव फुटेज, मतलब आप ले सकते हैं। इट वॉज देयर इनसाइड फॉर 30 minutes Yeah, Ayush, approximately. here is my point again, which I discussed with you other day on the space. We take it 25 or 30 minutes that white ambulance was inside Mont Blanc with the wings open. That is the stupid door opens of that ambulance. Not one, but both the door opens. Yeah, दोनों दरवाजे खुले, पीछे क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, कि मीडिया वहां तक जा ही नहीं पा रही है, बिकॉज दैट एम्बुलेंस वाज राइट देयर एट द मिडल. तो पीछे क्या हो रहा है किसी को नहीं पता. they So were now my question purposely. for everyone, Ayush, not sorry, I'm sorry, Ayush. अगर एम्बुलेंस का व्हील खराब है, Stretcher एनीबडी कैन, हाँ सॉरी, स्ट्रेचर का व्हील खराब है, मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा वो जज करने के लिए, या मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा कि वो व्हील खराब है. चलो आप 6 फ्लोर पे गए, वापस रिटर्न आए, 7 फ्लोर पे गए, वापस रिटर्न. 15 मिनट से ऊपर नहीं लगे आपको ये चीज डिसाइड करने के लिए कि उस स्ट्रक्चर का व्हील खराब है. So why on the earth were you there inside that building for 30 minutes and with the doors open? स्ट्रेचर बाहर निकल गया था, सुशांत की बॉडी को कैरी करने के लिए दरवाजा क्यों बंद नहीं किया था वो लोगों ने एम्बुलेंस का? क्या पीठ पीछे खेल खेल रहे थे वो लोग ताकि मीडिया कवर ना कर पाए? सॉरी बट बहुत कुछ झोल हुआ है. व्हेन दिस एम्बुलेंस डोर वाज ओपन, पीछे बहुत कुछ झोल हुआ है, एंड इट्स ओनली सीबीआई हु कैन ब्रिंग आउट ऑफ दिस. आई एम डैम श्योर बहुत झोल हुआ है. देखिए, मैं बताना चाहूँगा विशाल भाई, आपकी पॉइंट जो है ना, मैंने आपको स्पेस में भी कहा मैं इस पे एलैबोरेट में बात करूँगा, आपने उस दिन एक पॉइंट रखी थी, राइट, और मैं एलैबोरेट में बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे पता है ये पॉइंट की कन्फ्यूजन सिर्फ आपके माइंड में नहीं, बहुत सारे SSRNs के माइंड में है, मेरे माइंड में थी जब तक मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे कुछ फुटेजेस और ऐसे कुछ पॉइंट को नहीं देखा। हाँ, अभी एक ज़रूर कन्फ्यूजन है कि डोर ओपन थे, पीछे क्या हो रहा था, हमें ऑब्स्ट्रैक्ट करके रखा था व्यू को, राइट, और ऑब्स्ट्रैक्ट किसने किया था? इन लोगों ने किया था,
जो खड़े हैं, मैं कर्सर के साथ दिखाएगा इनको, तो these people that is police officers, इन्होंने ऑब्स्ट्रैक्ट करके रखा था व्यूज को, और वो व्यूज जो पीछे जो हुआ हमें नहीं पता, राइट, वी डोंट नो दैट। नाउ द पॉइंट इज, क्या है पॉइंट, मैं आपको बताता हूँ। डोर ओपन था, फिर भी हमें स्ट्रेचर दिखा, स्ट्रेचर वाज परफेक्टली फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात क्लियर है, स्ट्रेचर अच्छे से वर्क करा था। वो फुटेज भी आपने देख ली होगी, यू मस्ट हैव सीन दैट, एवरीवन मस्ट हैव सीन दैट, वो बहुत बार सबने दिखाई है। तो स्ट्रेचर एकदम फाइन है, सब कुछ वर्क हो रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग। नाउ द पॉइंट इज, पीछे क्या हो रहा है हमें नहीं पता। और 30 मिनट्स उन्होंने देखिए स्ट्रेचर चेक करने में लिए। देखिए मैं अगर कहूँ 30 मिनट्स चेकिंग द स्ट्रेचर, 15:24 को, दैट इज अराउंड 15:24 नहीं है, 15:34, सॉरी फॉर दैट, 15:34 को, 3:34 को उन्होंने स्ट्रेचर बाहर निकाल दिया। अब वो दिख रहा है फॉर्चुनेटली, क्योंकि वो डोर ओपन है और नीचे का दिखते हैं व्हील्स, इट इज इजीली वर्किंग और खुद ही स्ट्रेच हो रहा है स्ट्रेचर, एंड इसको यूज कर पा रहे हैं, इट इज यूजेबल, राइट। तो द पॉइंट इज, 3:34 को उन्होंने देख लिया, 3:50 अप्रोक्सीमेटली टाइम हम लेते हैं, दे वर देयर एट दैट टाइम, और वो एम्बुलेंस बाहर निकली है 3:45, मैंने कहा 3:44 के अराउंड, 3:45 के अराउंड। उसके पहले अगर मिली सेकेंड जैसे मैंने कहा, तो 3:44-43 पकड़िए आप अप्रोक्सीमेटली, दैट इज देयर, निकल रही है। एज यू सेइंग, द मेन थिंग इज कमिंग आउट ऑफ। फिर गई है ग्रीन एम्बुलेंस, कितनी जगह तो है नहीं कि दोनों एक साथ खड़ी रहे, पहले ये निकली है और ये आगे जाके खड़ी हो गई है। They first of all they stopped, and then the red cap guy, that is अशफक, वो आया, उसने आके देखा और फिर वो फिर से एम्बुलेंस में बैठा, तो रन करके वो वहाँ पे गया, फिर वहाँ से वो इधर आया। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस काइंड ऑफ थिंग्स वर्क। तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि 30 मिनट्स के पीछे ऑब्वियसली देयर मस्ट बी समथिंग, और मैं इस पे आपसे एग्री करता हूँ। ये वाइट एम्बुलेंस निकली है तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी समथिंग इनसाइड दैट, आया कुछ नहीं होगा। देखिए, डिलीवर्ड एट माउंट ब्लैंक, व्हाट यू सेइंग इट विपाशा जी, इस काइंड ऑफ थोड़ा रिस्की है डिलीवर्ड होना, राइट। डिलीवर करके करेगी भी क्या वो, मुझे लगता है लेकर गया गया है, इट इज बीन टेकन, और वो क्लियर है, दैट इज क्वाइट क्लियर, समथिंग इज टेकन इनसाइड बिलोंगिंग्स एंड ऑल, वो मैं मानता हूँ, मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूर है, नो पॉइंट अबाउट दैट। तो इसमें ये वाइट एम्बुलेंस इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है, क्योंकि ये ग्रीन एम्बुलेंस के पहले आई है, जिसपे सुशांत गए हैं, ग्रीन एम्बुलेंस जो है, सुशांत ग्रीन एम्बुलेंस में गए हैं, और वाइट एम्बुलेंस से पहले आई है। ग्रीन एम्बुलेंस का निकलने के टाइम है 4:04, अप्रोक्सीमेटली 4 o'clock, कैन गेट द पॉइंट। तो ये टाइम पे ये निकली है, तो मतलब 20-30 मिनट्स ये अंदर रही है, और इस बीच में भी रिवर्स लेना, बाहर निकालना, उसका भी टाइम इंक्लूड करें तो 15 मिनट्स, ज़्यादा टाइम नहीं विशाल भाई, ज़्यादा टाइम इनसाइड नहीं है, क्योंकि आप रिवर्स का टाइम भूल रहे हैं ना विशाल भाई। आधा टाइम इनका निकालने और जाने में गया है अंदर। माउंट ब्लैंक का ये जो गेट इनको बहुत प्रॉब्लम दिया, तो अगर हम कैलकुलेट करें टाइम्स को, तो दे वर देयर टिल 15-20 मिनट्स इनसाइड, नथिंग एल्स देन दैट। निकालना है और उसका टाइम को सब्सक्राइब ट्रैक करके, नथिंग एल्स देन दैट, उसको निकाल कर हम लोग कह रहे हैं। तो ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इज व्हाट आई वांटेड टू से। Thank you for clearing the points, Ayush. But I'm sorry, no disrespect to anybody, but for me, this is my point of view. इसको ट्रोल करने करो, I give a damn. But white ambulance आई गई थी ताकि कुछ एविडेंस वहां से बाहर निकाला जाए. This is my point of view. Thank you. मैंने भी यही कहा ना, बाकी मैंने क्या कहा। Yeah, that's my point of view too. But as said, I totally agree with Ayush too that अरे you मैंने know भी तो यही कहा। हाँ हाँ हम मतलब हम सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है कि इट वाज ब्रॉट अप टू गो अहेड एंड टेक सम थिंग्स आउट फ्रॉम माउंट ब्लैंक। इन शॉर्ट, मेरा, आपका, आयुष का, सबका पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्वियसली ऐसे ही थोड़ी वाइट एम्बुलेंस
देखिए व्हाइट एम्बुलेंस का मोटिव यही होगा और कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट करने का है पहली बात तो, क्योंकि आप देखिए व्हाइट एम्बुलेंस के मेन थिंग इज ग्रीन एम्बुलेंस के निकलने से पहले ही निकल गए हैं मीतू दी एंड संदीप सिंह। ये सब टाइम वेस्ट करने का है, कूपर हॉस्पिटल पे जाके कवर अप करना, सब कुछ करना। दिस इज हाउ दे हैव टेस्ट टाइम। उन्होंने सिनेरियो सेट करके रखे थे, उनके सिनेरियो खराब ना हो तभी इन्होंने इतना टाइम लिया, वाइट एम्बुलेंस को बुलाया, वाइट एम्बुलेंस को फिर बिलोंगिंग के साथ निकाला, फिर वो व्हील एंड ऑल दोस थिंग देखना, वहां से भाग कर जाना अशफक का, फिर वहां से आना, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। दे मतलब व्हाट आई अंडरस्टैंड है, उन्होंने कभी रिकवर करने की सुशांत को ट्राई की ही नहीं। दे नेवर ट्राइड टू रिकवर सुशांत सिंह राजपूत। या यही तो बात है ना, अगर उन्हें रिकवर करना होता तो एम्बुलेंस जल्दी आ गई होती, जल्द से जल्द निकल गई होती। एम्बुलेंस का काम क्या है, यही है। स्ट्रेचर का क्या वेट करना है, इतना छोटी सी जगह है वो, दैट प्लेस इज लाइक मतलब जगह इन द सेंस आई थिंक बहुत कम वे है। पोर्टेबल स्ट्रेचर है आपके पास, पोर्टेबल स्ट्रेचर से आप लेकर आए ऊपर से, वहाँ से ही आप एम्बुलेंस में उठा देते। एम्बुलेंस का व्हील थोड़ी खराब था, स्ट्रेचर का व्हील खराब था। आइदर समथिंग डिलीवर्ड और टेकन आउट। मोहिनी जी जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, हर हर महादेव। अमेजिंग, कैसे हैं मोहिनी जी आप? इट इज़ अ बिग झोल, व्हाट वाज हिडन इन द मिस्ट ऑफ क्राउड ऑन द क्राइम सीन। बिल्कुल झोल तो है, बिल्कुल है, बट मेरा मोटिव इसको दिखाने का टाइमिंग है। हाँ? ये खाली मैं बता दूं, देखिए 3:18 सॉरी 15 3:15 16 के अराउंड वाइट एम्बुलेंस रिवर्स लेके अंदर पहुंच गई है, उसको टाइम लगा अंदर जाने में। तो आई कैन से 3 o'clock 3:05 के अराउंड वाइट एम्बुलेंस पहुंच गई, दैट इज देयर इनसाइट। और वो बहुत सारी पॉइंट्स को क्लियर कर देता है, दैट क्लियर्स आउट एवरीथिंग। तो ये एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नहीं मीडिया का ही है, ये पॉइंट मुझे दिखाना था जो हम अननोटिस कर देते हैं। ये वीडियो बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा, ये व्यूज भी काफ़ी ज़्यादा है इसके, पर इस वीडियो का टाइम और इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट जो है, ये लाइव सुशांत होम लाइव, और ये टाइम हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। वी कान निगलेक्ट दिस टाइम एंड इवन लाइफ, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड ये बहुत ही ज़रूरी है। किसी ने माइक ऑन किया? It was me, Ayush. Sorry. Just wanted to say brilliant finding. The way you brought up the videos, brilliant finding. Everything is clearing out, especially in my mind. जो मेरे mind में, um, जो questions थे, it's crystal clear now. So thank you so much. Brilliant findings and right to the point, Ayush. Totally agree on each and every point you have been making so far. Thank you. यस यस है रिद्धि, नहीं नहीं फाइंडिंग की बात करें, ये सब मिल जाता है यूट्यूब पे, एवरीथिंग इज देयर। है थोड़ा सा देखना पड़ता है, पर नज़रिए की बात है, पर्सपेक्टिव की बात है, पर्सपेक्टिव से अच्छा। Exactly, नजरिए की बात है, and that is why I say the way you bring out topics up, I think कभी कभी मैं भी कर लेती हूँ, but the way you, especially so many people like, you know, आप अभी space में, I mean YouTube session में है, तो especially you, the way you bring up and clear topics from our mind, it's just brilliant. Now things are crystal clear, and I think you're definitely right, and you know. Now it's crystal clear that people has to understand the right facts, you know, that ऐसा हुआ है. So brilliant job by you, Ayush. Thank you so much. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। Ayush, can I come गो in? अहेड, हाँ गो अहेड खुशी जी, आप से। Okay. Yes, just agreeing with all of your points. आपने, विशाल भैया ने, हेलिदी ने, आप सबने जो पॉइंट किया, I totally agree with you. Bas just wanted to put one question. We all know that कि इस ऐसे situations में when we call up the ambulance, उसके अंदर जो stretcher होती है, जो भी चीजें होती है as per the requirement, उस एम्बुलेंस को लाने के पहले बिफोर सेंडिंग इट टू द राइट पॉइंट जहाँ उसको भेजा जा रहा है, उससे पहले
उस एम्बुलेंस की हर चीज को चेक किया जाता है, whether it is a stretcher, whether that is ambulance, so that there may not be any problem, वहां आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। और जस्ट आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर जब मुंबई पुलिस ने इन्फॉर्म की होगी एम्बुलेंस के लिए, और whoever have informed the police, और एम्बुलेंस के लिए जिन्होंने भी इन्फॉर्म की होगी, उन्होंने ये बात इन्फॉर्म कर दी होगी कि यस दिस आर द सिचुएशंस एंड वी नीड टू टेक द बॉडी। तो आप मुझे एक बात बताओ, व्हाई हाउ इट इज पॉसिबल कि इन सच सिनेरियो एक एम्बुलेंस को बिना चेक किए गए लाया गया है, और आने के इतने देर बाद आपको ये पता चला है कि दैट स्ट्रेचर इज नॉट वर्किंग, उसकी व्हील खराब है। या तो आपने वहीं पे चेक नहीं किया है लाने से पहले एम्बुलेंस को, और इफ यू हैव checked it, you have done it purposely just because you people wanted to somehow stretch the time, क्योंकि अंदर वहां बहुत कुछ चल रहा था, जो कि अब पीपल आर समहाउ ट्राइंग टू सेटल कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए बाहर जाने के बाद। सो क्योंकि एम्बुलेंस आई, वो उसने रिवर्स लिया, उतना टाइम गया, एंड आफ्टर दैट काफी टाइम बाद वो ग्रीन एम्बुलेंस आती है। सो आई थिंक यू आर टोटली राइट, एवरीथिंग इज डन विद मच ऑफ पर्पस। एंड जो भी चीजें हम शुरू से ये बात कहते हैं कि द white ambulance is not empty, there is something inside that ambulance। वो या तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इस केस के लिए बहुत ही मायने रखती, दे हैव जस्ट मेड इट थ्रू दैट एम्बुलेंस, उन्होंने उस एम्बुलेंस से उसको पार्सल कर दी है बाय टेलिंग दैट यस दिस इज नॉट वर्किंग, एम्बुलेंस के अंदर का स्ट्रेचर सही नहीं है, ब्ला ब्ला, जो भी उन्होंने कहानी बनाई है। सो जस्ट वांटेड टू शेक कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, आई हैव नेवर सीन सच केसेस। एम्बुलेंस का व्हील खराब होता है, एक पल के लिए हम मान लेते कि चलो वो खराब हो गई, एम्बुलेंस के अंदर की स्ट्रेचर खराब है एंड यू आर नॉट नोइंग दैट, दिस इज सो सस्पिशियस। सो जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। Sorry, can I come in? Can you guys hear me? हेलो दी, आई कैन लिसन यू, आई थिंक और कोई नहीं सुन पा रहा है। Oh, okay. Um, okay, चलो मैं रिकनेक्ट करके वापस आती हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ तो हाँ, ये we can hear you now. Yes, yes. अच्छा अच्छा, ओके। खुशी जी, सिंह में कहते ही जा रहा था, मेरा माइक म्यूट था। अरे यार, देखिए, इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग व्हाट यू, इट्स बट ऑब्वियस राइट, दे वर प्रिटेंडिंग लाइक यू इन्वेस्टिगेट कर, देखिए क्या लिखा है, पुलिस प्रोबिंग ऑल एंगल सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत राजपूत दैट फेक नैरेटिव राइट, ऑल एंगल्स। फिर ये भी लिखते हैं, ऑल एंगल्स के लिए आपने ठरकी बुड्ढे को बुलाया है, ऑल एंगल्स के लिए आपने परेड लगाई डायरेक्टर की, नॉट पॉसिबल। तो पॉइंट जो आपने रखी पहले उस पे आते, फिर आते हैं इस पे कि इट्स स्ट्रेंज, इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज खुशी जी कि उन्होंने ये चेक नहीं किया। चेक किया भी होगा तो देखिए, मैंने क्लियर आपको, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सेम है, सेम लाइक अस। चेक किया या फिर चेक किया नहीं, उससे ज़्यादा वहाँ पे बेच दिया जैसे ये सब सिनेरियो हो। टाइम वेस्ट होना एक अलग चीज़, जैसे अभी देव सर इज सेइंग इट, so they didn't get chance to get everything out in all those servers since early morning 1 a.m. to 10 a.m. as we think he was murdered early hours as a night। यही तो बात है ना, यहाँ तो उनके पास इतना सारा एविडेंसेस है कि उन्हें एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी, विच विल प्रूव इट इज अ केस ऑफ मर्डर। यही एक पॉइंट है। यहाँ तो कुछ उनके पास ऐसा है जो वो बाहर लेके नहीं जा पाए, उनसे छूट गया, तो समथिंग हैपन और दे वांटेड टू टेक इट इन अ वेरी सेफ वे इन एम्बुलेंस। और ये सिर्फ हम अज्यूम कर रहे हैं, मैं यूजुअली अजम्पशंस पे नहीं जाती, दिस इज व्हाट वी अज्यूमिंग दैट देयर मस्ट बी समथिंग लाइक दैट, क्योंकि डोर और इवन एम्बुलेंस वहाँ पे बहुत टाइम तक थी, बहुत टाइम इन द सेंस 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स जो ये है, इसके बीच में क्या हुआ वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, नो डाउट अबाउट इट। तो ये बात मुझे रखनी थी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। देखिए देव सर,
As you said, it's very much important, and you have to understand that. Don't forget, none of the ambulance had no paramedic. Doctor, वही तो हम कह रहे हैं ना, they never wanted to revive Sushant Singh Rajput. As you said it, guys, SSR fingers were moving. थोड़ी सी जान बची थी, time was wasted. देखिए, हो सकता है, इट कैन बी द पॉसिबिलिटी, बट नेचुरल इंस्टिंक्ट जो होता है ना, क्योंकि हम लोग देखिए, मोहिनी जी क्या है ना, हमारे सुशांत का मर्डर नाइट में हो गया है, तो फिंगर्स मूविंग वाला थोड़ा सा थिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे बिलीव करता हूँ, आई डोंट बिलीव ऑन दैट, बट पॉसिबिलिटी, चलो ठीक है, एवरीथिंग इज देयर एज आई सेड इट। बट ये बात तो है कि इंटेंट जो होता है ना, वो इंटेंट हमें इस केस में नहीं दिखा, बायसनेस दिखी, रिवाइव करने की चाह नहीं दिखी उनके बॉस को। एट द सेम टाइम ये पुलिस जो है, एक ए लिस्ट एक्टर को रिवाइव करने के लिए आपने ना ही एम्बुलेंस को जल्दी बुलाया, ना ही कुछ किया, और फिर कूपर हॉस्पिटल में जाके संदीप सिंह ने मीतू दी को लेकर वहां पे, इन द सेंस मीतू दी होगी तभी वहां पे सब एक्शंस हो गए, क्योंकि फैमिली के एक मेंबर की जरूरत पड़ती है, तो मीतू दी को लेकर गया और उसने वहां पे एक्शंस करने बैठ गया इन अ वेरी बैड वे। मीतू दी को उनकी नॉलेज में बिना ये सब करे, ऑब्वियसली without even acknowledge all of those things what happening in front of her, कि कैसा है, what he is up to and what he was doing it. So that is very very much important, और ये point काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ही important भी है। तो तभी ये एम्बुलेंस वाली पॉइंट रखिए 3:15 को, ये अंदर जा रही है, मतलब अंदर जाने में भी टाइम लगा 10 मिनट, तो 10-15 मिनट, so 3 o'clock 3:05 के अराउंड हम लेते हैं, ये करेंगे। They were getting inside, sorry. Coming out around 3:44 and even 45 के around. Yeah, that Ayush, is all. sorry, can I come in? You can go ahead. Okay. So we were discussing, remember that Sandeep and Meetu Didi both reached Cooper Hospital way before ambulance reached, right? अब पहले तो when it's a time of COVID, जहाँ पे महाराष्ट्र में पहले cases था, it doesn't matter कि death कैसे हुई है. You should have proper PPEs on your body because you never know कि body को COVID है कि नहीं है before you go ahead and test any kind of body you're taking. So it's a mandatory effort to go ahead and put all the PPEs on and then go into the room. The only thing I saw, and correct me if I'm wrong, was the N95 kind of mask wearing and the gloves, right? Still, you have to have the gowns on, you have to have the shield on to go ahead and protect yourself from any kind of scenario that you can go ahead and face while dealing with the body, because it's not just that, if you remember कि एम्बुलेंस ड्राइवर ने एक पिक रखी थी उसके प्रोफाइल पिक रखी थी उसके फेसबुक अकाउंट में, which was he was dealing with body fluids, which is blood, right? For a person to go ahead and deal with body fluids, it's really important कि gown on ho, shield on ho, but I never saw any single kind of thing. So I completely totally agree with each and every point everyone made here, including you, Ayush, that सबको ये एम्बुलेंस वाइट एम्बुलेंस वाले को तो पता ही था कि and that is why it was deliberately made the scenario जैसे आपने बोला. Now, if we go to the Cooper Hospital's thing where Meetu Didi and Sandeep Singh reached, right? But time tha COVID ka, that means that roads will be open. Secondly, जब ambulance जाती है, it's India में, and of course across the globe. There is a thing कि अगर ambulance जाती है, ambulance should be given a right to way. So that in that scenario, ambulance have reached Cooper before Sandeep Singh and Meetu Didi reached, right? Way before Sandeep Singh and Meetu Didi reached. But that was not the scenario. The ambulance reached way after Sandeep and Meetu Didi reached. That means again it comes back to the point where ambulance would have stopped for maybe 5-10 minutes or more than because I don't know how long this maybe like 20-25 minutes
in COVID time from Mount Blanc to Cooper, and correct me if I'm wrong. So if I calculate the time, 20 minutes तो इन लोगों ने लिए है to go ahead and do something with that, and to go ahead and do something, because we all know that even the green ambulance left at 4:04 and it reached at 4:55 about the, and I'm talking about the green ambulance right now. So कुछ ना कुछ तो जोल green ambulance में भी हुआ है, but we don't know where, but it was definitely not more than 20 minutes from and if you go ahead and logically calculated the time, I'm damn sure that you will find the same Your mic is mute. oh no, I'm done, Ayush, go ahead. So obviously this is strange, right? This is really strange. And देखिए ना, आपने जैसे कहा 20 मिनट्स लगते कूपर हॉस्पिटल से पहुंचने में, माउंट ब्लैंक है वो है, ये हमने चेक भी किया, 26 मिनट्स लगते, 3:24 को पता चल गया उन्हें, 34-24 के अराउंड कि मैं 24-34 में कन्फ्यूजन, व्हेन द स्ट्रेचर लिखला है, एम्बुलेंस लिख ली है वो है 3:44 के अराउंड, अप्रॉक्सीमेटली भी टेक है 3:43-42 40 लिख सकते हैं, मिली सेकेंड्स लगते हैं जैसे मैंने मुझे से कहा. सो तो अगर मैं कहूँ इतने टाइम पे लिख ली है वाइट एम्बुलेंस, तो 3:24 से लेके 3:40 तक तो एम्बुलेंस, ग्रीन एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँच गई. 20 मिनट्स लाइक द टाइमिंग इज देयर, सिनेरियो बनाया गया है. तो वो पहुँच गई, वाइट एम्बुलेंस को निकाला, ग्रीन एम्बुलेंस को अंदर डाला, सुशांत को अंदर रखा. बहुत अजीब सा लगता है कहने में, डिसहार्टनिंग लगता है. सुशांत की बॉडी को पोर्टेबल स्ट्रेचर से, ये वाले स्ट्रेचर जो ग्रीन एम्बुलेंस पे रखा, उस पर आई कैन से 5-10 मिनट्स गए. फिर वहाँ से वो भाग भाग के स्ट्रेचर को अंदर रखा, एंड देन फिर ग्रीन एम्बुलेंस को साइड देने के लिए, एकदम जगह देने के लिए 5 मिनट्स लगे, और 4:04 को वो निकल गए. तो 5-10 मिनट्स को मिला के अगर मैं कहूँ 20 मिनट्स इसमें हो गए, राइट, 20 मिनट्स हो गए, एंड अराउंड 4 o'clock वहाँ पे निकले. तो टाइमिंग क्वाइट क्लियर बन जा रही है. It is quite clear, तो it's like confusion should be not there in anyone's mind now. बहुत ही क्लियर टाइमिंग है. और उससे पहले मैंने आपको कुछ दिखाया, वो भी आप सबने देखा होगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो भी, कि when did सुशांत की न्यूज़ ब्रेक हुई थी. मैंने 3 वीडियोस दिखाया, and I have total 6 videos. I said it. 6 नहीं, 8 वीडियोस. उसमें से 2 चैनल थोड़ी एकदम लो है, इन द सेंस 26 व्यूज़ मिले हैं, 266 व्यूज़ मिले हैं. तो उन्होंने भी ये टाइम पे लाइव दिखाया है, तो मैं नहीं जानूँगा उन पर, तो उन्होंने बहुत अच्छे से वो भी दिखा रहे हैं. तो दैट्स वाई 6 मैं कह रहा हूँ. प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल्स का निकाल के मैंने दिखाया. इंडिया टुडे, आज तक जिनको वो टाइम पे देखते थे, इन सब न्यूज़ चैनल्स को निकाल कर देखे तो 2:24 के बीच में से लेके 2:37 तक ये सब न्यूज़ आई है. सुशांत के सुशांत के केस में फेक नैरेटिव स्टार्टिंग में आया था, उसके ऊपर न्यूज़, ये पॉइंट रखो. That is one of those important point which I wanted to keep it, and I personally did it because ये बहुत ज़रूरी है. It is very very much important. And अब मैं आता हूँ पॉइंट, दूसरी पॉइंट पे. ये पॉइंट मुझे क्यों रखनी है, why I am keeping this point personally, and even why it is important to keep this point. देखिए, कंफ्यूजन तो अलग बात है, यहाँ पे फैक्ट्स एंड इवन ट्रुथ्स पे बात करना एक इम्पॉर्टेंट बन गया है, क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज हमारे ही रह जाएगी.
जब फैक्ट्स आएंगे, जैसे भी हम स्पेस में एक न्यू पर्सन आओ कहता हमने भी देखे हैं फैक्ट्स, मेरी बात सुनी उसने, मैंने भी फैक्ट्स पे बात की, तो उसने फिर क्या कहा, हमने भी फैक्ट्स देखे हैं। मतलब सब यहाँ पे फैक्ट्स पे बिलीव करते हैं, किसी के कहने पे नहीं। जब फैक्ट्स जब दिखाया जाए तभी ही बिलीव होगा। बाकी तो बहुत हम बहुत कुछ अज्यूम कर सकते हैं, वी कैन अज्यूम मैनी थिंग्स, but the main thing which we have to discuss it, that is the timing, and at the same time और वो चीज़ फैक्ट्स के साथ। तो ये बात को मुझे रखना था, एंड मुझे सच में नहीं समझ में आता स्टिल आफ्टर 1 पॉइंट सॉरी, हाँ 1 ईयर स्पेस का, एंड इवन 3 इयर्स जो मोमेंट का, कैसे हम कह सकते हैं 140 130 के अराउंड एम्बुलेंस कैसे आ सकती है? ये तो लाइव फुटेजेस है एम्बुलेंस के, और क्या आप इस सब से नेग्लेक्ट करते हैं? तो मुझे कमेंट में रख के बताइए, अपने काउंटर पॉइंट्स रखिए, फील फ्री टू राइट योर काउंटर पॉइंट्स इफ यू हैव regarding the live footages which I am showing it, when ambulance is coming out and when an ambulance is going inside, white ambulance I am talking about, and at that day I talked about green ambulance। तो ग्रीन एम्बुलेंस के बारे में हमने बात की, आज वाइट एम्बुलेंस के बारे में बात कर रहे हैं। बट वाइट एम्बुलेंस और ये सब टॉपिक आज है, 14th की टॉपिक है, मेन टॉपिक है ऑब्वियसली व्हेन डिड द न्यूज़ केम आउट। और वो न्यूज़ बाहर आने का मोटिव मैं आपको एक दिखा देता हूँ फास्ट फिर से, जो न्यू है, आई विल शो इट, सी दिस। Ayush, before you show, can I just say something real quick? Sorry. रियल क्विक, Sorry. So, as said by you, never believe anyone. Just go ahead and see the facts. I always, koi bhi hoga. It's really important to go ahead and see the facts. It's not that कि आपको मुझ पे भी believe नहीं करना, नहीं करो. But the facts, yeah, आयुष पे believe करना नहीं करना है, मत करो. But the facts we are putting, at least facts, so to believe करो. And it's not like if we have any counterpoints or anything, अगर मुझे या आयुष को, let's go ahead and take an example कि मुझे या आयुष को counter points है, मुझे आयुष से counter points है, I'll definitely put it out. But that doesn't mean that either me or Ayush is wrong. It's just that we are clarifying a topic, but because at the end of the day, what matters to us is the facts, the clarity and justice for Sushant Singh Rajput. यहाँ पे कोई ऐसा नहीं देखता कि आपने movement के लिए क्या किया है. What we can see, even the individual doesn't see कि मैंने ये किया है सुशांत के लिए, मैंने वो किया है. What matters कि चलो justice, सुशांत को justice जिस दिन मिल गया, everyone's efforts will go ahead and show up. So that's the thing कि doesn't matter कि counter points हो, but that doesn't mean कि आप ये बोले कि मैं ही right हूँ and neglect the facts. So please see the facts and then talk about it. Just wanted to go ahead and say that, Ayush. Thank you. No doubt about it. Consider facts, not consider who is giving the facts. एक वर्ड में क्या कहूँ, देव सर को सुन लेते, फिर जो मैंने पहले दिखाया था उसको रिपीट मैं कुछ शॉर्ट में दिखा दूंगा, लाइक अ समरी। देव सर कैसे हैं आप, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ आयुष। यार मैंने थोड़ी देर सुना था आपका ये, एंड आई डिड नॉट जॉइन द स्पेस, तो मैंने उसको रिकॉर्डिंग क्विकली फॉरवर्ड करके सुना, थॉट आई वोंट मिस एनीथिंग. बट या आई मीन मेरे को असल में, एंड आई थिंक आई हैव सम आइडिया व्हाई दिस कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन, एंड विदाउट गेटिंग टू मच इनटू इट, लाइक as you know, Ayush, there is nothing set in stone, as I say, from my perspective, right? So, मेरा वैसा ही रहता है कि ठीक है, I know you believe little differently, like it's important to put facts out so CBI knows
मेरा सोचना उतना नहीं होता, इतना कि लाइक इसका पर्पज होता है जस्ट टू गेट क्लैरिटी इन योर ओन माइंड, राइट? तो अगर आपको क्लैरिटी है, लेकिन जिस तुम बोलते कि सब लोग एक पेज पे आ जाओ और सब आ जाओ, मेरे हिसाब में दैट्स a secondary, right? That's up to the individual one, right? I just so happened to catch some other YouTube, and I was, surprised, like to see, such a high emotions around this topic, right? This is actually there's a आपने ये पॉइंट, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कीपिंग दैट, ये भी क्लियर मुझे करना था। ये किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं है जो कुछ कह रहा है। इट्स नॉट अबाउट एनी चैनल टू जी, बस क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं कुछ ऐसे बहुत ही ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत टाइम तक हमारे साथ में है और उनको कन्फ्यूजन आ रही है इस पॉइंट पे, तो मैं नहीं चाहता उनको कन्फ्यूजन आए। तो दिस इज़ फॉर दोस्त SSR आई कैन से, तो उनके लिए कोई पर्टिकुलर चैनल को रिप्लाई नहीं हो रहा है, नथिंग इज हैपनिंग लाइक दैट, it's all up to our sense, and you know it, Dave, so we share the same point of view, right? And what has been discussed, so Right. It shouldn't be like that, right? इस पे Yeah. चार्ज को रख दो, आप तब तक बात कीजिए। Okay, go ahead. नहीं, मैं भी अभी चाय रखी हुई थी, I was also going in and out of kitchen. So yes, I mean, I agree as far as, the reason why you're doing this and why other people are doing, right? We know that we're trying to get to the truth, right? And the truth as we see makes sense to ourselves, right? क्योंकि सच्चाई को दिखाने के लिए there are a lot of other things has to happen, right? Certain assumption we have to make, right? We believe that this thing seems to be close to true, makes sense to us, right? तो जैसा आपने बताया and ambulances timing के हिसाब से, like you saw on video, and it makes sense, right? It makes sense that those ambulances are, but I don't know what's beyond that. Maybe you are trying to say more than that, because at the end of the day, मेरी quest जो अब तक रही है आयुष, वो यही है कि find some real, when I say proof that can withstand in a court, which can show that he was killed way earlier than, right? And you are also on the same point, right? We all think that is, so nobody's trying to deny that. But होता क्या है ना कि एक वो भी है, and like you and me, we don't have much standing in the court, right? So what you say, me say, it doesn't really matter as far as I'm concerned, right? But somebody who is party to that, their credibility is very important. And the way these opposing lawyers works, right? आप 100 सच बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपके मुंह से एक भी चीज निकल गई ना, तो they will just pick that one, right? आपके और मेरे बारे में, I don't think it matters, right? Nobody cares about what I say in that regard. So that's also the point. But मुझे खाली थोड़ा सा surprise हुआ, because I know I like that, other channel, and this one I was there, but and I do have question, but there's certain assumption. I do have major 3 questions if you ask me about this whole thing. But that doesn't affect the main quest that we have. Obviously. And when I say that to people, that I'm still looking for that one thing, because I strongly believe I don't have it. I mean, that can satisfy me personally, right? खाली इतने बोलना चाहूंगा. I didn't mean to go on and lecturing subject on this one, but I'll stay here, listen, and talk more specifics. Go ahead, Ayush. I really like your point, first of all, or how you said it all. मेरी आवाज मेरे आ रही है ना, थोड़ा दूर से तो नहीं आ रही है, because I'm on charging point. I can hear you, Ayush. We can hear you, but थोड़ी मतलब थोड़ी it's गूंज रही है, but it's okay, we can hear you. Go ahead. गूंज रही, ठीक है, नहीं हो जाएगा क्लियर। तो देखिए, अगर मैं कहूँ, देव सही said it all, first of all. हम यहाँ पे मेन मोटिव क्या है? सुशांत का मर्डर हुआ है, राइट? और आपको याद है देव सर, आई वांट टू हियर यस एंड नो फ्रॉम यू, बिकॉज ये क्लैरिटी आप बहुत टाइम से आ रहे हैं, मैं सबको देना चाहता हूँ। एलिदी यू आर देयर, बट देव सर, देव सर, I said it few months back, I will never discuss about the timeline because this creates confusion, and मैं मर्डर के फैक्ट्स पे डिस्कस करते हैं, हम टाइमलाइन पे डिस्कस करेंगे नहीं, रिमेंबर दैट? And people used to come up and they used to say something about timeline, I used to say no, I don't want to say anything, because ये बहुत confusion create करता था, अभी भी करता है, तो मैं बात करना मैंने छोड़ दिया है।
हेलिदी, देव सर एंड विशाल भाई एंड खुशी जी, एवरीवन जो स्टार्टिंग से आ रहे हैं, आप सबको ये बात पता है। और जो लिसनर्स में कमेंट में है, प्लीज यस लिखिए, मैंने ये बात कही थी। क्यों कही थी, उसका रीजन ये था जो अभी आज जो देव सर कह रहे हैं, ये क्यों हम इस पे मतलब पॉइंट ज्यादा रखें। ग्रेजुअली कॉन्शियसनेस कॉन्शियसली सोचा कि जब तक टाइमलाइन क्लियर नहीं होगी तो फिर हमारे जो फैक्ट्स, जो बातें हम कर रहे हैं की मेकर के बारे में, वो भी झूठी होती जाएगी। हम बातें जो कर रहे हैं मीतू दी के आने की, वो भी थोड़ी कंफ्यूजन होती जाएगी। तो ये सब कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम इस बात को रख रहे हैं, राइट देव सर? जैसे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी क्रेडिबल हो, वो भी ऑन पॉइंट हो। क्योंकि देव सर मैंने उस दिन डिस्कस किया, हमने जैसे की मेकर के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद से मैं आया हूँ इस पॉइंट पे टाइमलाइन की। क्योंकि की मेकर की पॉइंट अटक किधर जाती है, टाइमलाइन पे, कि की मेकर ये टाइम पे आया ही नहीं था। ये बात है देव सर। तो Yeah. यू गॉट माय पॉइंट। Yeah, and मैं ये भी कहूँगा आयुष कि this whole, like, you showed white ambulance and green ambulance things, and all those misinformation that it took green ambulance 4 hours can easily be, those are misinformation that you don't need, right? बाकी जो 1 to 2 का जो है, and even with professor, like over 6 months we had one space just for that, because I was going with, like, did it happen before 1 or after 1? And professor was very clear, and he's still very clear, and but I still have, I have some major questions, and I will share you if you want to talk about it. But not what you're showing, like, so I'm okay with those head, ambulances lines, like white coming at 3, green coming at 3:30, leaving at 4, getting there 4:54. That's all well and good, but there's still a lot of things to answer. Like you said, you think it's important. That's perfect. That's fine by you. And yeah, go ahead, please. Dev sir, not I think others think it is important. Because this question was raised every time in SSR space. When do you think that green ambulance came up? And I was like blank. I was blank, literally, because मैं अगर कुछ कहूँगा मेरे पास वो टाइम पे दिखाने के लिए फैक्ट नहीं था। ये बात है देश, आपको याद होगा, मैं नहीं। Right, and that's fine. Yeah, बोलिए, go ahead, please. नहीं देश सर, हाँ आप कह दिए, फिर मैं बोलती हूँ देव सर। And that's fine too, Ayush. And again, मुझे खाली जो बात हुई ना कि why do we, these are discussion, right? Reasonable discussion, and people's point of view, it shouldn't be taken so hard. That's all I was trying to say, right? Hard in the sense, देखिए देव से hard तो हम नहीं लेते obviously, ना ही आप लेते। I'm talking about others, this, and I mean, maybe maybe I should not talk about all this, and let the conversation go. Yeah. Other side, I got your point. Yeah. Because I was really surprised, because I tend not to bother about these things, but I was surprised. Like, I have some reservation about certain things, but that's okay. And you may have reservation, and that's okay. I mean, I'm not going to question anybody's intent. I know you're trying to get to the truth. Other people are trying to get to the truth, and that should be good enough. Quest. चलो यहीं पे रखता हूँ, and I'll listen to you guys. Thanks. Even I was surprised, sir, too. I can understand your feelings. मैं खुद भी सरप्राइज था, तो क्योंकि मुझे खुद को इतना मैंने एक बार देखिए हमने किया इस सेशन को यूट्यूब पे, उसके बाद हम आ गए विच के इंटरव्यू पे, एंड और नेक्स्ट सेशन होने वाला था। हमारा नेक्स्ट सेशन किस पे होने वाला था? विच के इंटरव्यूज पे, जो उधर हमने स्पेस में कर दिया था। प्रोफेसर सेड इट, होगा, जरूर होगा, एंड दिस विल हैपन। और उसी के साथ हम लोग कुछ ऐसे भी ईडी का भी करेंगे, ये सब करेंगे, बट आई हैव टू डू दिस थिंग, राइट? मुझे करना पड़ा, अनफॉर्चुनेटली आई कैन से, क्योंकि है फैक्ट्स बहुत सारे हैं। कहिए हेलिदी, आप कहिए, पर एक बात मैं दिल से आ रही है, भूल ना जाऊं, कह सकता हूँ?
कहना है और आप कह दीजिए। Yes, no. You complete and then I'll speak. No problem. I'll wait. एक बात देखिए, दिल से है मेरी ये बात। 3 years हो गए हैं अभी, 1000 days, राइट? 1000 days से मैं मानता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यूज कितने भी हम फैक्ट्स रखें ना, दे विल थिंक अबाउट हु इज गिविंग दैट फैक्ट्स एंड दे विल नेवर बिलीव दैट। कभी बिलीव नहीं करेगी, हमें पता है। What I personally feel, if I am wrong here, correct me with logical fact. What I am sharing it right now. Be like that, so just like that. Because मैं ऐसा ही हूँ, मैं पर्सनली ऐसा ही होता हूँ। मेरे पास, मैं खुद भी, देखिए हमने वो फ्रेम वाले पे डिस्कस किया था, राइट? ये फ्रेम में दिख रहा है 142 के अराउंड एम्बुलेंस आ गई है। मैं उस चीज को सबसे कह रहा था, नो दिस इज राइट, दिस इज राइट, यू कांट कंडम दिस थिंग। मैं वही पॉइंट ऑफ व्यू स्टिक हो गया था। फिर वो बातें हुई, ग्रेजुअली कन्वर्सेशन हैपेंड एंड प्रोफेसर सबके साथ फैक्ट शेयर हुए। फिर आई पॉइंट ये मिली, जब खुद से कुछ मिल जाता है तो क्लियर हो जाता है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ, पर्सनली यू विल नेवर बिलीव ऑन अदर्स सेइंग इट, यू हैव टू खुद आपको सोचना है उस बारे में, यू थिंक बाय योरसेल्फ। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि आगे चल के भी यही पॉइंट चलती रहेगी, बट मेरा ये काम था, मैं जो भी थी, मैं उस दिन हेजिटेट कर रहा था शेयर करने में, हेली दी, देव सर, विशाल भाई, खुशी जी। मैं सिर्फ एक थिंग आके शेयर की जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी, मैंने ट्वीट भी कर दिया था। और उसके बाद में फिर मैंने ये हेजिटेट किया कि मेरे पास, मैंने उस दिन भी कह दिया था, मेरे पास 6 to 7 वीडियोज़ है जो कहते हैं सुशांत की न्यूज़ ये टाइम पे आई थी एंड ऑल दोस थिंग, बट मैं नहीं शेयर कर, बिकॉज आई डोंट वांट टू शेयर दैट। बट आज करनी पड़ी, अनफॉर्चुनेटली। आई वॉज लिटरली फीलिंग वेरी डिसहार्टेंड, एंड 2-3 दिन तक क्लोज्ड वन के साथ, जो एसएसआरएन्स है, एनी वन जो क्लोज वन, मेरी फैमिली में भी एसएसआरएन है, आपको पता है, सबसे डिस्कस की कि शुड आई डू दिस थिंग और नॉट। देन वी केम टू कंक्लूजन वंस, देन एंड। दिस इज लास्ट टाइम फ्रॉम मी अबाउट दिस पॉइंट, एंड आज सब कुछ दिखा दूंगा, फिर आप सबको फैक्ट पे बिलीव करना है, वो आपके ऊपर। बस यही है मेरा, ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो देव सर, एंड इवन आई वाज सरप्राइज्ड एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू देव सर पॉइंटिंग इट आउट, एंड योर पॉइंट्स, देखिए हमारा सबका अपना अपना पॉइंट है, जैसे आपने कहा। यू राइट, गो अहेड है दीना। हेलो विनोद यादव जी, कैसे? जय श्री राम, जस्टिस फॉर सर। See, I know that we have, even on calls, we used to go ahead and मैं आपसे पूछती रहती कि timeline का क्या issue है, because for me everything is timeline. For me, at least, my point of view is everything is timeline, because key makers and everything, the statements he's giving. See, timeline defines the statements. Statements defines how true, how false they are. From there, investigation happens. Investigation leads to a conclusion. This is what I believe. And आयुष मुझे एक ही बात कहना था, दीदी रहने दो, नहीं करना डिस्कशन इस पे, because I don't have, I'm completely blank. I don't have any, anything to talk about this. And I'm like, okay, because, especially मुझे, like मीतू दीदी की statement on timeline, it matters for me a lot. Of course, मीतू दीदी ने तो अपनी statements कोर्ट के लिए preserve करके रखी है, but for me, timeline, as I explain you how it goes, for me it's like that. It's a chain from timeline to a conclusion, because everything should be going by step to step. ऐसा नहीं होता कि मतलब हम एक statement दे और conclusion पे jump हो, या हम एक टाइमलाइन देखें और कंक्लूजन पे जंप हो, ऐसा नहीं होने वाला. So the thing is, everything, and when people have changed the whole timeline, it makes me think
कि यार जो दूसरे एसएसआरियंस है उन पे क्या मतलब पूरी एक टाइमलाइन चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो जाता है उसमें कि कूपर हॉस्पिटल कब पहुंची, कैसे पहुंची, कहाँ से पहुंची, एवरीथिंग गेट्स चेंज्ड, राइट? तो फॉर दैट इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम फैक्ट्स पे बात करें, इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम लॉजिकल फैक्ट्स रखें. इट्स नॉट अबाउट, एंड इवन आई डोंट बिलीव आयुष इन सर्टेन थिंग्स, टू बी ऑनेस्ट. Not, to be honest, not Irish believes on certain things on me. What we believe, and I mean, I don't mind saying in front of Irish that, I do check the facts. When Irish says it, it's not like, yes, we do, but I do check the facts. कि कभी कभी facts से भी मुझे, कुछ अलग मिल जाता है मुझे. So it's not about, believing Ayush or not. It's not even about कि I know him as my brother and anything like that. It's about the right facts. जब कोई logical facts पे बात करता है, yes, I do believe on that. एंड जब मैंने देखा, जैसे मैंने आयुष को पहले भी बोला था कि आई कम्प्लीटली अग्री ऑन दैट पॉइंट कि न्यूज ब्रेक हुई कब, बिटवीन 2:20 to 2:40 IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. बिकॉज मैंने जब यहाँ पे जो मेरे गूगल्स एंड एवरीथिंग आता है, and the channels I follow, everything, they shared the news with me around the same time. So I completely you know and it's not like me and Ayush won't have a counterpoint, but the thing is that अगर हम timeline एक straight path में रखे, तो I think everyone will go ahead and everything will go ahead and be in a straight matter, in a straight path. And even if you see, Me Too Didi's statement goes with the timeline that we are actually showing right now. Because as per I'll go and repeat it कि before जो statement उन्होंने दी है, जो भी public में जैसे tweets किया है, and go and counter check with it, that it definitely falls into this timeline that what we are discussing right now. So honestly speaking, for me, timeline is everything. This is what I feel. And I think a lot of people would have counterpoints with me, and a lot of people would hate me for saying this right now, and a lot of people will seriously hate me for saying this right now. But for me, timeline is everything, because everything started itself from the timeline. Statements we can go ahead and debunk the statements from the timeline. We can go ahead and agree with the statements from the timeline. We can go ahead and come to our not CBI conclusion, but to our self-satisfaction conclusion with the timeline. Everything depends on the timeline. Go ahead, Ash. This is what I want to say. Yes, I can understand your point. And देखिए, confusion clear हो जाएगी. Does live footages are live? SSRian rock. Very good question. इस पे मैं कुछ दिखाना चाहूँगा क्योंकि मैं आज सब कुछ लेके बैठा हूँ. I've taken it everything, so yeah. See So, this. Ayush, can I ask you something before you go ahead? मैंने कुछ शेयर कर दिया है, ठीक है, आप कर दीजिए, पूछ. नहीं, जो मैंने बोला था ना, मेरे 3 सवाल हैं इन पे. Can I take a couple of minutes to share that, my reservations? Yes, you can. Then ये ऊपर शेयर हुआ है, इसको बाद में पढ़ लेंगे. Go ahead. Yeah. So you remember I meant we talked the very same day, right? So, what do and I never had question about ambulances. I don't know, like there were 3. I never really looked into much because to me, the important things was what happened, and close to that line, right? So never really paid that much, like, going to the mortuary versus that place. So I wasn't very concerned with, that part of the things, right? So, lekin the timeline is important in some ways, it like Helly said, right, for her. And like I said, my quest is to really find out if somebody knew it earlier, somebody say कि जैसे कई वीडियो में सुना कि हमको इस वक्त पता लग गया था, उस वक्त पता लग गया था. But that's something like you were saying
for in Disha's case, right? You heard that in 5 o'clock morning because you were talking and maybe you saw on something. But there's more. There has to be more than that. And I just want to know is like, is there something that we can back it up, right? किसने बोला कि मैंने सुना? Like सुना मतलब क्या है? You're not gonna say somebody, your neighbor saying, hey, this something happened. And maybe then you'll ask like, where did you hear? But eventually there has to be a digital means of getting that information, right? So having said that, going back to timeline, like जो आपने ambulance में दिखाया और दिखाया, and I will come back to that. There are three main, reservation that I have is like, so चाबी वाले की बात पे, right? तो चाबी वाला सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है. I always thought, चाबी वाला, for me to trust the चाबी वाला is part of the cover up was hard because मेरा हमेशा से रहा कि जब एक crime करता ना, the less loose ends you involve, right, the better it is. So मुझे कभी भी नहीं लगा कि चाबी वाला was part of them, right? And no matter what he says, whether he's saying in favor or not, right? So that was my first question. The second one was, yes, that guy gave interviews multiple places and he's very consistent. So that's one good thing. You can see like, okay, he is, telling truth. But that doesn't mean he cannot be wrong, right? I mean, Joe, it depends person to person. If you are a hardcore criminal and you want to tell a lie, you can go to 10 places and you can tell exactly what it depends. I'm not saying he's telling a lie or truth, right? Because at the end of the day, the thing that to have, like Professor says, he probably gave statement to CBI. And even he must have given the CBI the same statement, but CBI still has to check, digital things to make sure that happen. If you talk to somebody, they will talk. There's several things to ascertain, right? What I'm trying to say is that's a basis. So that's one thing. Second thing that like I raised the other day, the main question that somebody has, like, as we know, me to the 10:30, 11ish, right? Even if you say what the main conversation, will it take that long? And you say maybe he got busy. And there could be a way to explain, right? That's okay. And then I think you had a space next day and this lady asked you a question. And I thought that was a very good question again, because our job is to ask question. It's like 155 to 220 is 25 minutes is enough for police to go do all those things? Probably. But if they're police just came on without knowing anything, it's not enough time. But if they're already in it, they could. I mean, there can be explanation. But the most important thing that, I thought is the hardest thing to do was, making sure they do all these things before Mitu arrives. And I told you how they could have done, right? They could have had a guy shadow her from home all the way. But then making sure that if she's coming at, arriving at 1:50, you call the guy like 45 minutes before at 1 o'clock, and you knowing that he will take this long, that's the hardest thing. That's me the hardest question that I cannot come up with answer in my head. So those are my reservations, but I'm not questioning what you guys are trying to show. Hope you understand what I'm saying. That's all I have. Let's go ahead. No, I got your point, and these are the points if I'm not wrong. You said it in space too, right? A few days back, me to the point, right? Me to this point, you said it, and I said about that 100% नहीं है इसमें तो confusion होती है. You said it, right? तो आप खाली on करके yes कहिएगा. If I'm not wrong. About I remember. If you are there, you can say it. Because उस पर मैं फिर बाद में कहूँ, पहले मैं की मेकर की पॉइंट पे आ जाता हूँ. देखिए की मेकर की पॉइंट जो आपने कही देव सर, why have you said it that हम लोग कैसे कह सकते हैं श्योरिटी के साथ, मैं प्रोफेसर हम दोनों मोस्टली वी से अबाउट इट, राइट, कि की मेकर झूठ नहीं कह रहा है. वो आए हैं, सामने आए हैं मीडिया के सामने, एट द सेम टाइम सीबीआई के सामने, कैसे झूठ नहीं कह रहा. Liar, as you said it, liar can be liar and he can lie perfectly. But point is, इतना प्रिसाइजली टाइम तो आज तक किसी ने बताया भी तो नहीं है ना. 1-5 करके, राइट, 1-5. एंड द पॉइंट इज, ये सिर्फ फैमिली की, विकास सिंह जी का नाम लिख दिया आपने. फफला मैम आपकी पॉइंट्स पे आ जाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल. आई विल कम टू योर पॉइंट्स, प्लीज बी देयर. ये पहले देव सर की पॉइंट को कंप्लीट कर दूं. विकास सिंह जी
की मेकर की बात को एग्री करते हैं? एंड ही सेड इट कि की मेकर को क्यों बेच दिया गया था, ये उनके इंटरव्यू में है। मतलब उन्हें ये पता है कि की मेकर मीतू दी के पहले आया है, मीतू दी से मुलाकात नहीं हुई की मेकर की, पहली बात ये क्लियर है। और की मेकर जब ये कहता है कि मुझे डोर ओपन नहीं करने दिया, ये तो किसको सस्पिशियस बना देता है? फ्लैटमेट्स को। तो इन द एंड किसके साइड में ये हुआ? इसकी स्टेटमेंट्स को देख के फ्लैटमेट्स की साइड में तो बिल्कुल नहीं, सुशांत की साइड में, सुशांत की फैमिली की साइड में। खोलने नहीं दिया गया दरवाजा, और मुझे फिर बेच दिया गया पैसे देके, टेंस नहीं लग रहे थे फ्लैटमेट्स, ये सब उसकी ऑन रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स है। तो ये हमारे साइड में जा रही है। एट द सेम टाइम इसके जो स्टेटमेंट्स है उसमें टाइमलाइन भी क्लियर हो गया है कि मीतू दी उसके टाइम पे नहीं आए थे। और ये विकास सिंह जी अगर होते, मतलब उनको अगर ये पॉइंट रेस करनी होती, वो जरूर कह देते कि की मेकर से मिले थे, वो क्लियर कर देते इस पॉइंट को, इतना मुझे लगता है। उन्होंने इस पॉइंट को अलग सेंस में और पॉजिटिव सेंस में इंटरव्यू में रखा है। He was sitting on chair, a check shirt which was wearing. I'd like to share that interview once with you. So yeah, I'd like to find that. I've shared it a long time ago. बहुत पहले शेयर किया था. Dave sir, you were not there. तो या ये बात है जो मुझे क्लियर करनी थी की मेकर को लेके। तो की मेकर देखिए यही है ना, तो ये सेइंग दैट, एंड आई एक्सप्लेन यू इन आई पुट, मैंने एक्सप्लेन में कोई नहीं होता करने वाला, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया 3-4 टाइम्स, राइट, 3-4 टाइम्स मैंने हमेशा से दिया है 3-4 पॉइंट्स के साथ, एंड दैट सेज इट ऑल। सेकेंड थिंग जो आपने कहा मीतू दी को इतना टाइम कैसे लगा, यही बारे में आपने स्पेस में भी कहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखिए मीतू दी को टाइम, इस मैंने अपना रीजन दिया, देयर माइट बी आउट कोर्स एंड ऑल दोस थिंग, उस सीजन से मीतू दी लेट है। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप सबके सामने रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा देव सब। और ये बाकी SSR इन स्टॉक, इफ यू आर देयर, सॉरी मैंने आपका ये डाल के रख दिया है और मैं इसको पढ़ा नहीं है। आई रीड इट फॉर यू आफ्टर दिस पॉइंट कंप्लीट, ए वेरी शॉर्ट पॉइंट। एनीवन ब्लूज कमेंट फॉर फ्रॉम आई कम ऑन योर पॉइंट। देखिए मीतू दी ने कहा 10:30 को लास्ट बात हुई थी, लास्ट वर्ड यूज नहीं किया, 10:30 को बात हुई, उसके बाद उन्होंने रेफरेंस नहीं बताया है कुछ भी, नथिंग इज देयर। तो क्या उस बीच में भी कुछ हुआ है? there might be some communication that now we are working and all, आप बताइए, रुक जाइए, wait for a while, then come up, and then after that everything will be there. So yeah, तो ये बहुत ज़रूरी है, and that is quite important for all of us to understand कि कैसे पॉइंट्स आते हैं and how points comes up. So yeah, that's very very important, and इस सीजन से हम लोग इस पॉइंट्स को रख रहे हैं और आगे भी बढ़ते जाएंगे। और बाकी जो आपने कहा एम्बुलेंस को लेके, ये मीतू दी की पॉइंट पे मैं इतना ही कह सकता हूँ क्योंकि मीतू दी आके ये पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं, एट व्हाट टाइम शी केम टू नो अबाउट दिस थिंग, बिकॉज उन्हें ऑटो रिक्शा में पता चल गया था, उन्हें फ़ोन किया गया था, ओपी सिंह जी को फ़ोन किया गया था। तो वो ऑटो रिक्शा का टाइम कौन सा था? हमारे हिसाब से दैट माइट बी 150 अराउंड, और 2 o'clock के अराउंड वो पहुंच गए हैं, बिकॉज जब की मेकर निकला है मीतू दी वॉज 10 minutes अवे। ये पॉइंट क्वाइट क्लियर है। तो मैंने आपने जो सवाल पूछा की मेकर का हम कैसे कह सकते हैं, प्रोफेसर इज ऑल्सो हियर, एज आई सेड अबाउट प्रोफेसर, एनीवन मी, हम दोनों कहते हैं, एनीवन कैसे कह सकते हैं कि वो झूठ नहीं कह रहा। और मीतू दी का मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दी। और एम्बुलेंस का जैसे आप कह रहे हैं, मैं फिर से कहूँगा एम्बुलेंस का मेरा पॉइंट यही है चलाने का कि टाइमलाइन क्लियर हो जाए, वरना मुझे खुद भी कुछ एम्बुलेंस का इतना पॉइंट रखने का ज़रूरत नहीं थी, बट टाइमलाइन को क्लियर करने के लिए एम्बुलेंस और की मेकर की पॉइंट आ सकती है, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। तो या दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। तो प्रोफेसर आप कहिएगा जिसमें 1 सेकेंड ये लाइव फुटेज का एक्सप्लेन कर दूँ, 1 मिनट लगेगा, लाइव फुटेज इसमें इसको हटा दूंगा फिर। Is there any delay between live TV broadcast and actual events? SSR interview says that live footage is alive. The act of digital TV broadcasting and reception at your home causes few seconds of delay, which is unavoidable. Tracing the signal back, it will have arrived the transmitter probably via fiber optic cable or
possible microwave transmission from TV station network control center. This will introduce a few milliseconds of delay. तो कुछ सेकंड्स का डिले है और कुछ नहीं, आवर्स का नहीं। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छी रखी, थैंक यू। तब मुझे ये शो करने का टाइम मिला। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो। Coming to how can three agencies not catch these lies? They might have. They're working on it. Elaborate way मैं बाद में दूंगा. Timeline should not start from 14 June, but weeks and months before that. Yeah, ये भी बात है, बिल्कुल no doubt about it. Okay. Vikas Sindhi said that the door was open 10 minutes before Mitudi arrived. Yeah, but according to who? According to obviously Pithani and Locksmith, I can say, because Locksmith की टाइमलाइन को देख के उन्होंने इस बात को कहा। मितुदी पहुंची होगी 155 एंड 145 लॉक्समिथ कह रहा है मैं निकल गया। दिस माइट बी द रीजन व्हाई विकास सिंह जी सेड दैट। और बाकी के नीचे की कमेंट्स पे मैं आता हूँ। आई कम अप। So before Mitudi arrived, SP police called Siddharth Pitani. What time police arrived? I'll come to that point. Professor को सुन लेते हैं पहले। Hello Professor, how are you? कैसे हैं आप? I'm good, Ayush, and I hope you're doing well. Warm regards to everyone. Uh, I was listening to your live before joining, just 5 minutes before, and for me, it's quite simple to understand the key maker, and he plays a very important part here. की मेकर हो गया, रूप कुमार शाह हो गए, यही लोग हैं जिनकी आप स्टेटमेंट्स अगर सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि what exactly is the key maker is trying to say. And for me, he's genuine because he says that he has given his statement to the CBI. Now, CBI must have investigated his statement. And this guy is giving detailed information and not something in the air. So we need to understand that. Coming to the point of Mituji, where people say that she had a word with Siddharth Patani at 10:30 last, I would like to correct them that this is not it, because we need to understand that Siddharth Patani very carefully called up two people after the locksmith left the house. If you remember, Ayush, we have spoken about it and discussed a lot of times. One person is Shri O.P. Singh ji, जो IPS officer हैं, late Sushant Singh Rajput के, and the second person is Meetu ji, while she was coming from her house, traveling from her house to Mount Blanc. So there was there was that communication, and it's quite evident even if you listen to the locksmith's interview. लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि लॉकस्मिथ क्या कहता है। लॉकस्मिथ कैन गिव एनी स्टेटमेंट कि हाँ जी मैं गया था वहां पर, मैंने ताला तोड़ा, मैं आ गया, बट ही स्पेसिफाइज द टाइम। 1:05 पे मुझे कॉल आया और फिर पिक्चर्स एक्सचेंज हुई एंड 1:30 में वहां पर पहुंचा, वहां 15-20 मिनट था मैं, एंड देन ही लेफ्ट फ्रॉम देयर। दिस इज एग्जैक्टली द स्टेटमेंट ही हैज गिवन टू सीबीआई। वी कैलकुलेट things based on facts, based on logic, and we calculate the timeline कि भाई लॉकस्मिथ को मीतू जी ने निकलते हुए नहीं देखा। Obviously मीतू जी बाद में आई हैं, so somewhere after 1:50 मीतू जी arrived, and the news which broke was somewhere around 2:20. आयुष को पता लगा था, मैंने देखी जब न्यूज तो it was around 2:30. So we keep a possibility that this is the timeline. This is how we calculate the timeline. So this is quite simple and very easy to understand. अभी मेरे को इतना ही बोलना था. And also, Ayush, I saw, you've shared those timings of the ambulance, which plays a very crucial part here. And which further debunks that when did the initial ambulance came and the second ambulance came and when did the ambulance leave. This is very important for people to understand the timeline and everything.
And of course, Ayush, there will be people who would not try to understand, or probably have their own reasons to say a different version. I've been listening to some YouTube sessions. There people are just making up stories and throwing it to public. Probably they want to run their YouTube sessions, make new members. They've kept membership fees also. ठीक है, तो मतलब that's their life. I'm nobody to judge them, nobody to interfere, but I have my own thoughts. uh, but आप अगर कुछ फैक्ट्स दिखा रहे हो, तो मतलब आप थोड़ा रिसर्च तो कर लो ना यार, थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा जेन्युइन चीज तो दिखा दो यार लोगों को. मतलब I've been hearing things like people talking about news. सुबह ब्रेक हो गई थी, कोई कह रहा है दोपहर में ब्रेक हो गई थी. अरे भाई दिखाइए तो सही, आप कोई एक न्यूज चैनल दिखा दीजिए, एक न्यूज चैनल. And while you know what, Ayush, while driving back home just now, I was just going through Bihar news, the local news of Patna, and I will share it with you when we talk one to one, and you'll be amazed. The timing, you will be amazed by the timing, you'll be amazed by the interview. वहां पर लाइव भी है, टाइमिंग भी है, और लोग जो बाहर खड़े हैं राजीव नगर पटना सुशांत के घर के बाहर, और एक उनके बिल्कुल इमीडिएट नेबर है, उन्होंने इंटरव्यू भी दी है, और वहां टाइमिंग भी आ रहा है. Still I don't understand why a few other people on YouTube sessions are putting in wrong information. Maybe they want to sensationalize this entire movement, or the Sushant Singh Rajput murder case. I don't know what their intention is, but this is this is wrong. This is absolutely wrong. But क्या कर सकते हैं, there are people who are milking from Sushant Singh Rajput's movement, and it's high time people should understand. It's been almost 3 years now. अगर 3 साल बाद भी लोगों को यही नहीं पता कि what is right and what is wrong and क्या है, then I feel sorry for them, man. Thank you, Ayush. Thank you. Very well said, Professor. And that's what we all were saying it before you came up. And yeah, we all in the sense, Heliti and मैं और खुशी जी यही पॉइंट कह रहे थे, विशाल भाई आप भी. तो एंड इवन कमेंट सेक्शंस में देखिए जो क्वेश्चंस आए, मैं बहुत ही देखिए मैंने फैक्ट्स के साथ इन सबको आंसर किया. जैसे SSR इंसरॉप कह रहे थे फुटेजेस लाइव है नहीं है, एंड जो विपाशा जी ने कहा कि क्या इन्होंने एक साथ डिसाइड करके. तो देखिए मैंने जो प्रोफेसर आई वांट टू टेल यू, आप बिहार ने से कह रहे थे, मैंने आपको बताया भी था एंड मैंने आज दिखाया भी है, क्योंकि मैंने उस दिन नहीं दिखाया था. You remember what I said it that day, and I was hesitating to show it. Those 6 news channels, actually 9 है, but मैंने 6 देखा है क्योंकि उसमें 3 बहुत ही आपको छोटी लगेगी, 266 व्यूज, तो आपको लगेगा कि उनका क्या दिखाना. प्रोमिनेंट न्यूज चैनल में से 6 मैंने दिखाई आज एक्चुअली 3 दिखाई, 2 बची हुई है, 3 सॉरी. तो 3 में से मैंने दिखाई इंडिया टुडे, आज तक एंड TV9 गुजराती. फास्ट दिखा देता हूँ, देन कमेंट्स लेता हूँ. पी मैम भी कमेंट ले लूँ, फर्स्ट टाइम आए. P ma'am, hello, how are you? SSR telescope and many other things in the house that sisters have. They have been taken for insignia check. Was some murder on the roof while he was targeting those telescope? Might be possibility. Possibility हो सकती है. Let's keep it to the whole Mount Blanc का scenario. जो माउंट ब्लैंक है पूरा घर है, रूफ सबको यूज किया गया है. दैट्स व्हाई दे वर इन्वेस्टिगेटिंग इट, राइट? CBI वाज इन्वेस्टिगेटिंग द टेरेस, टैंकी को ओपन करके, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. या दिस माइट कीप the key maker is only 5-6 minutes away from Mont Blanc. Patani was lucky he was open on Sunday and during lockdown too. Yeah, lucky तो था. लेकिन देखिए इमरजेंसी है, मुझे लगता है संडे ओपन रहता होगा, ऑफ होना चाहिए ऐसे, क्योंकि इमरजेंसी में 24 आवर्स ही ओपन रहता है. इज इमरजेंसी की मेकर, राइट?
और कभी भी इसको बुलाओ ये आ जाएगा, नाइट में भी, मॉर्निंग में भी, एवरी टाइम विल कम अप 24, सो इट्स लाइक दैट। राइट। ऊपर वाली पॉइंट पे भी आता हूँ, फ्रॉम 140, when did Siddharth Pithani call police? Obviously it will be around 150 के around, 150 के अराउंड ही होगा, 150 155 के अराउंड। अभी प्रिसाइज टाइम तो हम नहीं बता सकते। ब्लू स्काई मैम, ब्लू स्काई मैम फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू, कैसे आप, बट हो सकता है 150 155 के अराउंड। नीतू दी आए, उसके बाद पुलिस आ गए इमीडिएटली, सो दैट इज व्हाट माय टेक इज। तो देखिएगा ये प्रोफेसर, प्लीज देखिएगा, एनीवन जो अभी आए, जस्ट सी दिस थिंग व्हाट आई शेयर इट टुडे। मैं फिर से फास्ट फास्ट शेयर करता जाऊंगा। पहले तो ये देख लिया आपने, एम्बुलेंस अंदर जा रही है। रुको मैं इसको प्ले कर देता हूँ 2 मिनट। मैंने तो ऑलरेडी देखिए देखा एम्बुलेंस, हुआ है ये ऑलरेडी आपने दिखाया था ना मुझे, सो आई हैव सीन दैट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आयुष दैट नहीं साथ एम्बुलेंस, साथ गो अहेड। नहीं एम्बुलेंस का नहीं हूँ मैं, न्यूज़ चैनल्स का कह रहा था। तो मैंने आपको तो दिखाया है, बट मुझे पता है बट ये दिखाना, सबको दिखाना चाह रहा था, तो मैंने सिर्फ आपके लिए ऐसे कहा कि तो स्ट्रीम पे दिखा दो, लाइव पे। कहीं Yes. कहीं आप So this is where you have bought something with logic and facts. You're talking about logic and facts whenever we do spaces. We don't talk something on thin air कि भाई ऐसा हुआ होगा, time ये होगा, or we don't talk. We are talking based on what is on the screen. And ladies and gentlemen, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ा बड़ा लिखा है लाइव सुशांत होम, and if you check this video and other videos which Ayush has got on the live, uh, you can clearly see the time. आप मतलब आप जब भी कोई रिसर्च करें या कुछ भी करें, do not believe in anyone, just hear people and just do a little research yourself and you will find, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि about the timing, it's 3:16 p.m. बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, and on the left hand side it says Sushant's home live. So that means this particular channel is covering live at 3:16, let's say around 3 बजे के आसपास आप ले लीजिए, मतलब वही वही तीन मैंने, क्योंकि या अंदर रिवर्स लेने में मैंने 15 मिनट्स लगे, समझिए। रिवर्स लेने में 10 मिनट्स, 15 मिनट्स में वो यहाँ पे अंदर पहुंच गए, क्योंकि वो yes ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया था इस सब में। तो 3 o'clock के अराउंड प्रोफेसर आ गई होगी वाइट एम्बुलेंस, राइट? आप माइक काउंट रख सकते yeah absolutely, I mean so this is something where जैसे आप ये लेके आए हैं तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को अपनी आंखों से नजर आ रहा है कि ये पर्टिकुलर न्यूज चैनल जो आयुष लेके आया है, CNN न्यूज 18, 3:16 की ये न्यूज है दोपहर की, और वहां लिखा हुआ है लाइव। अब अगर इन दोनों चीजों को हटा देते हैं और आयुष मुझे बोलता है कि ये 3:15 का है, तो तब मेरा क्वेश्चन आयुष से होगा कि आयुष आप कैसे कह रहे हो कि ये 3:15 के आसपास का है, बट यहाँ तो प्रूफ है सामने। Still people are saying it came at 12 o'clock, some people are saying it came at 11 o'clock in the morning, so there lies the confusion, and I would request those people to please see this. It's quite clear right in front of you, आप लोगों के सामने ही है ये सब कुछ, and I'm sure Ayush must have shown the other videos as well. It's not about one particular channel, it's probably 5 to 6 channels, different channels. प्रोफेसर भी देखिए मैंने दिखाया भी, एंड व्हाट यू आर सेइंग इट राइट नाउ, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू सेम है, सेम थिंग मैंने कही भी, कि हमारा देखिए पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हम समझाना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के समझाना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि केस का सिनेरियो खराब हो, टाइमिंग्स को। और क्या खराब होता है जब हम डिस्कस करते हैं की मेकर के बारे में, हम डिस्कस करते हैं एम्बुलेंस के बारे में, जब भी हम डिस्कस करते की मेकर, एम्बुलेंस, नीतू दी, पुलिस, सबका टाइम उल्टा हो जाएगा अगर हम 12 o'clock, 1 o'clock और 1:30 के अराउंड पे लेके जाएंगे, 2:30 के पहले इवेंचुअली आई कैन से दैट। तो Absolutely.
Okay. Yeah, I'm just acknowledging what you said. या वो टाइम हम उल्टा नहीं कर सकते ना, वी कांट डू दैट। और ये एम्बुलेंस को दिखाने का मेरा कोई मोटिव नहीं था, मेरा मोटिव यही है टाइमिंग दिखाने का, दैट इज गेटिंग इनसाइड, राइट, इट इज गेटिंग इनसाइड। एंड नाउ आई लाइक टू शेयर दिस थिंग टू, ये देखिए, दिस इज वन ऑफ दोज न्यूज चैनल, अब मैं कह सकता हूँ, देखिए, वेल नोन न्यूज चैनल इन द सेंस, आई कैन से इट, बिकॉज इसको वो टाइम पे सब देख रहे थे मोस्टली, everyone was seeing it. That is आज तक, so India Today, this is India Today, right? देख रहे थे। अब ये देखना पड़ता है, क्या करें, we have to see this thing. This news comes up around 2:26 p.m. एक्चुअली ये आई है, मैं एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ, सुशांत, 2:25 p.m. के अराउंड इंडिया टुडे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ आज तक, जो मैंने अभी प्रोफेसर से बात करे थे दिखाया, उनका भी सेम टाइम। अभी एक ही न्यूज़ चैनल का कैसे, और आज तक इंडिया टुडे, आप कहेंगे दोनों मोस्टली एक साथ काम करते हैं, ठीक है, ये भी माना मैंने, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, राइट, विच आर गिवन। तो देखिए 2:24 सेम। अभी ये तो देखिए अलग एक चैनल का, अब मैं आपको दिखाता हूँ TV9 गुजराती का। TV9 गुजराती, मैंने क्या कहा, 2:20 से लेके 2:45 2:40 के बीच में, नॉट 45, सॉरी, 40 के बीच में न्यूज आई है, इट्स लाइक दैट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ये देखिए 14 जून, ब्रेकिंग न्यूज 2:35। गुजराती पढ़ने नहीं आ रही होगी, पर आप नीचे का टाइटल देख के समझ सकते हैं, एंड मैं नहीं चाहता हेरिदी पढ़े हेरिदी क्या दी रिटायर्ड हुआ है, बिकॉज हेरिदी, देखिए आप भी जानते हैं ना, एवरीवन नो इट, दिस थिंग disheartened us, बट दिस इज द ट्रुथ कि ये 2:35 आई थी। द ट्रुथ है सुशांत वाज ब्रूटली मर्डर्ड, ये मुझे दिखाना था, जैसे मैंने आज लिखा स्पीक ऑन ट्रुथ, तो ये ट्रुथ है कि ये 2:35 2:20 के अराउंड ही न्यूज़ आई थी, उससे पहले नहीं आई है, ये बात मुझे दिखानी है। अभी ये एक हो गई, राइट, दिस इज वन, एंड थ्री, सॉरी, थ्री न्यूज़, एंड दिस वन इज ऑल्सो वन ऑफ दोज न्यूज़ विच आई वांटेड टू शो यू। सी दिस वन, देखिए ये तो आपको और क्लैरिटी देगी, क्योंकि आप एक फैक्ट देखते, जब एक के साथ आप दूसरे देखते हैं ना, वो एक वेटेज क्रिएट कर देता है, दैट क्रिएट्स द वेटेज, एंड दैट गिव्स यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी इन योर माइंड दैट दिस न्यूज़ का, ऑब्वियसली ये वो टाइम पे, ये टाइम पे आ गई थी। तो अभी आप ये देखिएगा, सी दिस थिंग, बिकॉज ये आपको और क्लैरिटी देगा। मैं एक एक करके शेयर करता जाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ सबको दिख जाए एक साथ, और फिर मैं हम लोग बातें करें, फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ, एवरीथिंग विल बी देयर। देखिए 14 जून, जनतारा टीवी है, 2:31 PM, ब्रेकिंग न्यूज़, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज़। आप समझिए 2:30 2:20 के बीच, 2:20 और 2:40 के बीच में ही आई है, एक साथ मैंने आपको चौथी न्यूज़ दिखाई है, दिस इज द फोर्थ वन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये क्लैरिटी देता है कि नहीं देता है, मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, बट इट्स ओके इफ इट डजंट गिव यू क्लैरिटी, दैट्स परफेक्ट। यस, दैट्स इट, ये भी आपको मैंने दिखा दिया, दिस इज देयर। अभी आप बताइए कि मैं क्या कहूँ, व्हाट आई कैन से, एंड blue sky man says it, each and every interview key maker always stick on his timeline. Ah, you're right on point. That is what I understand too. That is what professors Absolutely right. I say. What Okay, Rehman ma'am is saying is absolutely right. I do agree with her. blue Uh, sky man. we have given a lot of examples. Again, I would like to give a very simple example that if I, the professor, calls up Ayush at this particular time, IST, it is going to be 2:29 a.m. And if tomorrow somebody asks Ayush,
कि आयुष तुम्हें प्रोफेसर ने कितने बजे रात को कॉल करा था, तो आयुष विल से होल्ड ऑन, लेट मी चेक. He'll check his mobile and he'll say, the professor called me up at 2:29 a.m. Based on that. And that will be his statement throughout. उसके बाद भी कोई उससे पूछेगा तो वो वही बोलेगा. The professor called me up at 2:29 a.m. specifically after checking his phone. The same, ladies and gentlemen, the CBI, जब CBI के पास की मेकर गया होगा, तो सीबीआई बेस्ड ऑन हिज स्टेटमेंट उसको नहीं मानेगी, वो इन्वेस्टिगेट करेगी. क्या की मेकर के व्हाट्सएप पे सिद्धार्थ पठानी का कॉल आया, क्या उन्होंने मैसेजेस एक्सचेंज करे, फोटोग्राफ्स एक्सचेंज करी, जियो लोकेशन क्या थी की मेकर की, सिद्धार्थ पठानी की, at the time of initial calling, and then the geolocation of the keymaker when he started from his house to Mont Blanc. Everything is going to get investigated. Otherwise, giving a wrong statement to the the Central Bureau of Investigation agency itself is wrong. आप आपको उसी आप मतलब, if you are wrong, you'll get arrested and you'll be behind bars. It's that simple to understand, guys. It's that simple. नो डाउट अबाउट इट. देखिए यही प्रोफेसर हम कहना चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं. और मैं फिर से एक बार वही बताना चाहूँगी. देखिए देव से पहले कह रहे थे, देखिए देव सर आर यू सेइंग इट कि ये पॉइंट को निकालना, किसी को रिप्लाई देने का मोटिव, मैं फिर से क्लियर करता हूँ, बिकॉज एज सम पीपल आर देयर नाउ. देखिए मेरा किसी को कोई भी रिप्लाई देने का मोटिव नहीं है. इट्स नॉट अबाउट देव से को तो मैंने दे दी है, मैं किसी और को भी बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, क्योंकि उनके माइंड में भी होगा आई एम गिविंग रिप्लाई टू सम यू चैनल्स एंड ऑल. आई एम टेलिंग द ट्रूथ टू द पीपल, to the SSRians. Now it's their point of view, it's their thinking that they will believe it or not. It's on the facts, right? As I've written, let's talk about the facts. और मैंने कुछ अभी तक अपने whatever I said from my mouth, and it's not about anything assumptions and all. कुछ भी assumptions नहीं, सब facts पे based. तो मैं इस point को रख रहा हूँ, और ये पॉइंट ज़रूरी है रखना, क्योंकि क्लियर ऑफ ओपिनियन क्लियर होना, एक पेज पे आना शायद तो पॉसिबल नहीं होगा, फिर भी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस हो गए, बट जो मेरे क्लोज हैं, जिनको मैं बहुत टाइम से क्लोज, इन द सेंस व्हेन आई से क्लोज दैट मीन्स बहुत टाइम से उनसे कनेक्टेड, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज क्लियर हो, वो बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वेरी वेरी मच. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग. But I personally, what I feel, I never want anything like confusion and all in anyone's mind. वो मुझे नहीं चाहिए. किसी के माइंड में कंफ्यूजन मैं क्रिएट करता नहीं, ना ही मैं कंफ्यूजन किसी के माइंड में रखना पसंद करता हूँ, क्योंकि 3 years हो गए, 1000 days हो गए हैं, 3 years होने वाले हैं, 1000 days कह सकते हैं, हो गए हैं. अभी तक अगर कंफ्यूजन रहेगी तो दैट विल नेवर मेक एनी सेंस, कुछ क्रिएट नहीं होगा उससे. सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज ऑफ शोइंग दिस ऑल टुडे. बट बात ये है, नाउ पर्सनली व्हाट आई फील, एंड आई विल से इट आफ्टरवर्ड्स, मैं बाद में कहूँगा, पहले एक कमेंट ले लेता हूँ. जस्ट टेक वन कमेंट. आप हो किसी ने कही विशाल भाई. Ayush, are you able to hear me? Yes, go ahead. Sorry यार, वाईफाई डाउन है, मोबाइल नेटवर्क पे हूँ, so I don't know why I'm getting dropped from the stream. So 2 key points about the key maker. Whether he was planted, he came, he not came. CBI will bring out the truth. You and me, no one to judge. 2 things what he said in front of media that's available on the channels. First, when he entered Mont Blanc, he asked the security guard, I need to go to flat number so and so, 6012, whatever he must have mentioned the flat number. But
Interesting point. The security guard never entertained him and he directly went up. So question arises over here. The security of Mont Blanc. During the lockdown, any Tom, Dick and Harry person is coming to such a building which has a rent of 1,25,000 for one particular flat. So अगर जो चार flats it goes to 4,50,000. वहाँ की सिक्योरिटी कैसी कि कोई बंदा आ रहा है मुझे इस फ्लैट में जाना है लेकिन वो वॉचमैन उसको एंटरटेन ही नहीं कर रहा है एंड दैट फेलो गोज अप. So this goes to question the security of Mont Blanc. And this key maker has said in his statement, public domain में available है वो check कर लो. Second thing, he says when he was breaking the door, he was being told by the flatmates. Flatmates बोल तो ज़्यादा उनकी insult नहीं करूँगा. Flatmates बोल देता हूँ फिलहाल. If you hear any voice from inside, please stop. Don't break the door. Immediately stop the work. I hope I'm right. And when the reporter asked her a question, him a question, कौन-कौन वहाँ मौजूद था और उनका रिएक्शन और उनका फेशियल एक्सप्रेशन या आपने क्या नोटिस किया? So the key maker himself said, these are the few people I can only recognize one, and that's freaking Chappal Chor. And they were all cool and calm. उनको कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई टेंशन नहीं था. तो भाई अगर आपका बॉस अगर रूम में उसने अपने आप को लॉक किया है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, तो पगार क्या झक बनाने के लिए ले रहे हो आप? And when they are knocking the door from 10 o'clock in the morning, sir, आपको lunch, because they came up with this narrative that 10 o'clock we started knocking the door to ask what you want to have for lunch. But Sushant never responded according to these people. Why on the hell planet Earth Dipesh Sawant, 10:51, very accurate time, I remember this, is busy chatting about the Flipkart ad. That Sushant wanted me to speak with you about the Flipkart ad. भाई तेरे को तेरे मालिक अंदर रूम में बंद है, तेरे को उसकी पड़ी नहीं है, लेकिन उसको एक ऐड करना है या उसको कुछ करना है फ्लिपकार्ट के लिए, तो उसके लिए बिजी है. किंतु दरवाजा नॉक नहीं कर रहा है, बाकी सारे सर्वेंट्स लोग नॉक कर रहे हैं, तो दरवाजा नॉक नहीं कर रहा है और बैठ के चैट कर रहे हैं. थैंक यू आयुष, फिलहाल ये बोलना था. नहीं, पर्सनली विशाल भाई बहुत ही अच्छे से कहा आपने, और ये कुशाल देवरी वाले पॉइंट पे तो उस दिन हमने कहा भी था, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि क्या है, व्हाट इज़ द पॉइंट इज़, एंड क्या हो सकता है आगे चल के भी सुशांत के केस में, व्हाट विल हैपन. तो लेट्स सी, लेट्स दिस काइंड ऑफ अप्रोच जो ये है, हम अप्रोच के साथ ही चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी है. एंड आई लाइक टू शेयर समथिंग विथ यू. मैं कुछ शेयर ही कर रहा हूँ, दैट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट. Ayush, am I audible? Yes, yes. Okay, before you go ahead and share, can I quickly say one point? Yes, yes. Okay. Okay. So basically, CBI interrogated, investigated everything. What happened on 14th of June, right? That would be their first thing, to go ahead and call the witnesses, whoever was there on 14th of June, and go ahead and ask questions, right? That would be the first step. Basically, like this beginning, right? To go ahead and investigate a case like this case, which for them right now they're looking at all the angles in this case. So obviously, अगर की मेकर आता है तो CBI ने की मेकर की स्टेटमेंट ली होगी, which may be in the public domain, which might be in the not in the public domain. So that comes the challenge. अगर की मेकर झूठ बोल रहा है, I mean CBI के सामने आके तो पकड़ा ही जाएगा ना वो यार. मतलब they have millions and millions of ways to go and find out कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है. And as said by everyone, कि जो की मेकर्स के स्टेटमेंट्स आ रहा है, it perfectly matches to me to be the statement and perfectly matches to the timeline and everything. So why would key maker lie about something? Obviously, I mean, see, as Professor Bai always says that, and even you Ayush, after that too, like we all say that हम ये word use करते हैं, alibi, right? Alibi.
obviously. But for what reason to go ahead and push their suicide narrative? यो डोर बंद करके सुशांत सर ने सुसाइड कमिट कर ओपन द डोर एंड तब हमें पता चला कि सुशांत ने सुसाइड कमिट किया है. नाउ they didn't knew कि की मेकर पूरा उल्टा लाइक डीप में चले जाएगा. Of course, I mean, you know, so that's the thing. Like, you know, ये मुझे है कि अगर you know की मेकर, of course, see, अगर अब मुझे कोई पूछे सेकंड थिंग कि सब कोई बाहर आया तो ऑब्वियसली की मेकर भी बाहर था. सी, सब कोई बाहर क्यों है? चुड़ैल, चंपल चोर, आई मीन रिया चक्रवर्ती, भिखारी, everything. Such a small thing. How they are outside because they are associated with Riya Chakravarti. And who is saving Riya Chakravarti? The mastermind, for various kinds of reasons that we have already discussed on the space, right? So why would they save a small key maker for such a big thing? Why अगर की मेकर झूठ बोल रहा है and they are obviously उनको तो की मेकर पर केस करना चाहिए, राइट अवे नंबर डिफेमेशन केस करना चाहिए, या तो फिर they would have filed a complaint to MBA government police. I would say MBA government police, of course, because not everything ये यही मुंबई पुलिस है जिन्होंने आतंकवादी कसाब को भी पकड़ा था. So we shouldn't be forgetting that, right? Yes, some parts of Mumbai police have loopholes, and I'm talking about that point. Okay. So, that's the thing. Defamation case करना चाहिए, and why would they, they save a small key maker if they don't have any links with it? Why? So that's the thing. This key maker सच बोल रहा है. अगर नहीं सच बोल रहा होता तो अब तक तो defamation case बहुत, I mean, बहुत कुछ हो जाते उसके. But that's the thing I wanted to go ahead and put down. Thank you so much. It is a criminal offense to obstruct justice and give false statement. Despite that, still you think कि देगा की मेकर? No, बिल्कुल नहीं देगा. इतनी सारी statements, false statements, बहुत ही अपने आप को नहीं फंसाएगा. मुझे नहीं लगता. As I said it, you're right. SSR is wrong. My head hurts because of timeline. Why difference in timeline? Ayush fact are right regarding timeline. Okay. देखिए भी मैं bluntly एक बात कहता हूँ, very bluntly. No one is superior here, first of all. ये भी अपने आप को superior नहीं समझता. देखिए ये सब facts मुझे भी कहाँ से मिले? मुझे मिले हैं न्यूज़ चैनल से, ना ही कुछ assumption से, ना ही कुछ. बस देखने का नजरिया, जैसे मैं पहले कह रहा था, पर्सपेक्टिव होता है. वो पर्सपेक्टिव राइट होना चाहिए, एंड दैट पर्सपेक्टिव शुड बी ऑन राइट पाथ. एंड एक ही पर्सपेक्टिव हो सबका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? आप सब एग्री करते होंगे मुझसे, राइट? पॉइंट इधर आती है, क्यों अपने आप को कोई सुपीरियर मानता है कि हमने कहा तो अंत, तुम कहो तो फिर हम कहेंगे कि नहीं ये गलत है. इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? When we say something, we give the points. We never say like we are superior and we have the facts and you have to believe on me. I present my point of view. If someone counter me, I'll accept that and I'll say this is kind of a possibility. ये possibility मैं रखता हूँ, but ऐसी timeline की possibility मैं कभी नहीं रखूँगा. 12 o'clock, 1 o'clock, 3 o'clock, 1 o'clock, 1:30. No, it's not like that. 11 o'clock, 10 o'clock. No, sorry. क्योंकि ये जैसे कह रहे हैं ना फलफरा मैम, इट्स क्रिमिनल ऑफेंस टू ऑब्स्ट्रैक्ट जस्टिस एंड गिव फॉल्स स्टेटमेंट्स ऑफ द की मेकर. तो की मेकर तो कभी झूठ कहेगा नहीं, पहली बात. तो ये की मेकर को भी डिबंक कर देता है, ये मेतूदी की खुद की स्टेटमेंट को भी डिबंक कर देता है.
because family never said this thing that family came to know regarding Sushant in the morning, especially Mitu D, who reached Mount Blanc at 2 o'clock in the afternoon on 14th of June. आप मितू दी की स्टेटमेंट को भी फेक प्रूफ कर रहे हैं. At the same time, you're proving the entire timeline what is given by Mitu D and जो देख पिठानी इन सब है हम उनकी स्टेटमेंट बिलीव नहीं करते पर मैच करे पॉइंट ऑफ व्यूज तो फिर हमें पॉइंट्स मिलती है मैच करे टाइमलाइन को तो हमें पॉइंट्स मिलती है तो वो सब जो हमारी इन्वेस्टिगेशन थी वो सब की सब फेक हो जाती है entire फेक या फिर illogical I can say तो फिर entire thing becomes useless what we discussed it from last 1 year और आप सब ने किया है मैंने अकेले नहीं आप सब ने I sorry to interrupt you, but आपने superior की बात की. Of course, it's not like मैंने ये कुछ किया. Yeah, go ahead. Sorry. नहीं अरे जस्ट एक वर्ड मुझे बोल नहीं जाओ देखिए बस 2 मिनट खाली 2 सेकंड लगेगा फिर मैं आपको देखिए तो फिर पॉइंट ये है मेरे माइंड में व्हाट इज देयर सेइंग इट हाँ मैं ये कह रहा था देखिए तो फिर इससे क्या होगा आप सबकी जो इतना टाइम था वो वेस्ट हो गया ये मैं कहना चाहता वो टाइम वेस्ट हमारा हुआ ही नहीं है क्योंकि ये कुछ सेट ऑफ पीपल लेकर आ रहे हैं नैरेटिव एंड दैट सेट ऑफ पीपल somehow creating the confusion in some of the mind as you're saying it. My head hurts because of timeline. Why difference in timeline? Some set of people are doing that. That's what my take is. Very bluntly, without any hesitation, saying that. Go ahead, Helidi. मेरी वॉइस क्लियर थी ना? Yes, Ayush. It was perfectly clear. And see, आपने superior की बात की. Of course, there is just one superior person in this entire moment, Sushant Singh Rajput. That's it. And secondly, I want to say कि ऐसा नहीं होता कि मतलब when you have done so much of things for this movement. पहले तो no one can go ahead and say कि I have done so much for this movement, right? दूसरी बात कि it's just we are not doing it for our benefits. No one is doing. Of course, जैसे प्रोफेसर भाई बोल रहे थे कि about getting that monetizing that like various YouTube channels. It's their own personal life. We can't say anything on that. I mean, especially me, like I'm no one to go ahead and say what they have to do and what they not have to do. But the thing is to go ahead and put the right facts out in front of the people. See, मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगी आगे जाके भी when Sushant Singh Rajput gets justice कि आयुष ने इतना किया प्रोफेसर भाई ने इतना किया मैंने इतना किया सैंडी मॉम ने इतना किया विशाल भाई ने इतना किया खुशी दीदी ने इतना किया सबने इतना किया no how Ayush I know how Ayush will say it कि it's a collective efforts by each and every one of us right कि ना ही एक आयुष अपने आप को सुपीरियर मानेगा ना ही प्रोफेसर भाई ना ही मैं ना ही विशाल भाई ना ही खुशी दीदी ना ही सन्नी मॉम कोई भी नहीं but what we will see that our collective efforts made this kept this movement alive and because of the collective efforts by each and every single of us Sushant Singh Rajput got justice right so यार अपना दिमाग चलाओ अगर honestly जैसे मैंने कहा I mean see I also check my facts it's not like I would blindly believe on anyone trust is a different thing and blindly believing on someone is a different thing अगर मेरे मन में कोई query है तो I'll go ahead and check my facts और ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने
कितने जन के फैक्ट्स डबल चेक, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी चेक नहीं किया, मैंने डबल चेक किया है, एंड देन इट्स अप टू मी कि मैं उस पर बिलीव करूँ कि ना करूँ. तो it's you know and sorry मैं ये again and again बोल रही हूँ, because but it's actually like, you know to go ahead and I just have to say that go by the facts. That's it. Go ahead, Ayush. Very, very well said. Before Ayush says something, very, very well said and beautifully put across. When Heli says this, people need to understand that she does not believe when somebody is saying something. She checks her own research. She does her own fact checks. This is very important for people to understand. So, well said, Heli. Very, very well said. See, what happens is if somebody is blabbering, Ayush, and in other wrong information, it's okay. I usually ignore that part. But my concern is with all those innocent SSRians who absorb that information. Don't just absorb any information. Please do your fact checks yourself. Do a little research, like Heli just explained. कि थोड़ा थोड़ा आप खुद रिसर्च करिए. गूगल पे हम लोग कुछ ना कुछ हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं पर्सनल लाइफ में. Why not about the case as well? Everything is available in public domain. You just have to write the right thing on Google. For example, if you are searching for interviews इन राजीव नगर और पटना बिहार, आप कुछ ऐसा कुछ टाइप करके ऑन SSR डेथ, आगे आप डेट लिख सकते हैं 14 जून 2020 एंड देन जस्ट डू अ सर्च एंड देन क्लिक ऑन द वीडियोस. you'll come across various न्यूज चैनल वीडियोस. तो उससे आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन मिलेगा. थोड़ा सा ऐसा सर्च करेंगे तो you'll get the right kind of information. My problem is with people who intentionally does give wrong information. Wrong information क्यों देनी है यार? We are not getting anything from this. All we want to do is just be together, stay united, and get that justice for that boy who lost his life. He was brutally murdered. और एक बार उसको जस्टिस मिल गया, हम लोग अपनी अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे. हमें कोई यहाँ पर प्राइज थोड़ा मिल रहा है. It's just a collective effort, guys. And we are doing that on social media. Digitally भी कर रहे हैं, ग्राउंड पे भी कर रहे हैं. बट फैक्ट्स रखिए सामने. जब कोई अच्छे फैक्ट्स रखता है ना, जैसे आयुष अभी लेके आया एम्बुलेंस का, अब ये विदाउट टाइमिंग तो नहीं लाया. ही bought all the facts with proof कि देखिए एम्बुलेंस इतने बजे निकल रही है, इस डेट को ये देखिए आपके सामने है. तो उन चीजों में थोड़ा अच्छा भी लगता है कि यार जब ऐसे लोग आते हैं बाहर फैक्ट्स के साथ और रखते हैं तो फिर things become more interesting. So I would request everyone to do some personal research also on the subject, and any point is welcome. जैसे you know फलफला जी का है कमेंट्स है, मैं देख रहा था. Is there no CCTV in the communal area in Mount Blanc, the lift or the corridors? Now these are interesting questions, right? This is something which you know randomly comes as a thought in your mind. यार ये वहां कैमरास हमने बाहर देखे, कॉरिडोर्स में भी तो हो सकते हैं, लिफ्ट के बाहर भी लगे होने चाहिए. So come up with something like this. It makes the debate and the topic more interesting. And also फलफला जी का सेकंड और भी अच्छा है. What did the housemates say? They were doing from 10:30 onwards, apart from bang on the door, call Sushant mobile and only spend 15 minutes looking for the magical door. मैजिकल डोर की. बताओ यार. Of course, I mean this is
मैं Oh my हम God. तो इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं इसको. It's all an an Okay. illusion, and it's an entire. See, people need to understand. आप लोगों को समझना चाहिए पड़ेगा कि सुशांत की हत्या 13 रात को या 14 सुबह मॉर्निंग में हो चुकी थी. उसके बाद जो भी रचा गया है वो एक कहानी है, एक इल्यूजन है. अगर फोन आया भी है और करा भी है, बात हुई भी है किसी से भी, उनको क्या पता कि माउंट ब्लैंक में क्या हो रहा है. उनके सामने कहानी रख दी कि सुशांत अपना दरवाजा नहीं खोल रहा. जी, हमें कैसे मालूम कि वो सही है कि नहीं है? पर सो हमें ये जरूर पता है प्रोफेसर कि कॉल हुआ है, राइट? क्योंकि हाँ ये हाँ, सेम एग्जैक्टली. दैट ऑब्वियसली दिस इज वही तो है जो आयुष नॉट तुमने अभी कहा कि हमें कैसे पता है. बेस्ड ऑन मीतू जीज स्टेटमेंट. स्टेट. एब्सोल्युटली, गो अहेड. Comparing it with Keymaker's statement, comparing it with Vikas Singh's statement on behalf of Meetudi, what he is giving it regarding Keymaker, कि Keymaker को कभी डोर ओपन करने के लिए अलाउ क्यों नहीं किया. मैं सुनाना चाहूंगा विकास सिंह जी के जब ये आता है ना, तो दैट मीन्स इट कमिंग फ्रॉम फैमिली, राइट प्रोफेसर? राइट हरिदी, राइट विशाल भाई, एवरीवन बताइएगा मुझे. यू एग्री विथ मी कि व्हेन विकास सिंह जी, और कमेंट सेक्शन में भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू में सुनना चाहूंगा इसमें, व्हेन अ लॉयर स्पीक्स, ही स्पीक्स ऑन द बिहाफ ऑफ फैमिली. तो व्हेन ही सेज दैट की मेकर को क्यों नहीं ओपन करने दिया, जब की मेकर की पॉइंट को वो निकाल रहे हैं, तो वो जरूर कहेंगे कि की मेकर से मीतू दी मिले थे. क्योंकि आपके टाइमलाइन के हिसाब से तो ये होता है. आपके इन द सेंस, आई एम नॉट रेफरिंग टू एनीवन, बट जो रेफर कर रहा हूँ उन्हें समझ गया. जिनको रेफर करा उन्हें जरूर समझ जाएगा, आपको शायद नहीं समझे. क्योंकि देखिए उन लोगों के लिए मेरा एक ही मैसेज है. आपको क्या आप जैसे कह रहे थे कि उन्हें तो कुछ भी केस का नॉलेज है ही नहीं. देखिए सर, मैम, एवरीवन, केस का नॉलेज की आप बात कौन करते हैं. आप कौन फर्स्ट कह रहा ऑफ ऑल था? यहाँ पे छोड़िए प्रोफेसर, ये नॉलेज. अच्छा अच्छा, मतलब कोई ओके. आई थॉट कि यहाँ कमेंट्स में किसी ने कहा. नहीं नहीं, सी जी यहाँ पे. सी, इफ somebody आयुष सेज दिस कि तुम्हें नॉलेज नहीं है, उसके सामने हाथ जोड़ के कहो हाँ जी सारी नॉलेज आपको है. बस हाँ जी. but but if that person is spreading false information in the movement, then as a We have to member of correct it. this movement, I, you, Heli, Vishal, and everybody has the right to intervene and stop that false narrative. Because we will not allow false information just because you want to, gain some fame or run your YouTube. Sorry, this is not going to happen. You show the correct information, that's okay. You want to spread wrong information about me, please go ahead. You want to troll me, please go ahead. Abuse me, please go ahead. I will not say a single word. But on this case, if you try to deflect it, I would not. I'm not taking names right now, but in future, I would take those names and I would give it back on their channel. So I hope things are very clear to them. एंड प्रोफेसर इन दिस थिंग, कौन फंस जाता है? Those innocent SSR, and as these SSR and stock, please आप मुझे DM कीजिएगा. I don't know your Twitter ID, who you are, but I This want is to a very, explain you. this is Ayush. Sorry, my intention was not to interrupt you, but this is a very interesting comment. आप एक मिनट दोबारा दिखाएंगे इसको? My ये देखिए. head hurts because of timeline. Why Exactly, difference in timeline? exactly. ये जो SSRian rocks हैं, इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है. This is what happens when people, when the confusion is created with people. And I would request this handle कि आप थोड़ा सा सोचिए. Think from the time, आप सबसे पहले आप लॉक स्मिथ का इंटरव्यू सुनिए. एंड दैट पर्सन हु हैज गिवन स्टेटमेंट टू द सीबीआई, वहां से केयरफुली कैलकुलेट करिए, अपने आप कैलकुलेट करिए कि कब मीतू दी आई होंगी और न्यूज कितने बजे ब्रेक हुई. ऑफ कोर्स आई कैनॉट गिव अ स्पेसिफिक टाइम, नीदर कैन आयुष, हेली और विशाल. एग्जैक्ट टाइम तो हम नहीं बता सकते, बट यस, बेस्ड ऑन दैट वी कैन गिव अ टाइमलाइन between 150 or 150 to 220 के आसपास.
और around 2:20 के आसपास the news broke. So this is how the calculation is done, and not by, you know, हमने shadow देखी और shadow से calculate करा. अरे यार, come on यार. Ayush is showing you the timeline with time, live coverage of the news channel, and you are मतलब मुझे हंसी आती है यार कभी कभी. But I understand what they're trying to do and why. नहीं Perfla ma'am says it all too, right? There are people. You're right on point, Perfla ma'am, what you're saying. Because कही कही है दीदी, आप कहिए then मैं कुछ कहना चाहूँ. नहीं नहीं, आई जस्ट वांटेड टू से वन पॉइंट. आयुष, जब भी आपको कोई कहना कि आपको केस पे कोई नॉलेज नहीं है, आपकी ट्वीट्स ही दिखा देना कि ये है मेरी नॉलेज. अरे मैं नहीं बोलता, मेरी ट्वीट्स बोलती है. दैट्स इट. अरे दीदी सुनिए मेरी बात सुनिए. I'll explain you. देखिए, first of all, I'm not here to prove anyone that what I am and what I'm having in my mind. Right? पहली बात तो ये. Second thing, मेरे नॉलेज होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आती, क्योंकि मैं तो फैक्ट्स दिखा रहा हूँ ना. आई एम नॉट सेइंग अबाउट द नॉलेज थिंग, आई एम शोइंग द फैक्ट्स. सेकेंड थर्डली, ये बात है कि आप किसी को, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नेवर कम्युनिकेटेड विद दीज काइंड ऑफ पर्सन, राइट? ना मैं किसी से कैसे भी उनसे एसोसिएटेड हूँ. आप कैसे किसी के बारे में ये बात कह सकते कि डोंट नो अबाउट द केस? You did it publicly, I did it publicly. Then you replied publicly, but in a very different way you replied it. ये बात आप समझिए. Because आप ऐसे रिप्लाई करेंगे तो फिर मैं आपको फैक्ट के साथ रिप्लाई किया. I never said anything about you. I replied with facts on truth and speaking on truth about Sushant Singh Rajput case. Because यहाँ पे बात सबसे मेन आती है सुशांत के केस की. As you said it, Professor, as you were saying it, Helidi, मेरे लिए मूवमेंट इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे मूवमेंट में कंफ्यूजन, हेडेक, as you're saying it, SSR and stuff, ये चीज मुझे हर्ट करेगी. आई एम देयर फ्रॉम 1000 days से मैं देख रहा हूँ. अभी जाके अगर ये ऐसा होता है, out of nowhere you're coming up, out of nowhere you're coming and saying this point of this timing and all after 3 years. इतने टाइम तक तो नहीं कहा. यही तो बात है. 3 years, I think say 2.5 years के बाद, 2.5 years तक तो ये टाइमलाइन की पॉइंट क्लियर हुई नहीं थी किधर भी. 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, या फिर 11 और 10 भी. सोचिए, इधर तक तो कुछ हुआ भी नहीं होगा. दिस इज, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं हुआ. सोचिए आप. You have to understand that you have to present that point of view in everyone, and I'll do that thing as I'm part of the movement, and I don't think I'm wrong in that. मैं wrong नहीं हूँ. इस सीजन से मैंने सेशन बनाया. देव सर, व्हाट यू आर सेइंग इट, देव सर, मैंने देव सर को भी कहा मेरा सेशन बनाने का मोटिव किसी को कुछ कहने का नहीं था. जी वो सरप्राइज दैट आई वन व्हाई दे डिड इट, व्हाई आई एम डूइंग दैट. तो मैं देव सर के पॉइंट पे मैंने ये कहा, मैं इस सीजन से कह रहा हूँ क्योंकि मैं एसएसआरएंस का सोच रहा हूँ. ऐसे एसएसआरएंस जो मैं अभी यहाँ पे आए, एसएसआरएंस रॉक्स एंड एवरीवन. सो आई एम थिंकिंग अबाउट दैट. Totally agree with Professor Harsh and Lasa ma'am. Yes, Priya ma'am, Fafla ma'am. Those people are who are intentionally here to derail the campaign. Right. Sushant was scared for his life. I'm first of all, मैं ये पहले कह दूँ हर्ष, I am never worrying about anything. मैंने क्या कहा, मैं फिर से रिपीट करूं. मैंने ये कहा कि मैं वरी करूं सुशांत के एसएसआरएंस के बारे में, द सेंस, और मैं नहीं चाहता उनका माइंड डिफरेक्ट. मैं तो अपने ने, मैंने अभी तक बात भी नहीं की थी. मैंने ये कहा ही नहीं कि मेरे लिए कुछ कहा है उस सेशन में. मैंने ये कहा कि उन्होंने कुछ फैक्ट्स के रिलेटेड गलत मिस इन्फॉर्मेशन दी. नाउ इफ बिकॉज आई वांटेड टू स्पीक ब्लंटली आफ्टर एसएसआरएंस टॉक, आई सेड इट. सो दैट्स व्हाई, बिकॉज मैं आज देख लिया तो मुझे बहुत हर्ट हुआ ऐसे कमेंट देख के. और यही तो एक बात है जो मैं बताना चाहता था आप सबको.
So and God bless you too, Rajbhai. Thank you so much for the blessings. You're doing well too. Thank you. Sushant was scared for his life. Sushant wanted to enhance his security. Sushant was looking at flight option, all the points. The fact you wanted to live. I have something on that. Let's show it. Because ये ज़रूरी है इसको शेयर करना. This is quite important to share it. Wait a second, बताइएगा मुझे क्लियर है कि नहीं point. Please do let me know the point is clear or not. Then I like you to see this thing because this point is uh, quite important and काफी पतला. ये देखिएगा आप. See this point. And first of all, I'll show you this point. Give me 1 second. बताइएगा. हाँ दिख रही है. 1 सेकेंड मुझे दीजिएगा. दिख जाएगी. Just give me 1 second and this will be there on stream about Furfla ma'am's comment. This will give us lots of clarity and this will give us lots of point too about what Furfla ma'am said it. So yeah, these are the points which are very much important and ये हमें बहुत सारी points देता है. Gives us many good points and many important points too. Yeah. That is why it is important and that is why we have to discuss about this thing. 1 second. Give me 1 second. तब तक कोई बात क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसे आ गया ना तो मैं वो रेडी नहीं था वो थिंग तो इस सीजन से. मैं ही बात कर रही थी अगर किसी को नहीं. हाँ, no worries, go and take your time. मैं फिर कॉल करके शेयर कर दूंगा तो आप रुक जाइएगा. हाँ, no problem. Yeah, so great discussion going on regarding the ambulances and stuff. Now, as said, crystal clear in everyone's mind, and you know what keeps us going is the case of Sushant Singh Rajput. Sushant Singh Rajput himself. You know, अगर कुछ भी हो जाए, सुशांत हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता. ये मैंने देखा हुआ है. So, you know, and that's the best part from this movement. Ki not just people from India are connected, but people, you know, ऐसी countries से connected है जहाँ पे maybe once for all maybe 2 theaters पूरी country में होंगे जो Bollywood movies दिखाते होंगे. So I'm so glad that, you know, this pure soul has connected millions and millions of people together, and still people are connected fighting for his justice. And when we talk about the main goal, it's just one. It's just, you know, that flatmates Is it should punish. पूछना चाहूंगा क्या आप सबको दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा. पहली दी आपको नहीं. पहली विशाल भाई प्रोफेसर. स्क्रीन पे मुझे आयुष नजर आ रहा है, विशाल, हेली और मैं, और कुछ नहीं नजर आ रहा. अच्छा 1 सेकेंड फिर मुझे दीजिएगा. तो मैं भी या तो फिर ये देखिए ये है. अभी इस चीज़ को तो कोई मुझे नहीं लगता कोई डिसएग्री करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट मैं क्लियर कर दूं क्योंकि इस पॉइंट को तो मैंने तो बहुत टाइम और सैंडी भी बहुत बार इस पॉइंट को स्पेस में रखते हैं. आई पर्सनली कीप इट, इवन सैंडी कीप इट टू. तो द रीजन बिहाइंड दैट इज जस्ट वन. एक्चुअली एक ही रीजन है, एक ही पॉइंट है. व्हाट इज द पॉइंट?
क्योंकि ये फैमिली के, अरे एक सेकेंड यार, वो शेयर तो हो जाए। आई क्रिएट दीज काइंड ऑफ सस्पेंस और आप फिर व्हाट इज द पॉइंट, सस्पेंस खराब कर देते हैं। आप अब्बास मस्तान की पिक्चरें नहीं देखते? Sorry, but Ayush, please Arnab Goswami, थोड़ा कम बनो प्लीज, जल्दी अरे जल्दी स्टार्ट करो. अरे बाबा, हाँ कर रहा हूँ अभी। वो मेरा क्योंकि ये इमेज जो है ना वो थोड़ा अटक गया है, इस रीज़न से वो शेयर नहीं हो रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट शेयरिंग, सो इट टेक्स टाइम, but I am very fast, so I am sharing it right now with all of you. So you will see this particular FIR, what family filed it on 25th of July. Do you know it, right? Everyone know about it. और हम सब इस बारे में हमेशा से बात करते आए, what family did it, what family की statements, हर एक पॉइंट हमेशा से। और ये तो शेयर ही नहीं हुआ है, सस्पेंस चला गया मेरा। फिटे मुंह, गलत हो गया है तो नहीं हुआ ना, अभी हुआ, अभी राइट, अभी दिख रहा है ना, राइट? यस, पढ़ते हैं, अभी अभी दिख रहा है. लेट्स रीड इट आउट। Scared of life, you said it, right? लास्ट, मैं पहले इस पे कमेंट डाल देता हूँ, I'll add a comment there. तो कमेंट डालूंगा तो ये छुप जाएगा, तो एक बार कमेंट डाल देता हूँ। इस कमेंट के ऊपर ये मैंने चलाया है, ओके? तो I'll just edit now. पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़े? हाँ, रिया को लगा, यहाँ से पढ़ते हैं। जब रिया को लगा कि सुशांत सिंह उसके उसकी इस बात को नहीं मान रहा है कि बॉलीवुड को छोड़ने की बात को, और वो धमका रही थी, तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो। उसके बैंक बैलेंस भी बहुत कम हो गया था। इस पर रिया ने सोचा कि अब सुशांत सिंह उसके किसी काम का नहीं रहा है। तभी रिया, जो कि सुशांत के साथ रह रही थी, दिनांक 8/6/2020, 8 ऑफ जून 2020, वो सुशांत सिंह के घर से काफी सारे सामान, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, सामान, केस, जवाहरात, लैपटॉप, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके पिन नंबर, जिसमें सुशांत के अहम दस्तावेज, इलाज के सारे कागजात लेकर चली गई। एल मेरे बेटे सुशांत सिंह को फोन नंबर से अपने फोन में ब्लॉक कर दिया। सामान के जवारा, लैपटॉप, पासवर्ड एक इम्पोर्टेंट थिंग है सोशल मीडिया के एंगल में, क्रेडिट कार्ड, उसके पिन नंबर, ये सब कुछ लेके चले गए। सोचिए आप, कितनी सारी पॉइंट्स ये बताता है। दिस सेज इट मैनी पॉइंट्स, राइट? बहुत सारे पॉइंट्स ये दे रहा है और देता रहेगा। आगे भी पढ़ सकता हूँ, पर ये पॉइंट्स को आप लीजिए कि सुशांत किस चीज से ज्यादा स्केर्ड थी? रिया चक्रवर्ती की टैक्टिक्स से। फैक्ट के साथ बात करनी थी तो फैक्ट के साथ की, वो भी पटना की एफआईआर के साथ। लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स है आज का टाइटल, तो फैक्ट्स। Sushant was scared for his life. Sushant wanted to enhance his security. Sushant was looking for fight. Scared for his life because Riya उसे इस चीज से धमका रही थी। At the same time, लास्ट की लाइन पढ़ेगी तो और समझ में आ जाएगा। इस बात दिनांक 8/9/2020 की रात दिशा, जो कि रिया ने ही सुशांत सिंह के पास
अस्थिर तौर पर सेक्रेटरी नियुक्त की थी, उसने आत्महत्या कर ली, जिसके कारण मीडिया में ये खबर चलने लगी, जिससे मेरे बेटे को बहुत घबराहट हो गई और जिसके चलते मेरे बेटे ने रिया से संपर्क करने की बहुत कोशिश की। सुनिएगा, लिसन टू दिस। लेकिन रिया ने मेरे बेटे का फोन नंबर ब्लॉक कर दिया था और उसके संपर्क नहीं हो पा रहा। बेटे के अंदर ही अंदर ये दर्द सता रहा था कि रिया इस आत्महत्या के लिए मेरे बेटे को फंसा देगी। ये दूसरे में पर मैंने उसको पूरी पढ़ा था। समझ गए सुशांत कि रिया की टैक्टिक थी ये न्यूज को लीक करने की। अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, this was the tactic of Riya leaking this news. So that says it all, I believe. That says it all, and that presents every of the facts regarding the बहुत सारे facts वो बताते हैं। तो ये point थी जो मुझे रखनी थी इसके regarding, and I wanted to keep it and I wanted to present that point in front of everyone. That was very very much important और ये बहुत ही ज़रूरी था, Hi इसलिए मुझे शेयर Ayush. किया। Hi Ayush. हाँ I नमन, came back and I just finished my dinner and just wanted to came back to the movement. So hope it all is going well as usual. You are commendable. You handled it so beautifully. The spaces and discussion of Sushant like a professional pro now. So I'm very happy and I'm very he'd be very proud that you have with the dedication you're fighting for justice for him, and because of you I get so motivated to even roll louder and louder each day for 302 of SSR. 302 for SSR. Yes, yes. Your words really means a lot, as I said it. बस यही है, देखिए दिल से देखिए मैं आप सबको भी थैंक्स कहता हूँ बिकॉज I really want that you all should be proactive and you all should raise something like कि कोई भी यहाँ पे जैसे एल्फी मैम सेड वंस, मुझे अच्छे से याद है, एल्फी मैम ने एक बात कही थी कि मिस इन्फॉर्मेशन destroy this movement, right? And I like that point. मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ख़राब करता है इस मूवमेंट को। सो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है, नेवर एवर स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन। सो मैंने आज जो ये फैक्ट्स शेयर किए हैं आप सबके साथ, I what know, I I've know. You don't talk without evidence. We always need to have evidence to back up what we are saying. So I'm very happy that you have all these evidence. या फॉर्चुनेटली हमारे पास सब कुछ है तो फिर हम शेयर कर रहे हैं। जैसे देखिए ग्रीन बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा कहा कि मैं देखिए मैं कभी नहीं करता, आई नेवर डू इट, यू अंडरस्टैंड इट बिकॉज यू आर देयर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से है, दिसंबर के टाइम से। ये देखिए 316। More than December. I think more than December. हाँ I've ऐसे been there since दिसंबर के टाइम से। October. I get with you guys. यस यस आई नो इट, आई रिमेम्बर I एवरीथिंग। got आप married बहुत and I got I'm been longer than December, October, say I think, because I got married in December. So I was away for a bit and then came back. So but I think I know being in this movement because of you. You gave me so motivation. Like I say that एक दिन अगर वो ना करो कुछ होता है कि सुशांत के लिए वो नहीं होता कल तो when I missed you. I think you didn't come live yesterday, so I was missing you and drawing for Sushant. So that's why I wanted to come today. यस यस अनम मैम, उसका रीज़न यही होता है कि मैं देखिए आज ऐसे यूट्यूब सेशन किया तो आई वांटेड टू बी 100% श्योर एंड थोड़ा और फैक्ट्स को लेकर आए। वैसे आज देखिए मैंने 5 वीडियो शेयर किए, सिक्स्थ भी है और उसको क्या करूँ, आप सब अभी समझ ही गए होंगे कि 5 वीडियो शेयर किए। तो वो 5 वीडियोज़ में से मुझे 3 मिले थे, 2 कल मिले, 2 वीडियोज़। तो जितना मुझे कल, मैं ऑलरेडी बिज़ी था, लेट आया तो फिर मैंने देखा कि आज कल मतलब यूट्यूब सेशन मतलब टुडे व्हेन आई एम डूइंग इट टुडे राइट इन फ्रंट ऑफ यू, मुझे आज करना ही है और फैक्ट के साथ करना है क्योंकि कुछ हुआ, कल फिर से हुआ, तो मैं सोचा नो आई हैव टू डू दिस थिंग, तो लेट्स डू इट, लेट्स जस्ट प्रेजेंट इट। तो उसके लिए मैंने और 2-3 वीडियो सर्च किए एंड आई गॉट दिस। तो उसमें टाइम चला गया, फिर मैं आज आपके सबके सामने आ गया। फिर इवन आई वाज मिसिंग यू मैम, आई वाज मिसिंग हनीदी, आई वाज मिसिंग विशाल भाई एंड एवरीवन। सो या
ये बात है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है. वेरी वेल सर. एम्बुलेंस कमिंग इनसाइड मॉन्ट ब्लैंक, 316 को अंदर रिवर्स लेके आ रही है. ये आज हमने शेयर किया, मतलब 3 o'clock के अराउंड, क्योंकि रिवर्स लेने में बहुत टाइम लगा. ऑलरेडी उनका अटक गए थे वो गेट पे, जो वीडियो में मैंने देखा है. तो फिर वो समझी 3 o'clock, 3:05 के अराउंड वो आए थे, और उनको 3:16 के अराउंड अंदर एंट्री मिल गई. ओके, दे गॉट इट एंड दे गॉट इट. सी यहाँ पे भी खाना दिखता है साइड में. आई एम फूडी, आई एम सी एवरीथिंग, फूड फूड फूड, एवरीथिंग, एंड आई लव इट. सुशांत भी दिखते हैं, खाना भी दिखता है, और कुछ नहीं. Can I ask you a question, Ayush? Sorry if Haley, do you want to say something, but all I want to ask is, can we all do a session on that mystery girl that came in and took the bag? If you remember that there was some mystery girl and a man who took the bag away as well once the Sushant's body was going into the ambulance. So from the apartment. So we need to do a session on it. That who was the mystery girl and the person who took the bag and everything was in the bag. And so oh, professors here, hi Professor, namaste, jai hind, jai bharat, and 302 SSR professor, hope you're well. Hello, Anna ma'am. Hello, how are you? 302 for SSR. So good to see you. 302 वर्सेस हाँ. मैम यस, मिस्ट्री गर्ल पे बिल्कुल सेशन फिर से कर लेंगे. हमने बहुत टाइम पहले किया था. मैं अगर अभी इन्फॉर्मेशन एक बता दूँ अनम मैम, मिस्ट्री गर्ल्स है, मिस्ट्री गर्ल भी है, मिस्ट्री गर्ल्स भी है. दो है, राधिका नेहलानी एंड मेघना चड्डा. राधिका नेहलानी इज क्वाइट 100% श्योर. मेघना चड्डा मेरे माइंड में, मेघना चड्डा, सॉरी चड्डा क्या कह रहा हूँ मैं, मेरे माइंड में 100% श्योर, राइट. बट वो चीज़ कंफर्म कौन कर सकता है? राधिका नेहलानी, हु इज विद मिस्ट्री गर्ल. द सेकंड मिस्ट्री गर्ल इज राधिका नेहलानी, जो हमने कंफर्म कर दिया. तो वो मेघना चड्डा ही है मेरे आइज में, क्योंकि शी वाज सिटिंग इनसाइड एंड शी वाज डूइंग इट इंट्रोगेशन एंड ऑल सीबीआई में. आ गई कि I think Anna ma'am is asking about the lady who came out of Ria's building, and while going inside, she was empty-handed, and while वो coming तो out, मान शिंदे की सेक्रेटरी थी ना, yeah, मानसिंडे की टीम से थी. उसका नाम था निकिता. एंड निकिता. या तो वो जब वापस आ रही थी तो we saw her carrying some bag, laptop bag outside. So उसके just बारे में wanted to. पूछे थे ना मम्मा. मैंने ज्वाइन करा तो मेरे को सिर्फ वही सुनाई दिया. तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क अनम जी. तुमने मिस्ट्री गर्ल टर्म यूज किया ना, तो मुझे माउंट ब्लैंक वाला लगा. No, yeah, I was talking about Mount Blanc, Professor, and I also wanted Okay. to know about the guy who was went with the stretcher to the ambulance. He also had a bag, and so he added it very kind of suspiciously to the ambulance. So I wanted to know that we should, who that person is and why was he acting very suspiciously, and even the girl who came in inside, the gate was closed, there no one was allowed to go in. Why was she allowed to go in? And so that's Absolutely. more that इस was पे सेशन suspicious करेगी. why. आप बोलो हर्ष. नहीं, वन डे विल डू सेशन ऑन दिस. ही खाली ऐड अप करते. गो अहेड, गो अहेड, क्योंकि मैंने नेम तो ले लिया, आपने भी एग्री किया प्रोफेसर, यू नो इट राइट. यही है ना, राधिका नेहलानी, मेघना चड्डा, एग्री Okay. करते हैं आप. So from the start, what Anam ma'am is saying is that Anam ma'am, that particular boy who you see running away to the gate, उससे साहिल. पहले अगर आप देखें तो that is the ambulance attendant and साहिल. Sahil. अब आप कंप्लीट करो. आप you know नहीं, बस how ऐसे the एक्नॉलेजमेंट how is करते. it गो अहेड, गो अहेड. so yeah, just wanted to say that that's the ambulance attendant and he's taking the uh, portable stretcher which is folded, and then he took it out. He went running and took it out and kept it in the ambulance which was parked outside the Mont Blanc. And your second question was the mysterious girls. I also keep wondering that on what basis were
those two girls allowed inside at the first place. Now we understand that those two females, as you said, you know, are Meghna Chadda and Radhika Nilani. Uh, there's no doubt about that. But the question comes is, why were they allowed? On what basis? I mean, you've closed the gate, and there is, if there is any investigation inside, then how can you allow those mysterious girls to enter? On what basis are you allowing those mystery girls inside? Are they part of any investigation team or something? Which they were not, right? They were probably just talking to somebody uh, right next to the ambulance which was parked inside. So uske baad, matlab, they were talking to each other, and then they came out. They didn't even go towards the building, or tried their way up. So it's quite strange that why were they actually allowed, and what was the purpose? Exactly, exactly. And also, I wanted to kind of add, like, the with us, because Sushant died on a COVID time when there was COVID was very high. That time people were wearing masks, so that really didn't help us to know exactly, because everybody was hiding their faces with the masks, and so they got away with it. Like, because of COVID, they were trying to save their faces, so we can't see the face of the girls as well because they were wearing masks. Yeah, see, those times, ma'am, they were COVID protocols. So every person, if you ask me, if I used to go out anywhere, I used to wear my mask, and I used to wear protective gloves as well. So that was protocol. Mm. So probably yes, that was one of the reasons why initially nobody could identify them. But later on, if you remember, Shibani Dandekar also tweeted, uh, you know, about the same, when people were speculating, okay, whether it's Simone, or whether it's Jamila Calcutta. Jamila Calcutta is Shovik's girlfriend, by the way. So people were speculating. So then things came in light, and that's how we came to know that's Meghna Chadda and Radhika Nilani. Okay, पर एक thank you. बात, yes, Yeah, yes, sure. no. No, no, continue, continue. I just wanted to thank Professor for sharing this. नहीं, इवन मैं भी वही कहने वाला था. आपने एक पॉइंट रखी है, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट ऑन दैट कि आपने वो पॉइंट रखी, क्योंकि इस पे मुझे डिस्कशन करना था. पहले आप ये भी जानते हैं प्रोफेसर, ये भी मैं कहा था, पर अभी देखिए उस पे भी कंफ्यूजन अभी भी होती है स्टिल कि कौन है मिस्ट्री गर्ल, राइट प्रोफेसर? वी आर क्लियर ऑन दैट पॉइंट, बट स्टिल सम पीपल आर कंफ्यूज्ड, यू नो इट राइट प्रोफेसर? तो व्हाई? बिकॉज हम लोग Yeah, क्लियर है फैक्ट्स exactly. के साथ. Yeah, people are still confused on as to you know who those mystery girls are, and uh, what are their names. So it's quite clear now. But by now, everybody should be. Initially, अगर ये होता 2020, so I can understand, because every person had different names. ये हो सकती है, वो हो सकती है. But then things got clear after 2000, in 2020 itself. So I think by now people should be on the same page about the mystery girls. There should not be any confusion. एंड सेकेंडली अप्रिशिएट मुझे आपको इस पॉइंट पे करना था, एज यू सेड यू मेंशन दैट थिंग. आई नो यू आर नोइंग अबाउट दैट, क्योंकि इस पे भी कंफ्यूजन सब कहीं कि मैं पॉइंट्स ये फैक्ट्स के ऊपर आ रही है ना. देखिए आपने क्या कहा, पोर्टेबल स्ट्रेचर लेके जा रहा था अशफक, रेड कैप का है. साहिल की बात वो जो अनम मैम कर रहे थे, वो जो क्रॉस हो रहा था पिंक कैप गाय विच इज देयर, वो क्रॉस हो रहा था फ्रॉम मिस्ट्री गर्ल. अगर मैं वो रखूं तो अशफक लेके जा रहा था पोर्टेबल स्ट्रेचर, दैट इज रेड कैप. वो लेके जा रहा था एंड ही वाज टेकिंग इट, एंड उसको क्या मिसअंडरस्टूड कर दिया, ही इज टेकिंग सम थिंग्स एंड ऑल इन ब्लैक बैग. तो थैंक यू, अप्रिशिएट यू फॉर टेकिंग दिस पॉइंट, क्योंकि ये अभी भी कह रहे हैं, still they are saying it, that he is carrying some bag and he is having something on that. So still it's really strange, right? Really, really very strange. Thank you for bringing that point. Appreciation for that. राना मैम, यू सेड इट राइट. और इस पे सेशन करेंगे आप चाहते हैं स्पेस में या तो यूट्यूब में, विल डू इट. एंड यूट्यूब में दिखाना है क्योंकि इसमें तो फिर यूट्यूब में ही सही रहेगा, तो विल डू इट डेफिनेटली राना मैम.
Thank you so much, Ayush, because I thought once you know like what was happening, why would they tampering the evidence? Like वहाँ तो ऐसे मच्छी बाजार लग रहा था, in front of Sushant's body, that there were so many people in the room that's not supposed to be there, and especially in COVID times, and that why would they tampering the evidence? So it just comes to like very suspicious kind of a thing that you think why were they doing what they were doing. Yeah, no doubt about it. We have to raise these kind of points for these suspicious people. बिल्कुल, ये पॉइंट्स तो है और इसको हम रख रहे भी हैं. तो ये मैंने आज ही एम्बुलेंस का एक वीडियो शेयर किया. देन आई शेयर्ड सम ऑफ द facts of, yeah, someone wants to say anything? No? Then I Ayush, shared. can I say just one point if you don't mind? Yeah, yeah, you can. Whenever you discuss about this mystery girl, I'm not sure whether I'll be able to join or not because of my Monday to Friday work from office. Apart from the mystery girl, the mystery watchman as well. I'm sorry to say this mystery watchman because post 14th of June, the watchman who allowed that mystery girl to enter Mont Blanc is never been seen at Mont Blanc. So, is Yeah, I he heard that as well. passed away? Is he killed? Has he passed away? Or he's been given money and asked him to get lost from here? Never know. And has CBI approached that person because उसका फेस तो क्लियरली दिख रहा है जब उस मिस्ट्री गर्ल को वो अंदर एंटर करने दे रहा है. Has CBI caught that person and spoken to him? Please ये discuss करना. Definitely, I'll discuss it. And I'll do it on that day only when you will be there. Don't worry. आप ऐसे आपके points तो important है, no doubt about it. And we'll keep that point and we'll discuss about it. रखेंगे हम एक साथ मिलके रखेंगे, डिस्कस करेंगे. रखनी भी चाहिए एक साथ मिलके. तो ये बात है, इसको पॉइंट्स टू पॉइंट्स रखते हैं. एंड या मुझे कुछ शेयर करना था एक्चुअली. व्हाट आई वाज, मैं गया ट्विटर पे एंड कुछ शेयर करने गया, भूल गया मैं समथिंग. ओके, आई विल वेट फॉर अ व्हाइल जब तक याद आए. बिहार पुलिस से 50 लाख वॉच सुशांत आइटम्स हो मिसिंग. तो उसमें से यही क्रेडिट कार्ड, बिलोंगिंग्स, जवारात का. देखिए फफला मैम शी सेज केकिंग का सेज जवारात, सो ऑब्वियसली समथिंग होगा, कुछ समथिंग इम्पोर्टेंट ही होगा. No doubt about it. They said in that. So yeah. And please let's do digital protest and write to CBI. Can we? No doubt about it. We can. Actually, I like to explain you last one. And I'll come to Fafra ma'am's last point. What she said it right now. देखिए लासा मैम, what you are saying it, मैं आपको बताता हूँ. हमने लिखा था नवंबर में. सीबीआई को हमें रिप्लाई नहीं मिला. जैसे कह रहे हैं फफला मैम, उन्होंने लेटर्स लिखे हैं बट कभी भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है. तो अभी हम देखिए, या तो हम डीप में जाए, और वो चीज़ मैंने कहा था एनसीबी की अभी ईडी की एक्टिविटी सॉरी हुई थी, उसके बाद हम करना चाहेंगे. डीप में जाके उनसे रिप्लाई कैसे भी करके मांगे. उसके लिए आई हैव प्लान समथिंग. तो लिख तो लिया है. इफ़ यू हैव नॉट रिटन द ग्रीवेंस एंड ऑल, आप लिख लीजिए. फिर उसके बाद क्या करना है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो मैं आप सबको बताना चाहूँगा लास्ट समय. इफ़ यू आर एबल टू डू दैट थिंग देन ओनली यू कैन डू इट. मैं तभी वो सबको मास में नहीं बताया था क्योंकि बहुत लोग शायद नहीं करें. तो इस रीज़न से तो मैं सिर्फ सिलेक्टिव पीपल या फिर मैं स्पेस में बताऊँगा, आप सब अपने हिसाब से कर दीजिएगा. और लाइक सबको करने की ज़रूरत है. तो या बट वी कैन राइट इट. बट पूरी प्रेशराइज के लिए उन तक पहुँच जाता है पर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है. बहुत ज़रूर जाएगा, सेंट दिखाएगा, सेक्शन को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा. तो या यू कैन राइट इट. आई विल शेयर दैट थिंग विद यू. मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा. दैट विल बी वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट. हु टोल्ड media that Disha DS was Sushant manager? I've only found one article that said Varun Sharma's manager. Yeah, I was seeing that article for Flaman because I was in search to find that कि कोई news मुझे मिल जाए
5 o'clock की दिशा की, तो उसमें मुझे वरुण शर्मा वाला आर्टिकल एक ही दिखाई है, राइट ऑन पॉइंट, आई एम फॉरगॉटिंग दैट पोर्टल नेम, बट मैंने उस दिन ही देखा, मैं शॉक हुआ कि ऐसे भी आर्टिकल एक आया था, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। बट कुछ लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत वरुण शर्मा का साथ में नेम लिखा है, और कुछ लोगों ने तो वरुण शर्मा का लिखा ही नहीं है। तो यार, तो No, इट्स रियली रियली she was manager for other people as well, not for Sushant. So she managed all the other actors as well. She managed Aishwarya Rai as well. Because I saw a picture, a video on YouTube that she's walking at the airport with Aishwarya. So when Aishwarya came from somewhere and she was going to the संदीप car, सिंह, राइट? yeah, Sandeep Singh and her, they were taking Ashwarya ride to the car from from the airport. So she was managing all the other actors as well before Sushant. So they must, and this can be true that she could be a manager for Varun Sharma as well in the past. ऑब्वियसली वो तो है ही। तो फोफला मैम का ये राइट ऑन पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट ऐश्वर्या, थैंक यू। तो देखिए, फोफला मैम का पॉइंट ये है कि एक आर्टिकल में वरुण शर्मा का लिखा है, बट बाकी सब में सुशांत का क्यों लिखा है? हु टोल्ड मीडिया? तो वही प्रियंका दी का भी क्वेश्चन है, आखिर कहाँ से मीडिया तक ये पहुंचा, ये सुशांत के मैनेजर जो सिर्फ एक मर्तबा दिशा से मिले हैं, ये प्रियंका दी के वर्ड्स है। सो इट्स वेरी स्ट्रेंज, और इस पे हमने स्पेस में डिस्कस तो किया ही था, 9 आवर्स की स्पेस थी, वो डिस्कस्ड इट। सो कभी करेंगे स्पेस में, फिर से करेंगे, यूट्यूब पे भी करेंगे। बट मेरा यही, मैं भी स्ट्रेंज, मुझे भी, मैं भी कंफ्यूज हूँ। तो क्या उसमें क्या रिया का हाथ आता है? आंसर करना तो मैं फिर मेरा, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू ये है, क्योंकि ये न्यूज़ देख के जो फैमिली का कहना है कि जैसे ही दिशा की न्यूज़ है, सुशांत ने रिया को फ़ोन किया, रिया ने फ़ोन पे ब्लॉक किया, उनसे संपर्क नहीं हुआ। फिर सुशांत के अंदर ही डर बैठा था कि रिया सुशांत को विशा की जिस केस में फंसा ना दे, एस केस व्हाट इज रिटर्न। तो ये चीज़ मुझे लगती है कि रिया की पीआर इन द सेंस, मतलब बॉलीवुड कह सकते हैं, उनका ही काम था। दैट्स व्हाट माय टेक इज। तो या, तो मैं ये बताना चाह रहा था, एक्चुअली यही दिखाना चाह रहा था, एंड इस पॉइंट को मैं रखना चाह रहा था। दैट वाज क्वाइट इम्पोर्टेंट, एंड नाउ वी आर कीपिंग दैट पॉइंट रिगार्डिंग दिस एम्बुलेंस, एंड इवन 4 न्यूज़ जो शेयर की हमने, वी शेयर द 4 न्यूज़ एंड ऑल। तो 4 न्यूज़ पे भी हमने पॉइंट रखी है, we have kept that point, and that is quite important for all of the people. So yeah, इस पॉइंट को रखना चाहिए और डिस्कस भी करना चाहिए इसके बारे में, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो किसी को कुछ और कहना है? क्योंकि मैं को जो दिखाना था मैं भूल गया हूँ, अभी तक मुझे याद नहीं आ रहा। मैं ट्विटर पे गया एंड आई वांटेड टू शेयर स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू, देन आई फॉरगॉट इट, माइंड से ही निकल गया है एकदम से। तो यार, मैं किसी को और कुछ कहना है तो प्लीज़ कहिए, देन आई विल स्पीक। और मुझे कुछ याद आ गया, बताइए क्या याद आ गया? कि ये स्पेस नहीं है, इसको तो शॉर्ट रखना था, और हम तो चलाते बैठ गए। तो भाई इसको शॉर्ट रखने का यही तो है ना, होता नहीं है। Good, जैसे you do it long. You do it, acha, you do it long so that I can join you after dinner. And Professor as well is free because we want his input as well. And, I want to join the space as well. So it's good that you do it bit longer so that people can join bit later as well. सी, देखिए, आप सब देखिए जो मुझे कहते हैं कि जल्दी से सेशन छोटा होना चाहिए। अरम मैम ने कहा कि सेशन लंबा होना चाहिए, आज से तो मैं 6 आवर्स के सेशन करेगा जैसे स्पेसिस होती है। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। तो ये डोंट टेक इट सीरियसली, क्योंकि यूट्यूब में समझ सकता हूँ शॉर्ट रखना ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट टू कीप इट शॉर्ट, एंड जैसे सब To the सुनता है, point, to the point. टू That's द it, that पॉइंट, to टू the द point. पॉइंट। Showing the evidence and to the धन्यवाद। point. Hmm. हाँ, टू द पॉइंट। फिर हम लोग स्ट्रीम शेयर करते हैं ना, तो फिर वो कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। तो टू द पॉइंट ऑन सुशांत सिंह राजपूत केस, आई कैन से, देखिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आ जाती है, क्योंकि स्ट्रीम में फिर आते हैं, तो फिर बहुत लोग ऐसे करते हैं कि खाली ऑन पॉइंट कुछ डिस्कस करके देन दे लीव इट। सो
I'd personally like to hear from everyone. So वो है आज भी जैसे थोड़ी सी डिफरेंट पॉइंट डिस्कस हुई 14 के रिलेटेड ही, बट मेन पॉइंट तो हमारा यही था कि हमने आज फैक्ट्स दिखाए टाइमिंग को लेके, और वो थिंग क्लियर है, दैट इज क्वाइट क्लियर। So I liked it, Anuma, and personally what I feel, अभी आप सबको किसी को कुछ कहना है कहिए, फिर हम इसको रैप अप करते हैं, फिर कल मिलेंगे। मुझे कुछ कहना है। I know LED will wants to say something. I knew LED is gonna say it. Go ahead चले Uh, फिर be- before you wrap up the space, and I space। know I'm sorry, YouTube session. So sorry. Space की बोलने की आदत पड़ गई है YouTube session. And if Harsh can go ahead and come on the speaker for 5 minutes and share his experience, that would be great about the interview. If he's free and if he can go ahead and come for 5 minutes and share his experience about his recent interview with about acting career about Sushant Singh Rajput, that would be super great. अमेजिंग इट विल, मैंने स्ट्रीमयार्ड लिंक तो करके रखी है, आई हैव डन इट, सो एनीबडी कैन जॉइन इन। हर्ष भाई आप भी कर सकते हैं, तो लाइक टू हियर फ्रॉम एवरीवन। Even Professor want to say something, we will definitely like to know. But anything you think that we should do a session on, or anything that we must have missed out, or Ayush must have missed out on anything. No, I think uh, as far as getting the points and facts, Ayush did a very good job by getting these things out. It gives a very clear picture about the timeline, and hoping that everybody comes on the same page. I always tell Ayush that, if you are going on YouTube live, just talk point to point and keep it short. The reason being is just talk about what on that particular point, uh, what you're getting on the table, and then probably everything else can be chatted over the spaces. स्पेस। As far as this movement is concerned, if you really want to know my perspective, the entire concentration should be on Arup Kumar Shah, because he's I think, one of the most important person right now, prime witness, if you ask me. Rest, everything we keep talking about, pressurizing the agencies, the government, that's okay. That's perfectly fine. But the main concentration should be on Rup Kumar Shah, because his statement, uh, getting recorded with the authorities, is really, really important. So I think more concentration should be on that. If there can be any activity on Rup Kumar Shah, that'll be great, so that again, this particular topic can resurface and people start talking about it. For me, he's a crucial uh, witness, the prime witness in this case. मतलब अरे इतना मुश्किल नहीं है अंडरस्टैंड करना. आप सोचो, there are very selected few things which are key, important in this case. And if you just write it down on a piece of paper, your number one would be Rup Kumar Shah, and then followed by other people, right? Like the key maker who's giving us the timeline, and ambulance attendants, and other people who are giving interviews. But key players, these. Thank you. Amazing, Professor. I got your point, and you know my Thank, point of view too. thank you, Quickly. thank you, Professor Cook. Kind of we will look into it. Like, I also think that we should do a session on that as well. मैं बहुत खुश होता हूँ एक्चुअली एक बात से, आई रियली गेट हैप्पी, एंड प्रोफेसर नोज अबाउट इट। प्रोफेसर के हैंडल में, एंड आई थिंक मेरे हैंडल में, एंड हेली दी के हैंडल में, हेली दी ने भी 2 ट्वीट, रूप कुमार शाह जी के 4 to 5 tweets है, राइट प्रोफेसर, यू हैव डन इट। द रीजन बिहाइंड दैट बिकॉज वी कंसिडर हिम important, right? We consider him very much important. Yeah. And okay. You want to say something? No, no, I'm just acknowledging you. Yeah, okay.
वो 100 नहीं है ना प्रोफेसर, कुछ कीजिए यहाँ पे, कैसे चलेगा? 100% होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी मच रॉन्ग। देखिए मैं 100% अभी मैं डालता हूँ यहाँ से, आई जस्ट पुट इट सो दैट आप सबको देखिए, ऐसे डालिए यहाँ पे, कमेंट सेक्शन में डालिए यहाँ पे, मैं देखिए लैपटॉप से डाल रहा हूँ, डूइंग इट फ्रॉम माई लैपटॉप, ऐसे 100% डाल दीजिए सो दैट हमें यहाँ पे कोई क्लैरिटी मिल जाए। दैट वुड बी ग्रेट कि यू आर एग्रीइंग राइट, इफ़ यू एग्री इट, और लिख दीजिए 100 आयुष, 100 ऐसा, जस्ट लाइक दैट, कि उनकी पॉइंट से एग्री, दैट्स लाइक दैट। ये एक मेरी सजेशन है कि कैसे इसको यूटिलाइज करना है, हमेशा से हम करते हैं हर एक प्लेटफॉर्म को। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ ग्रुप कमर्शियल, तो ये देखिए हम लोग क्यों ट्वीट्स करते हैं, इसी रीज़न से करते हैं। एंड पर्सनली विद इट सेशन ऑन मैम, हमने सेशन किए थे इस पे स्पेसेस में, राइट, स्पेसेस में सेशन किए थे, 5 to 6 सेशन किए। ऑब्वियसली ये न्यूज़ ऐसे आई तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता था, हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे। हेरिदी नो अबाउट इट, विशाल भाई एंड प्रोफेसर आई नो यू नो अबाउट इट। और जो स्पेस में रेगुलर मैंने कहता था कि कुछ नया आ रहा नहीं है, तुम वही बात पे बात करें, कुछ नया आएगा तो हम कुछ और बात पे एक्साइटमेंट के साथ बात करेंगे। फ्यू वीक्स बिफोर आई वाज सेइंग दिस पॉइंट, जब रूप कुमार शाह जी के फ्यू वीक्स बिफोर, इन द सेंस कि कुछ आया नहीं है तो एक्साइटमेंट नहीं आ रही है बात करने में, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। देन सडनली रूप कुमार शाह जी comes up and the excitement level comes up to, and everything comes up in discussing our Sushant Singh Rajput case. तो 5 to 6 sessions किए, regularly interviews, numerous interviews, I can say, numerous is not the right word, more than 20, more than 20 interviews ये रन एंड सब इंटरव्यूज़ पे हमने बात की, डिस्कस किया, सब में एक ही स्टेटमेंट है, दैट्स द बेस्ट पार्ट, ही इज़ नॉट चेंजिंग द स्टेटमेंट। तो बहुत ज़रूरी है इन पे बात करना, इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आई वॉज अबाउट टू शो समथिंग रिगार्डिंग रूप कुमार शाह जी, बट देखिए अगर मैं कहूँ मेरे पास अभी 3-4 टॉपिक्स है अनम मैम, 3-4 टॉपिक्स टू कवर इट ऑन यूट्यूब, तो वो थिंग मैं रेगुलरली कर सकता हूँ। आज मैंने किया है, आई विल शेड्यूल द लाइफ फॉर टुडे टू, एंड आई कैन डू इट टुडे ऑल्सो आफ्टर द स्पेस, इफ़ यू से ऑल दिस थिंग्स, अगर आप कहते हैं तो, क्योंकि स्पेसेस इंपॉर्टेंट है। स्पेसेस में एक दिन करके या फिर एक दिन लाइव करूँ कि हर दिन मैं स्पेस के बाद लाइव करूँ, व्हाट यू से ऑन दैट? ये I आप सब I think you should do space on um after. So you do YouTube one day and then next day you do space. I think alternate Professor days, alternative days. Yeah, I think Professor, what do you say? Would that suit as well? when I like to ask Haridi and Vishal Bhai and everyone and the listeners में कहीं कहीं प्रोफेसर, anybody can give me any suggestions regarding that, क्योंकि मेरे माइंड में ये है तो बस, क्योंकि आप लोग कंफर्टेबल होगे कि नहीं, मुझे लगता है कि आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होते हैं ना। व्हेन आई स्टार्ट द स्पेस एंड आफ्टर दैट यू कम अप इन द यूट्यूब सेशन, देन अगर मैं स्पेस करके यूट्यूब सेशन करूँ तो दैट्स व्हाट माय टेक इज। स्पेस स्टार्ट करके यूट्यूब सेशन करने का मतलब ये है कि मैं चाहता था आप सबको यहाँ से, जैसे हुआ भी है, और इस स्पेस में 10 पीपल थे, लेवल पीपल थे, तो फिर 10 पीपल के लेवल पीपल यहाँ पे आ गए यूट्यूब पे, तो स्टार्ट में ही ज़्यादा अच्छे से लोग ऐसे साइलेंस इन द सेंस जो है स्पेस में वो आ जाए, उनको नोटिफाई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े, वहाँ से ही हम पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे दें, जस्ट लाइक Pick and drop service. कौन सी सर्विस? Pick and पिक drop. एंड पिक एंड ड्रॉप। Pick and drop. Okay, so Yeah, you good sure one, good one, funny. good one. For a lighter moment, it was good one. Pick and drop. थैंक यू। Yeah. So you can do your spaces and see the main idea of doing live is that you want to show something to the या public, right? People who are in this moment, something very interesting. Where in वेरी spaces इंपॉर्टेंट, sometimes things are not noticeable. On live, you have an opportunity to discuss with fellow SSRians at the same time you're running your material, your videos.
or what you want to show, any photograph or any kind of material. So you have that opportunity. uh, there are two ways. One is that you can tweet about your life and people will know, and another is that you, like you said, you can start your space and then you can probably, do your space for an hour and then say, tell people as they join to move to YouTube because there is something interesting you would like to show them. So that is that also. तो वो भी कर सकते हो आप. It entirely मतलब depends आप on. लोग सब कंफर्टेबल है ना इन द सेंस, मेरा क्वेश्चन ये है, Yeah, ऑल we ऑफ यू are. आर कंफर्टेबल, I am too. So I like this Yeah. you idea. and Professor, That, you Idea are is good. idea is good. I mean, mm, but मेरे माइंड see, में आई there has to be a go back also. I mean, since you can do this also, that now we are going to from space to live and keep it short and to the point and just wanted to show you this and let's go back to space. ऐसा भी कर सकते हो. It's just an option. I'm which came in my mind. Whatever you know gets you going, man. yeah, it's like a pick and drop, like he said. Like he can just. Yeah, pick and drop was a good one. yes. तो yeah, all are comfortable, that's what my मेरे यही एक पॉइंट की माइंड में, तो मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे माइंड में कुछ वीडियोस है दिखाने के लिए, और मैं कल आज स्पेस भी करना चाहता हूँ। अगर मैं स्पेस स्किप कर दूंगा तो मेरे एक गट फीलिंग, मेरे एक उसको हर्ट होगा क्योंकि स्पेस से ही सब कुछ स्टार्ट हुआ था। तो आई कैन स्किप द स्पेस एंड स्टार्ट दिस लाइफ फॉर दिस, बट मैं चाहता हूँ कि स्पेस में भी हो। तो Yes. On So that note, हेली ने आपसे कुछ पूछा है बैक स्पेस पे, तो प्लीज इफ यू कैन चेक दैट. मैंने आई एम मैं यहाँ पे या बैक स्पेस में पता नहीं यहाँ पे अरे बैक स्पेस. ओके ओके, I know नहीं she नहीं didn't कुछ, chat here. She didn't chat here. She went to Twitter. I personally I eat everything, so I don't know about others. But if you have eaten टुंडे की सब्जी, टुंडे if I pronounced it right, तो मैं वो खाया आज मैंने, so मैं सब I कुछ think she. खाता हूँ। No, I think she's asking you what do you have to do all the spaces and this motivation and all the dedication you're doing, ये for कहाँ such. पूछा है? I think that's her point. I can ask her like what was her point of asking you what do you eat? Oh, like so there must be. हाँ, अच्छा अच्छा, मैंने तो ऐसा लगा क्वेश्चन है क्या खाया, तो मैंने कहा मैंने टुंडे की सब्जी खाई। No, 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 no. She's asking in that sense कि तुम्हें इतना dedication और इतना power कहाँ से आता है to do the spaces and to raw for Sushant. डेडिकेशन एंड पावर तो पहली बात तो स्ट्रेंथ तो खाने से आती है, और अलग से स्ट्रेंथ देते हैं, कौन देता है? सुशांत सिंह राजपूत, हमारा सुशांत सिंह राजपूत। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज देयर। सो सुशांत देते हैं हमें स्ट्रेंथ और आगे बढ़ते। और मैंने अगर मैं कहूँ पर्सनली व्हाट आई फील, एंड मैं कहता है हमेशा से, मैं कभी कभी लो फील करता हूँ तो फर्स्ट आई फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सैंडी। सो सैंडी मुझे कहते हैं कि नो यू डोंट हैव टू स्टॉप, शी इज़ नॉट देयर एक्टिव ट्वीट्स में, पर स्पेसेस में और इसमें नहीं है यूट्यूब पे। बट ट्वीट्स में आप देखते हैं उनके ट्वीट्स आते हैं, आप सब रीट्वीट भी करते हैं। सो और देखते रहते हैं सब, शी सी इट एवरीथिंग, शी विल कम बैक सून ऑन स्पेसेस एंड लाइव एज एवरीवन, मोस्ट ऑफ पीपल वर आस्किंग इट। तो है मोमेंट में आपने ट्वीट देखा तो शी इज़ परफेक्टली फाइन। सम वरीड कि उनकी हेल्थ अच्छी है कि नहीं, पहले उनकी हेल्थ खराब थी बहुत टाइम पहले से, मैं नहीं बताता था, तो अभी मैं बताता हूँ उनकी हेल्थ ठीक है, कुछ काम में हो, कुछ वर्क में है, लेट दैट थिंग। No, I was right. She just messaged on backstage that I was right. Ayush, that she was asking what makes you kind of, so powerful. That's why she was asking you what do you eat. And Professor, you had a very lovely dinner. Palak and all. नहीं नहीं, तो फिर पॉइंट इधर है कि यस वही मैं आंसर कर था ना मैं, कि दैट्स वाई मैं चलता रहता है स्पेसेस एंड ऑल, ट्विटर यूट्यूब एवरीथिंग गोज ऑन। तो मुझे पर्सनली सैंडी गिव दैट थिंग,
एंड देन आफ्टर दैट हेलिदी एंड प्रोफेसर, जिनसे मैं ज़्यादा कनेक्टेड हूँ मोस्टली, एंड विशाल भाई दिसंबर से कनेक्टेड, हेलिदी एंड प्रोफेसर बाद में तो, बट बातें होती है हेलिदी एंड प्रोफेसर से ज़्यादा। विशाल भाई बहुत बिजी रहते हैं एंड इवन आप दोनों भी बिजी रहते हैं, पर टाइम निकालते हैं मेरे लिए, हेलिदी एंड प्रोफेसर। एंड वी पर्सनली हैव वेरी गुड डिस्कशन, एंड हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे अपनी बातें करते हैं, बट केस के ऊपर जब करते हैं ना तो बहुत क्लैरिटी मिलती है, और मूवमेंट के ऊपर जब करते हैं तो बहुत क्लैरिटी मिलती है। तो ये बात है, दैट्स व्हाट माय टेक इज़। तो मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे प्रोएक्टिव लाइक माइंडेड पीपल मिले हैं। तो या, पर्सनली अपार्ट फ्रॉम सैंडी, I can say Helidi and Professor and Vishal Bhai. Amazing. गॉड ब्लेस ऑल दोज वॉरियर्स जो यहाँ पे है, जुड़े हुए, जो इंकरेजमेंट देते हैं हर दिन, क्योंकि आप सब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात प्ले करते हैं encourage करने का। स्पेसेस में आते हैं, कहते हैं यस अनम मैम यू टू, बिकॉज यू ऑल डू a very good part in encouraging me and giving me strength that yes you are listening. When people listen, जब आप लोग सुनते हैं तो समझ में बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग बात कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग सम पॉइंट्स। So that's the best thing. So thank you I, so much for listening and speaking. and Ayush, can you also read on the backstage as well for Vishal's thing? And on coming to Professor, I think, like I said, Professor, palak chicken, very nice. Yeah, I mean, you can have the best food anywhere around the world, but the best of the best food is made by your mother, right? Yes, So, yes, yes. oh, yeah, I so love paneer, paneer as well. yeah. Palak is very nice with paneer. Uh, what paneer? Acha, you have palak paneer? Yeah, yeah. I Yeah. had palak chicken and dal makhni and with raita. अरे मुझे भूख लग रही है, मत कीजिए मेरे साथ प्लीज, Okay. don't do this for me. I And did you? can't just, And have you read the Vishal's message about his pick and drop? विशाल भाई माउंट ब्लैंक जाना है, जाइए जाइए माउंट ब्लैंक जाइए, आई डू इट पिक See, इट। I was just about to say that अभी विशाल का टाइम हो गया है, वो अभी मैगी खा रहा होगा, and that's exactly what he's written, right? यस यस दैट्स व्हाट इट इज। बिल्कुल, I ये और remember. अबाउट हम जानते हैं ना, Yeah. वी नो इट राइट, वी नो इट वेरी वेल। ये एक सेकेंड, ये कमेंट बहुत टाइम से आई है, आई डोंट नो यू आर देयर और नॉट। अभी आप है कि नहीं, रीमा जी, डू वी हैव एनी इन्फो ऑन हु हैज सुशांत डायरीज नाउ? खाने में आपकी कमेंट्स मिक्स हो गई, सॉरी। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रही थी खाने की। सो रीमा जी, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आई लव फूड, सो आई कांट इग्नोर दैट। डू वी हैव एनी इन्फो ऑन हु हैज सुशांत डायरीज नाउ? डायरीज, व्हाट आई, देखिए मैं Yes. रियल डायरीज की बात करूं तो वो अभी सीबीआई के पास है, राइट, इट इज देयर। एक Absolutely सेकेंड, right. हाँ यू राइट प्रोफेसर, वो सीबीआई के पास है, उसमें से पेजेस स्टोन है, ये सब है, ये सीबीआई ने कंडेम किया है, नो डाउट अबाउट। बस पहले मुंबई पुलिस के पास थी, सीबीआई के पास है, और किसी के पास नहीं है। ये बात आप समझ जाइए, अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली, दिस इज नॉट विथ एनी ऑफ द इंडिविजुअल, आई कैन से इट, जो कुछ भी कहे कि हमारे पास डायरीज है, ये बात प्लीज समझिए, जितना जल्दी समझ जाए। Yeah, because they were tampering the evidence. जो भी सुशांत से वो सकता evidence, they were trying to tamper and take it out. That's why they torn the pages of the diary. Diary तो कुछ useless है in that sense. यस, बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली, दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट, कि डायरीज तो होगी, ऑब्वियसली होगी, दैट इज़ देयर। हो उसमें टैम्पर भी हुआ है, ये पिठानी भी कहते कि उनको तोड़ने, पेजेस टोन करने की आदत है, ये सब। तो ये सब बातें स्ट्रेंज है, और ये डायरीज का पार्ट मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था, शेयर भी की थी, सुशांत की 6 डायरीज यूज्ड टू फॉर्मेट बाय फेस एंड अभी वो सीबीआई के पास होगी। सो दैट्स व्हाट माय टेक इज।
Thank you for raising this point, and I like to share this thing with you. ये देखिए, ये डायरीज हमारे सुशांत ने बनाई थी. पर्सनली ही वॉज हैविंग दीज डायरीज विथ हिम, और इसमें इंफॉर्मेशन तो ज़रूर लिखी होगी. फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. मैनी थिंग्स कैन बी देयर. यस, ये वाली देखिए. अब मैं इस पे आपको शेयर करता हूँ. शेयर विद यू. ये देखिए, दिस इज, दिख रही है क्या? Yes, yes, दिख रही है. हाँ, दिस इज ओनली फॉर ऑन बीइंग स्पेस. मैंने ये हमने डिस्कस किया था Feb 23 को. सुशांत की 6 डायरी, इसके बहुत, इसके अलावा भी होगी. तो फ्रॉम दिस टू देयर माइट बी डायरीज, पर्सनल डायरीज. ये वर्क, ये देखिए, सुशांत के नेम की डायरी, इनसाइड, थ्रू टीम, ड्रीम्स, बायो रेप्लिकेटर, SSR. तो या, ऐसे सुशांत ने डायरीज बनाई थी एंड फॉर्म की थी. ये वन ऑफ दोज एक्सपेक्ट्स है. काफ़ी सारी पॉइंट्स डिस्कस किए, मैनी पॉइंट्स. तो ये सब बातें हैं एंड डिस्कस करते रहेंगे हम, ऑन पॉइंट रखते रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे इसी पॉइंट के साथ. विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड एंड विल कीप ऑन शेयरिंग ऑल द थिंग्स. आप सबको, किसी को कुछ अभी कहना है कह दीजिएगा, नहीं तो मैं फिर रैप अप करता हूँ. 4 hours हो गया, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा सेशन, तो आई हैव टू रैप अप नाउ. सो या. Yes, I was gonna say, I think if you're wrapping up, so I should take your leave and take professor's leave as well. And thank you for sending me the link again on the Twitter, because I don't see it on the YouTube link. When I click on YouTube, it send me to YouTube, but I don't see the StreamYard link. So if you do another one tomorrow, so you just send me a आई विल message. एक्सप्लेन यू अनम मैम. आप लाइव चैट पे क्लिक करेंगे ना, आप यूट्यूब पे जाइए एंड क्लिक ऑन लाइव चैट. वो नहीं आता है मेरे पास, नहीं आता लाइव चैट, नहीं आता है? नहीं आता मेरे यू पास आर इसलिए हैविंग तो. आईफोन? Yeah, iPhone, and it वो doesn't give रियली? me लॉग्ड इन that. नहीं होंगी ना आयुष, उससे. ओह, तो अगर अच्छा, तुम लिंक लॉग्ड इन भेज नहीं दोगे है. तो वो डायरेक्टली आ जाएंगी इस पे, क्या बोलते हैं, स्ट्रीम यार्ड पे. Yeah, that's how I came. So if you message me on Twitter, DM me on Twitter, then I get the link. ओके, ऐसा है. नो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आप लॉग्ड इन नहीं है यूट्यूब पे तो फिर ऑब्वियसली नहीं आएगा. ओके. Mm. हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं ऐसे सेंड कर दूंगा. मुझे नहीं पता था ऐसे आपको नहीं दिखती है. आई एम नॉट नोइंग अबाउट इट. ओके, ओके. Yeah. So as you send me a link to the space, can you also send me the link to the stream yard? So स्टूडेंट. then, yeah. So then I get it. And yeah, take your हम्म. leave. Anyone, everyone, good night. Take care, and we will rock and more and more, louder each day. And for Sushant, so again, 302 of SSR, and Professor, take care, and Halidi, take care, and Vishal ji bhi, आप take care, and सब लोगों को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, and 302 of SSR. Thank you so much, Anam ma'am, for joining the session. It was a pleasure always, and God bless you. Thank you, Professor. I will definitely never leave this. Thank you. It's really great to hear from you, Anna ma'am. God bless you and your entire family. Take care of yourself, stay healthy, stay strong. Treasure too for SSR. Do join in SSR space and next session too. It was great. Thank you so much, Ayush and Professor. Thank you. Take care. Bye bye. Yes. See, DS was Ashwara's manager for 2 years, no doubt about it. 2 years तक थी. जैसे ही उसने कॉर्नरस्टोन ज्वाइन की थी दिशा ने, द फर्स्ट पर्सन द फर्स्ट पर्सन वॉज अनिल कपूर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जितना मुझे पता है, अनिल कपूर था, फिर ऐश्वर्या राय थी. तो बनते गए, बनते गए, बनते गए, बहुत बहुत लोग. भारती सिंह तो कॉर्नरस्टोन के पहले थी, if I'm not wrong. But yeah, everyone was there. Most बहुत celebrity manager अगर मैं कहूँ, दिशा was celebrity manager after she joined Cornerstone. Earlier she was also celebrity manager, but Bollywood celebrity manager नहीं थी. टीवी इंडस्ट्री की celebrity manager थी.
तो अभी बॉलीवुड सेलिब्रिटी मैनेजर बन गई कॉर्नरस्टोन में ज्वाइन करके. सो इंटरेस्टिंग है ऑब्वियसली, नो डाउट, बट Great, अभी Ayush. काफ़ी. Thank you so जी. much for the lovely live, and you got that information out, which was great to see. And I hope that by your information, people come on the same page and uh, their minds do not waver here and there. So, thank you so much for a lovely live, and I'll see you again on space or live session. यस, डेफिनेटली. कह दीजिए 302 वाला. तो आप अभी स्क्रीन पे है Yeah, लोन. I sincerely hope that everybody gets together, stay united, and when we sleep tonight and wake up in the morning, we hear from CBI that CBI is out with their chart sheet, and IPC 302 is imposed on SSR murder case. So every night when you sleep, just pray to God, and sometimes when you pray, it has a lot of power. हो जाता है वो कभी कभी. तो मैं ऐसा करता हूँ. I can just request you guys to do that. Just one line, just pray, and at the same time, keep going with your efforts in whatever capacity you can. And together, we will get justice for Sushant Singh Rajput. Thank you. थैंक यू सो मच प्रोफेसर. सी यू in SSR space, and it was pleasure talking with you. Your point of views were amazing, just like this. Prayers are having for our side. Prayers बहुत ही powerful है, and Sohana ji, right on point. That's what my every time take is up. ती जानते हैं title में भी keep praying and roaring. तो when we roar selectively हमें pray भी करना है, no doubt about it. Sohana ji, you're there, amazing, amazing. Suhana ji, I apologize for that. You were about to say something on space, but मुझे सेशन स्टार्ट करना पड़ा. देन आपने स्ट्रीम नहीं ज्वाइन किया, तो आई एम रिग्रेटिंग, रिग्रेट कर रहा हूँ मैं राइट नाउ. सो आई विल फिक्स इट आउट दिस थिंग. एक्चुअली मैं कुछ करूँगा. आज जो हुआ एक्चुअली बहुत लोगों को कहना था स्पेस में, बट वो सेशन स्टार्ट ही हो गया, टाइम हो गया था, तो इस वजह से मैं नहीं कहने को मौका मिला. तो मेरे से आज थोड़ी मिक्सअप हो गया, गलती हो गई सीन से. तो आई विल फिक्स इट आउट एंड आई ट्राई टू डू दैट. आप अभी भी आ सकते हैं. स्ट्रीम यार्ड लिंक शेयर है. You can join in now too if you want to raise it here on YouTube. Any point you can come. और कमेंट सेक्शन में तो आपने बहुत ही अच्छी अच्छी पॉइंट्स रखते ही है. कीप इट एवरी टाइम. तो या ये बात है. And अभी मैं रैप अप करता हूँ उसको, and I wrap up this amazing thing. Yes, let's do it. तो या तो अभी हम आपको पॉजिटिव नोट कहना है. हेलिदी विशाल भाई, फास्ट 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 फास्ट, क्विक क्विक जैसे कहते हैं ना. क्या कहते हैं हेलिदी? क्विकली. What she said, she's amazing, right, हमेशा. तो वैसे कह दीजिए. किसी की आवाज़ नहीं आ रही है, ना एलईडी की ना विशाल भाई की. मैं बोलती हूँ. Can you hear me, Ayush? Yeah, you can go ahead. हाँ. So keep on tweeting, retweeting, quote tweeting. Let's go ahead and friend Sushant Singh Rajput. Sushant will win. SSRians will win. Together we'll get justice for Sushant Singh Rajput. Ignore negativity, focus on positivity. Boycott Bollywood completely. Har Har Mahadev. From Sandy Mom, keep on tweeting, retweeting, quote tweeting. Let's friend Sushant Singh Rajput. Think positive, ignore negativity, focus on positivity. Boycott Bollywood completely. Good morning to the people in India. Good morning to the people outside India. And be united. Keep fighting for justice for Sushant Singh Rajput. Be strong. And from Vishal Bhai, it's going to be. Sorry, Vishal Bhai ko Vishal Bhai. विशाल भाई विशाल भाई बोल देंगे. चलो, मैंने मेरी और Teacher, सैनिमा को teacher, I am present here. इसीलिए तो So, बोला मैंने. टीचर टीचर नहीं, चुपचाप अपना काम करो. okay, पॉजिटिव नोट बोलो. of course, positive note, the three magical words. Sushant Singh Rajput नाम तो सुना ही होगा. And
अरे थोड़ा आराम से यार, राजधानी एक्सप्रेस भी फेल हो जाएगी आपके सामने। तो प्यार से बोला करो यार, थोड़ा आराम से बोला करो पॉजिटिव स्टेटमेंट। राजधानी की तरफ से सलूट है आपको। Yes, yes, that's नहीं भाई, एक्चुअली अब मैं राजधानी प्लेन इन्वेंट करने वाली हूँ, तो वो सबको बोल देना। ठीक है, अब आगे बोलो, चलो चुपचाप। yeah, ये बात तो है. So yes, yes. So just like to wrap up now and with the positive note and everything which is there. So let's wrap up this thing and let's spread the positive word around everyone. Every positive thing. तो पॉजिटिव वर्ड स्प्रेड करते बट ये प्ले करके by playing this thing we'll do it. This is my favorite and I like to play it. यहाँ पे प्ले भी होते हैं वीडियो तो I really personally I really like it. आयुष, इफ यू कैन प्ले द वीडियो, मैं आपको पोस्ट और चैट में सॉन्ग सजेस्ट कर दो इफ यू डोंट यस यस बिल्कुल. पर ये सेशन बढ़ाना हो छोटा सॉन्ग दीजिएगा, ठीक है. अभी मैं इसको प्ले कर उसकी हर उसकी जिस्म मरने से इंसान मरता, जिस्म मरने से इंसान मरता नहीं, बस बदल जाता है वो फकत याद में, जिंदा हो जाता है खुद ब खुद हर घड़ी, उसके हर जिक्र में, उसकी हर बात में, उसके हर जिक्र में, उसकी हर बात में, हम बुला कर उसे भूल सकते नहीं, हम भुला कर उसे भूल सकते नहीं, इसलिए भूल जाने की परवाह नहीं, ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है. We miss Sushant Singh Rajput. We remember him every day. That's why we are here for SSR justice. That's why we are demanding for SSR justice. No matter what will happen, justice will prevail, truth will win. बहुत जल्द हमारे सुशांत को जस्टिस मिलेगा. बस आप रोर करते रहिए, प्रे करते रहिए सुशांत के लिए. कीप रोरिंग एंड कीप प्रेइंग फॉर दिस जस्टिस and keep on doing all the good work for Sushant Singh Rajput. Yes. एंड ये सॉन्ग देखिए शायद मैं प्ले कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, बट यस आई कैन. एक सेकेंड, give me 1 second. I'll just play it and I'll just do that thing. ये इसके बदले ये कर देते हैं ना, 2 मिनट. ठीक है, अभी आपने कहा है तो यही कर देते हैं. सुशांत का सॉन्ग. Just playing it right now.
खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके I wanna say you मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी है दुनिया को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके I wanna say you मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी प्यार प्यार वाली बात सब करके मर बैठा तुझ पे मैं लब करके I wanna say you मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी क्योंकि मैं तेरा बॉयफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड तू मैनू कहंदी ना 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 मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड तू मैनू कहंदी ना 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 रुकते जाओ मेरी गल तू सुन ले तू मैनू कहंदी ना 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 मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड तू मैनू कहंदी ना 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 रुकते जाओ मेरी गल तू सुन ले तू मैनू कहंदी ना 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 नीले नीले अखियों में दिल्ली वाला खजरा मैनू इनवाइट करदा तेरे कोल किवें आवां तैनू झप्पी किवें पावां थोड़ी एक्साइट करदा Listen तैनू पहचानदी है हैबिट में जानदी है हर कुड़ी उत्ते मरदा तेरा एतबार नहीं करना मैं प्यार नहीं क्यों मेरा पीछा करदा तू चला जाएगा तू मुझे तंग करके डिच वाली बातें मेरे संग करके I wanna see you many रन सोने तेरे नाल नाल वे मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड तू मैनू कहंदी ना 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 तू मेरा बॉयफ्रेंड मैं तेरी गर्लफ्रेंड अब ना करूंगी ना 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 रुकते जा मेरी गल तो सुन ले अब ना करूंगी ना ना ट्यूबलाइट मेरी थोड़ी अभी चली है, बताता हूँ क्या, आई विल टेल यू, बट वी में से सुशांत सिंह राजपूत अंदर मैंने प्राइवेट चैट में लिखा है, पढ़िएगा विशाल भाई क्या कह दिया, लगेगा अभी मेरे पे यस तो अभी मैं क्या करूँ, सुशांत का है, सुशांत ही पड़ जाएगा अभी, कुमार मेरे पीछे लगाने का इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है चलो अभी रैप अप करते हैं, इसी के साथ थोड़ा एक और सॉन्ग चला देते आगे बढ़ जाए, शायद हम नहीं दिखे, लेट्स प्ले वन मोर सॉन्ग एंड लेट्स जस्ट डू इट दैट they will not see it. So that will give us the clarity. Nothing else than that. तो वो देगा एंड पॉइंट्स टू पॉइंट्स हम रखते और आगे बढ़ते जाते, just go ahead, just move forward and just do the right thing, positive thing about what, about our Sushant Singh Rajput, nothing else than that, nothing more than that too. ये सुनिएगा, listen to Sushant Singh Rajput song, positive Sushant Singh Rajput song. ज़माने से रिश्ते निकाले तुझसे ही यारी है हमारी एक बार तो आ मैंने निभाया है करके दिखाया है ये तेरी बारी एक बारी तू भी प्यार निभा तू भी प्यार निभा यारा जान सा
This was on 3 years of Mansoor, so we remember Sushant Singh Rajput. Spread the positivity and that's what. जान एहसार है सुशांत पे उनके प्यार पे यही कहना चाहिए. So we'd like to say the positive note now on that. That is, stay strong, stay united, and keep roaring for SSR justice. Together we will get justice for Sushant Singh Rajput. Justice will prevail, truth will win. बहुत जल्द सुशांत को जस्टिस मिलेगा. बस आप रोड करते रहिए, प्रे करते रहिए सुशांत के लिए. कीप रोडिंग एंड कीप प्रेइंग फॉर जस्टिस एंड कीप ऑन डूइंग ऑल द गुड वर्क फॉर सुशांत सिंह राजपूत. फिर मेरे को जल्दी ऐसे ही एक सेशन में भी और हर दिन स्पेस में सुशांत के स्पेस में हर दिन मिलेंगे. डिस्कस करेंगे SSR केस लेगेसी मूवमेंट के बारे में. बस आप ज्वाइन करते रहिए. See you soon in SSR space 2. Anyone, whenever the session will happen, I'll schedule it and I'll let you know. तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, प्यार बांटिए मैं सुशांत के लिए. Spread all the love and positivity among everyone. Always be happy, be strong, and keep up the good work. Thank you so much, Ayush, for the amazing session. God bless you. And really, I mean, such important topic, facts, and everything. Really great job by you and everyone, and the speakers and listeners. And hope now everyone's minds are clear about everything. And yeah, we'll go ahead and see you tomorrow in the space. But yes, amazing, brilliant session by you, Ayush. Thank you so much. Amazing, amazing. God bless you, Vishal Bhai. God bless you, Helidi, and God bless everyone who joined in this session. Thank you so much. See you, everyone. Bye bye. Take care. Lots of love. Justice for Sushant Singh Rajput. Boycott Bollywood completely forever. Entirely boycott Bollywood. Bye bye. See you. Justice for SSR.